Hello, is it audible now? Hello. Audible. Yes, yes. Is it okay now? Audible? In today's fast-paced world, we all are try to stay updated through reading webinars and professional discussions. But we also understand how challenging it can be to make time amidst our busy schedules. That's why study circle meetings like this one are so important. They offer us practical and focused way to stay abreast of the latest development in tax laws and related fields. This year, we have planned a series of study circle sessions on timely and relevant topics. So far, we have successfully completed 4 sessions that are artificial intelligence, financials of non-corporate entities, changes in income tax return, and GST reforms. Each session has added significant value to our knowledge base and professional practice. Today's session brings a fresh perspective with equally important topics. The first session, we are privileged to have with us CA Sharad Vajesar, a senior chartered accountant who will sharing his insight on drafting of will and succession. This is a topic that holds both professional and personal relevance, and we are fortunate to benefit from Sir's deep expertise. The session chairman, Advocate Deepak Godse sir, will be sharing his remarks, which will be undoubtedly offer valuable insight on guidance to all of us. In the next session, CA Parikshit Aurangabad sir will guide us on use of artificial intelligence in tax audit. His session aims to demonstrate the subject and encourage us to use this emerging tool effectively and fearlessly in our practice. C. Umesh Sharma sir, chairman of the Artificial Intelligence Committee of ICI, will serve as the session chairman. We are honored to have his leadership, and his insights are certain to provide valuable guidance and inspiration. I urge all of you to participate actively in today's session, and not just for your own benefit, but by encouraging your staff and fellow professionals to do the same. The more we share, the more we grow. Before I conclude, I would like to express my heartfelt thanks to entire team MTBA, all the esteemed members of tax fraternity from across India, the dedicated study circle committee, and the tireless volunteers behind this. Let's continue to learn, grow, and contribute to our professions together. Thank you once again. Over to Godke sir. Thank you, sir, for your insightful words and for highlighting the importance of these study circle meetings. Next, I request our President Advocate Anuruddha Sawan to deliver his presidential address. Sir, please. Namaskar. Respected guys, today's faculty, CA Sharad Vajesar, our past president, Advocate Narendra Somne sir, Advocate Milind Bhonde sir, and today's session chairman, Advocate Deepak Godse sir, and study circle chairman, Milind Hendre sir. I, Advocate Anuruddha Sawan, President of Maharashtra Tax Practitioner Association, extend a very warm welcome to all of you to the 5th study circle meeting our association. Today we are here to discuss a very important and practical subject, drafting of will and succession. This topic is not only significant for us as legal and tax professionals, but is also
has a deep impact on families and society at large. A properly drafted will ensures clarity, avoid disputes, and provides peace of mind to the next generation. We are indeed fortunate to have with us C.A. Sharad Vajasar, an experienced and knowledgeable speaker who will guide us through this subject. His practical insights will certainly help us understand and technicalities in a simple manner and apply them effectively in our professional practice. I would also like to take this opportunity to express my sincere gratitude to our chairman, Advocate Deepak Godse sir, for his leadership of this study circle and for these concerted efforts in arranging such insightful and knowledgeable enriching sessions. Friends, learning is a continuous journey. Session like this not only expand our knowledge, but also give us an opportunity to interact, share ideas, and learn for one another. With these words, once again, welcome all of you. Thank you. Over to Borges. Thank you, sir. Your continued support for this study circle is greatly appreciated by all of us. Now I request our Joint Secretary Kailas Kashi sir to introduce our session chairman, Advocate Deepak Godse. Good afternoon. Respected President, dignitaries on the dais, seniors and past president of the dais and online participants. I, Mr. Kailas Kashi, Joint Secretary of MTPA and Secretary of AIFTP West Zone, stand here to introduce today's session chairman, our past president, Advocate Deepak Moreswar Godse sir. A beacon of knowledge and integrity. Success is not measured by position, but by the impact one creates. Advocate Deepak Godse sir's life is a testament of this truth. Sir has completed his BCom DTL LLB. Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today. Sir's professional journey started in 1982 as a tax advocate in direct and indirect taxation. Sir was the visiting lecturer at Narlikar Institute for more than 16 years. Most important, there are papers presented in International RRC of MTPA by Sir. In Sri Lanka, 2007-8, presented paper on will and its legal aspects. In Singapore, delivered insights on professional ethics. Bali, Indonesia, presented on interest and penalty under GST. Only member in the association to present papers in 3 international RRCs. Sir has served on the several boards in the association. Sir served as a managing committee member, chairman and coordinator for certificate course for beginners for 10 consecutive years organized by MTPA. Vice President in 2015-16, President 2016-17. Sir is honored as Best Lecturer in MTPA Study Circle. Also awarded Best Convener for Certificate Course in Taxation Laws. Continues to deliver lectures in Taxation Law course with unwavering commitment. Leadership is not about titles, it's about impact, influence and inspiration. Other than professional, Sir has interest and literary pursuits as passionate drama actor, avid reader of classes, especially Mahabharata and works of Pula Deshpande and Mukale, and other eminent Marathi authors, freelance writer contributing to Marathi Diwali packages. Art and literature
are the soul's mirror, reflecting the depth of thoughts and emotions. Advocate Deepak Moresar sir embodies the rare blend of professional brilliance, academic generosity, and cultural richness. His journey is not just a career, it's a mission to enlighten, empower, and elevate. जिनके कर्म उत्कृष्ट होते हैं उनकी पहचान स्वयं बन जाती है. With this short introduction, I request you all please. Thank you, sir, for kind and nice introduction. I now request our past president, Advocate Virendra Sonone, sir, to felicitate our session chairman. Good, sir. Thank you, sir, for presenting our token of appreciation. And thank you, Godse, sir, for graciously accepting it. Now I request our Joint Secretary Kailas Kashit, sir, to introduce our faculty, CA Sharad Vaje, sir. Thank you, Goshe sir. Good afternoon, respected President, dignitaries on the dais, seniors and past presidents, online participants. I am Mr. Kailas Kasi, Joint Secretary of MTP and Secretary of AFTP West Zone, stand here to introduce today's faculty, CA Sharad Atmarao Vaje sir. A well-drafted will is not just a legal document, it is a legacy of clarity, care, and foresights. We are honored to welcome C. Sharad Vaje sir, a highly respected professional with over 42 years of experience in the field of accountancy and law. He is the senior partner at Sharad Vaje and Company Chartered Accountants, Pune. Holds postgraduate degrees in commerce and law, along with membership in the Institute of Cost Accountants of India. Wisdom is not just knowing the law, but understanding its purpose in people's lives. Sir's legacy in leadership, former chairman of ICAI Pune branch in 1991, managing committee member of the year 1988 to 91, founder and life member of the Pune Chartered Accountants Society. Voice in print, author of numerous articles on taxation, company law, and banking, published in Economic Times, Taxman, and Daily Sada. Known for his weekly expert replies to public tax queries in Daily Sada. Clarity in law begins with clarity in thoughts, and that is what he brings to every lecture. Passionate educator, retired as associate professor from BM College of Commerce, Pune after 35 years of teaching, visiting faculty at ILS Law College, Pune, speaker at national and international conferences organized by ICAI and its branches. Legal expertise, sir represents clients before ITAT in tax appeals, served as counsel to over 120 chartered accountants before ICAI disciplinary committee and appellate authority. In matters of succession, precision is protection and drafting is the seat. Digital outreach, creator of weekly lecturer on professional misconduct. Over 30 insightful sessions available on the YouTube Sharad Vaje on professional misconduct.
with this deep understanding of law, practical experience and love for teaching, CA Sarad Vajesar brings unmatched clarity to the subject of will and succession. His lectures are not just informative, they are empowering. A good will speaks even when the voice is silent. Learn to draft it with wisdom and care. With this short introduction, I request you all please welcome with big round of applause. Thank you. Thank you, Kashif sir, for perfect introduction. Now I request our President, Advocate Anuruddha Sawan sir, to felicitate the faculty. Thank you, Chavan sir, for presenting our token of appreciation, and thank you, Vajay sir, for graciously accepting it. It is now time for the much awaited session. I invite CA Vajay sir to take the charge and begin his presentation, sir. फुल स्क्रीन करतो फुल स्क्रीन करतो येते प्ले ऑटोमेटिक टाइम स्टूडियो फुल स्क्रीन फुल स्क्रीन म्हणजे लोकांना दिसायला वाचायला पाहिजे हा मग ठीक आहे हा कडे झोपेल I thank the Maharashtra Tax Practitioners Association for inviting me for this session. Thanks for the introduction. And the colleagues who are sitting next to me now are in my front. So thank you very much for the kind introduction. Now the idea for this session is no doubt to know the law, but looking at some of your ages, I can consider that this is a good professional opportunity, because a professional in the age of 30, 35, probably his clients or the persons may not believe in him, not that something wrong, but because of the white hair, at least they feel that he has got a good exposure
and the facts of the life. So probably he's a better person to draft the will. So it is a good opportunity to seniors in the profession as to the drafting of will. And as far as my experiences go, I almost do about one to two wills a month, and I have drafted more than about 100 wills so far. So in a sense, it has given me a good money. Frankly speaking, see, we are all professionals. It's not that we are doing any charity for that, but it is a good opportunity. See, basically, our job is restricted to drafting in a way that it will not lead to any dispute or ambiguity. See, ultimately, it is the wish of the person who has got a property. It is not my wish or it is not your wish. It is his wish which we put it into proper language, nothing beyond that. So, what is a will? Will is a legal declaration of a person's wishes as to the disposition of his property or estate after his death, usually written and signed by the testator and attested by the witnesses. Now, if you look at in the very first paragraph, I use the word usually written. That means, are there any exceptions to it? Yes, there are exceptions to it. They are called privileged will. And this privileged will can be oral also, but is available only to the armed forces during war or at that particular place only where the war is being fought. Because at that place, if a soldier wants to give the property to anybody else or to his children or to his wife exclusively, then that is not the place to write down anything. A will requires minimum 2 witnesses, wherefrom we will gather the 2 witnesses, and that is not the occasion or that is not the place to do all these things. So even it can be an oral will, and it is known as privileged will, and this is in law provided in Indian Succession Act. The point is, in other cases, I can use the word in almost 99% of the cases, it is written because we have got ample time to write down the will. According to Section 2H of the Indian Succession Act 1925, will means the legal declaration of the intention of the testator. Testator, author who is making the will is known as testator. With respect to his property, obviously you can make a will of your property. You can't make a will of somebody else's property, which he desires to be carried into effect. I have highlighted the words in italics, after his death. That means will take into force only after death and not during the lifetime of the person making the will. Now, why will? That, as has been often said by N.A. Palkhiwala, if you have read his book, there are 2 things are certain in this world. One is death. No one can, excepting 7 persons, what we call them Chiranjeevi, all are mortals. And number 2, it was his satirical comment, taxes. So these 2 things are universal truth, taxes and death. So death is certain. So you can't simply say that I am going to live for hundreds of years or 150 years. This is just impossible. Death is certain today or tomorrow, only thing that is not known. So why make a will? So person making a will, it is known as testamentary death. And a person not making the will and dying without a will, he is called interstate death. Death without a will, interstate, death with a will, testamentary death. Now what happens? Let's see. If a person has not made the will, now whatever today's discussion is with reference to Hindus only, with reference to Hindu Succession Act. Of course, the word Hindu includes Jains and Sikhs also. So these three religions, whatever discussion I am having it, as regards other, it is not the time, and really speaking, I really do not know with respect to other personal laws relating to, say, Parsis or Muslims like that. So we are restricting ourselves into the Hindu Succession Act, a majority of it. If an individual dies interstate, that means without a will, then
Section 8 of the Hindu Succession Act becomes applicable. Section 8 applies only to Hindu male. Please try to understand. For Hindu male, Section 8 of the Hindu Succession Act. For Hindu female, Section 15 onwards of the Hindu Succession Act, provisions are different. Now, in the event of death of a person without a will, then his legal heirs will receive the property of the deceased person. And there are class 1. In class 1, which are included son, daughter, widow, mother. These are the normal things. Then others are son of a predecessor, daughter of a daughter, etc., etc. It's a long list. You can have it in Schedule 1 to the Hindu Succession Act. Now, in the event of death without a will, let us restrict ourselves for understanding. Son, daughter, widow, and mother are the only 4 persons, just for the sake of understanding. So if a person has got property worth 40 lakh rupees and he dies without a will, then son, daughter, widow, and mother all shall share equally. So the relations which are given in class 1 shall share equally. Son, daughter, mother. Of course, if there are 2 sons, 2 daughters, all shall share equally. It may not be 1/4, it may be 1/5, it may be 1/6, depending upon the number of children in the family. However, I'll just give an example. If a person wants to give property to other persons, number 1, to charity, second, and number 3, unequal distribution within the legal heirs, then will has got to be done. If will is not there, then it is equal share among the class 1 legal heirs. Whether one of your son is treating you properly or not, it is immaterial. Even if you disown a child, one question was raised with reference to Section 64 of the Income Tax Act, clubbing provisions. If a person says, I have disowned my child, then in whose hands the income will be included? And he got the reply that disowning is not a legal provision. You cannot legally disown a person. Therefore, so long as he is your child, he is your child. So he is entitled to your property, whether you like it or not. So in that sense, it will share equally. If there are no relations from class 1, then the property will pass on to class 2. And in the class 2, there are lists. First list, only one relation is there, father. So if mother, daughter, son, wife, not a single relative living at the time of death covered in class 1, then entire property will pass on to father only, and it is only one relation given in the schedule. If father is also not there, then the property will go to sons, daughters, sons, sons, daughters, daughter, brother, and sister. But important aspect for 2 to 9 is, it is a preferential order. In a sense, if father is not there, then the entire property will go to son's daughter's son if he is alive. Even if the remaining 3 relations are alive, nothing will be available to them. Everything will go to son's daughter's son only. Of course, sons, daughters, sons, if there are more than one, then equally within them, within the class. If son, daughter, son is not if nothing is available from list 2, then it will go to list 3, again preferential order. So from list 2 to 9, it is a preferential order. In class 1, equal. In first item of the class 2, only one relation is there, that is father. So if a is provided in schedule to the Hindu Succession Act.
Now, explanation is provided. Sister by uterine blood. What is meant that? From a common womb. Sahodar. If Mrs. A has got two children, B and C, B is from husband T. After his death, she married and she's got a younger, but from different fathers. So what it says, do not include references to a brother or sister by uterine blood. That means if in the event of death of B, property will not pass on to C because they are uterine brothers, because father is not common. Then child, son or daughter includes illegitimate child. It has been so provided in section 16 of the Hindu Marriage Act. That means previously we used to have the word illegitimate child. Now, after 1956, the word legitimate, illegitimate has no meaning at all. All are legitimate child only. Now, coming back, in the event of death, as per the order provided, if it is not intention to pass on the property in this manner, then only alternative or only remedy is to make a will. So when make a will is made, unequal distribution. I'll give an example, then you will understand it. One of my relative who had they were working that on that issue, but it is still on. His mother is almost 90 years of age, but the younger child, the son is taking care of it. So it has been drafted in such a way that the son, elder son who is in USA, investment, whatever left in India, entirely has given to the younger son. Because, and the elder son also has no objection to it because he knows very well that he can't come every day, he can't settle back into India to take care of his parents. And whereas his younger brother is taking care of it, so let it go to him. So that is how unequal distribution is possible if and only if you make a will. If you want to exclude a legal heir, that means there are 2-3 legal heirs. And because of some relationship, because of some issues, you really want to disown a child, in this way you can say that nothing is available to that particular person. You can exclude a particular person. Inclusion of non-relative. If you want to include any other person as in the beneficiary of the will, you can include it. He need not be relative. Again, I'll give an example. There is a flat in Pune, Prabhat Road area. You are aware the area. Australia, daughter is in Australia and son is in USA. So the neighbor is taking care of this elderly couple. In case any hospitalization is required at whatever time, they take them to the hospital. Their son, they are treating him as if it is their grandfather, and they are also treating him as a grandson. And in the event of anything going wrong, if they are admitted to hospital, they get a call from their daughter or son that do you require any money?
That means the parent doesn't expect that they should be here every time whenever they are admitted into the hospital, but they expect that at least they should come together on a particular day together so that they can have a family of 4 persons at one room. Son says, now this year I'm not going, he tells his daughter to go down to India. Then daughter says, last year I had been there, so this is your turn now. You come down to India. Now, obviously, this is painful to the parent. Just think of it. So they had asked me to draft a will that they want to give everything to the neighbor and nothing to their own children. Then in the will, we had to draft many things that when they were hospitalized, how they have taken the precautions. In case of normal illness, how they are taking care of them. So all these things have been drafted to justify the entire property, flat as well as other movable property is given to the neighbor. Needless to say, neighbor is not aware of it for obvious reasons. Otherwise, something may happen to them. But the fact is that nothing is given to their children and children are not aware of this fact. Otherwise, what happens? They wait for the parents to die and afterward they come down for 8-15 days, sell the property at whatever it is available and go back. Because of that distance, because of the years living parents, naturally some element has brought into their life. They do not want to spend their time with their parents. And that is how we have decided to give everything to the neighbor and accordingly a will is drafted. Or donation to charitable organization. I come across 2 such cases. One lady advocate is there. For obvious reasons, I cannot disclose the names. That she was not married, no children, no brother, sister, etc. Sister was there, but she died earlier. So she decided to give entire property. She had got a flat at Port Road, one flat at Mangaon on Goa Highway, and some 1 acre or something like land. After her death, entire property was given to Vishwa Hindu Parishad. And even that program had taken place at my office only, where the people from VHP had come then. But one good thing which I appreciate, I must tell you, that she died after 2 years of the will. But till then, her care was taken by VHP, Karyakarta, or whatever you can call it. Every week they used to call her, whatever vegetables, whatever medicines are required to be given. The persons who are staying in that area, they used to visit every week to assure that, okay, we are with you. Don't feel anything. Anytime you call us, we'll be there. So that sort of support was given by VHP, and rightfully she thought it to be given to VHP. In the last week only, I had done a will of 2 doctors from Pune only. Again, they are property to Tejgan Foundation. And how much is the property? They have got a bungalow in Sin Housing Society, whose market value is almost 20 to 25 crores, plus 2-3 other properties. Everything is given to Tejgan Foundation only. And few per person, you can say, few lakh rupees to the near relative. That's all. So you can give such property to a charitable organization or to a non-relative. You can exclude a legal heir, or you can make unequal distribution. This is possible if and only if you make a will. If will is not there, then the law will apply. Now, Hindu female. Because Section 8 refers to Hindu male dying intestate. Section 15 applicable to Hindu female dying intestate. Now, who are the legal heirs? If a female dies without a will, the property will pass on to sons, daughters, including the children of any predeceased son or daughter, and the husband. Sons, daughters, and the husband, normal.
I'll come to that 15(2) later. Then legal heirs of the husband, mother and father. Please note, mother and father after husband's legal heir, heirs of the father and heirs of the mother. But one important provision is made in section 15(2) as an exception. What it says, any property inherited by a female Hindu from her father or mother shall devolve in the absence of any son or daughter of the deceased, not upon the other heirs referred in subsection 1 in the order specified therein, but upon the legal heirs of the father. A receives property from her mother or father. Two situations, A has got son or daughter and husband, then the property will pass on as per subsection 1. That means what we have seen earlier, son, daughters, husband, thereafter heirs of the husband, then mother, father, etc. But if A dies without son or daughter, in respect of property received from her parents, will go back to the legal heirs of the father and not to the legal heirs of the husband. Second list is husband. Logic is perfectly justified provision. Logic, if look at it, if I say in Marathi like this, आईकडनं आलेली प्रॉपर्टी आईकडेच जाते. त्या व्यक्तीला तिच्या आईवडिलांकडून आलेली प्रॉपर्टी नवऱ्याच्या लीगल हेअर्सला जाता कामा नाहीये, तर ती आईच्याच लीगल हेअर्सला म्हणजे आई किंवा वडील त्यांच्या लीगल हेअर्सला जाते. सो वेअर फ्रॉम यू हॅव रिसीव्ड द प्रॉपर्टी गोज बॅक टू देम. If there are no son, daughter, then only. If there are son and daughter, then obviously then it is her generation, so it will go to son, daughter, and husband also. But if not upon the heirs referred in subsection 1 in the order specified therein, what is the order? I have mentioned it. Son, daughters, and husband. If there is only husband, still the property will go to the father's legal heir and not to the husband. In order that the property should go to the father, she should have children. Then it will be divided between husband and children. Then father's legal heir and so on. See how the law has been drafted. A property received from one particular source should not get diverted to another family, but should go back to the original family. Then second provision, any property inherited by a female Hindu from her husband or from her father-in-law shall devolve not upon the other legal heirs specified in clause 1, subsection 1. That means if a property is received from father, property received from husband, it will not go back to mother's side. It will be husband's legal heirs. If property is received from father-in-law, that means father of husband, that means property received from सासरकडनं आलेली property थोडक्यात. Received from father-in-law will devolve on the legal heirs of husband. Nothing will go to the mother's side. So property received from mother will go back to the parents, Property received from husband or father-in-law will go back to the husband's legal heirs. See, nicely drafted and rightly drafted. Now about the nomination. Nominee holds the property in trust for the legal heirs. Nominee never becomes owner of the property. He holds property in trust for the legal heirs. I'll give two situations. In case of bank account, bank deposits, we do have nominees. In that case, after the death of a person, the nominee holds the property in trust for the legal heirs, which are the legal heirs that we have seen, or otherwise the beneficiaries provided in the will. Now, why this provision has been made that
nominee holds the property to be given back to the legal heirs. In that sense, the dispute moves out of the bank. Otherwise, what would have happened? If the bank manager gives the property to elder son or younger son, then there will be dispute and the matter goes to the court. The bank manager has to visit the court every day, and you will find all bank managers in the court all 365 days a year because there are thousands of lakhs of depositors. But once what he says, A is a nominee, I'll give it to A. A will give it to the legal heirs or as per will. That means the responsibility of the deposit stands discharged. For a dispute, legal heir will file a case against the nominee. Bank manager is not involved at all. That is the only objective of nomination. But in comparison to that, what happens in case of a residential flat where every one of us are staying? Everywhere I have seen that naturally wife is made as a nominee. But in the event of death of a flat holder, nominee does not become owner of the flat. She is the trustee for the legal heirs. In a sense, suppose A has got 2 children and a wife and a mother. A has died and the nominee is his wife, but wife is not the owner of the property 100%. Wife is owner along with 2 children and mother also. So she has got 1/4 share, not 100% share. Even if you mention in the nomination that 100% to be given to A, Mrs. A, it does not matter. She will hold the property 100% as a nominee for the legal heirs. So those of us who are staying in flats, by mere nomination, do not expect that your wife will automatically become the owner. Will is the only way out. Otherwise, if the wife wants to sell the property, the buyer, the advocate of the buyer insists that you are not the only owner. I want signature of all the legal owners. That is the reason. Then there is again a myth about a single child, because when I give a lecture on this, people do come say that I got only one daughter or one son. Where is the need for will? This is a myth. I use the word. I'll give an example. Then you will realize it. It is a well-known example.
Okay. This is compulsory if you have got, I'm using the word immovable property. If you have got a bank account in Ford branch of a bank, probate is not required because it is a movable property. Just to give an example, the will of Balasaheb Thackeray, he died in 2012, I think. Almost 13 years have gone by. Probate is not issued by Bombay High Court because it is relating to Matoshri property, which is at Dadar and which falls within the original jurisdiction. The High Court has advised to settle the issue outside, compromise it, and will issue the probate. It's between Uddhav Thackeray and Jaidev Thackeray. Please note all these things are in the newspaper. I'm not giving my own individual information. So in that sense, a probate is required. But at other places, probate is not required. It is not compulsory. But if you want to, you can have it. Because most of the cases, I've been a witnesses to the will. Then I had been a half a dozen times in the court to stand as a witness. When I say that these are the signatures of the person who have made the will. In case of interstate death and nomination is not provided, require substantial costs and expenses. I think it has got some scrutiny also. You have to engage for that purpose, and it's a time consuming apart from that. Now, which property can be willed out? Willable property. Self-acquired property. I have purchased the property from my own sources. I'm the 100% owner of it. I can do with the property the way I want. No one can dictate me. So self-acquired property. Property received from interstate death of a father. Earlier, the issue was there. In the event of death, interstate death of a father, if a property is received by his son, as a legal heir, what is the character of that property? The issue was settled by the Supreme Court in the case of CWT versus Chandra Sen way back in 1986 that the character of the property is individual and not issued property. And the logic given, if you recall the relations covered in class 1, son, daughter, mother, wife, as well as other relations are there, can never become, if the intention would have been have a joint family property, the other son of a predeceased son, daughter of a predeceased daughter, likewise mother also, daughter also, then in that case, the intention of the law is to treat the property as individual property and not HUF property. Of course, the issue is settled by Supreme Court decision in Chandra Sen. Your share in HUF property is again, if partition takes place, whatever share you would have been entitled to, that you can will out. Who can make a individual can make a will? A person becomes major only after completion of 18 years of age according to the Indian Majority Act. And
uneducated or illiterate person can also make the will. However, some other person should read of such illiterate person to him. Naturally, so if your will is in English and the person doesn't understand anything at all, or is illiterate, because Marathi, so that the lady understands perfectly, so there will not be any dispute or at all later on. But a person who has put a thumb impression, and if you are going to draft the will, and if there is a disproportionate distribution of property, or if one legal heirs want to challenge the will, he can very well challenge the will. So it is advisable to draft a will, preferably in the language in which the person making the will is convenient to him, conversant with him, understand the language. That's all. Every will is revoked after Section 69 of the Indian Act 1925. If a person has made a will before marriage, then it stands revoked, it stands cancelled by law immediately after marriage. Become your wife. So if you give everything to your mother or everything to your brother and nothing to your wife, because there was no wife at that time, afterwards you have got married, so wife should also be protected. Now, look all these things from the angle of 1956 situation at that time, where 1 out of 1,000 were employed from female force, whereas nowadays almost 90% are employed. So now our daughters or they are well educated, employed, earning. Of course, the law as it is correct, not challenging on that. But the point is, see the situation at that time prevalent. That's why the law might have made a provision that in the event of death, in the event, so that she gets a protection. A will can be amended as many times as one wants. There is no restrictions at all. Even a new will can be made replacing an earlier will. That means you can make amendment or you can cancel the earlier will and can make a fresh will. But always ensure that there is always you will find a clause. I have made this will on so and so date, say 4th October 2025. All the wills made before this date are hereby cancelled. Otherwise, there will be 2-3 wills simultaneously in existence. Then it is a headache for the court as well as for the legal heirs. So this statement is always there. Registration. Again, the registration is not compulsory in India. However, if you have got a immovable property situated within the original jurisdictions of the Calcutta, Delhi, Calcutta, Madras and Bombay High Courts, registration is compulsory. Again, just out of curiosity, if you are aware, only these 3 high courts, their names today are even the same names. We still call it Bombay High Court. We still call it Madras High Court. We call it Calcutta High Court. They have not been changed to Chennai. There is a Chennai Tribunal, but there is no Chennai High Court. We have got Mumbai Tribunal, but we don't have Mumbai High Court. In Marathi paper, they write everything, no problem. But in legal sense, we have got only Bombay High Court, Calcutta High Court, and Madras High Court. No, the present names are there. So if you have got immovable property situated within the original jurisdiction of these 3 high courts, then registration is mandatory. At other places, it is voluntary. It is advisable. That part I'll come into. However, if original will is registered, then all subsequent
amendments need to be registered. So registration is not compulsory. You made a will in 2010, you are not registered, no problem. You made a fresh will in 2016, cancelling 2010 will, even though it is not registered, no issue. In 2018, you made a new will, which is registered, and now you want to change it in 2025. Since the last will was registered, all subsequent wills must be registered. What if registration is not there? We'll see later. A registered will can also be replaced by new or fresh will, because you can change the will as many times as you want. In Maharashtra, I'm using the word specifically Maharashtra because, as you are aware, stamp duty is a state subject. I'm not aware of. In Maharashtra, no stamp duty is attracted for executing the will. It can be executed on a plain paper also. Care should be taken, such paper is normally the A4 paper which we use for our printing purposes should not be used. So normally when I print the will, I draft it on your 70 or 90 GSM paper, which is normally 90 GSM paper, which is used for registering a document. A little bit thick paper or a green ledger paper also, legal paper, to ensure that it has to last long. Don't use a onion paper or something like that, which may not survive because nobody knows when a person will die. No stamp duty is required. Registration charges in Maharashtra is 100 rupees, 100 plus 20 rupees scanning charges. As you're aware, every document you give it for registration, immediately you get back the original copy after scanning is done. And for scanning, they charge, I think, 20 rupees per page. If it is a 10-page bill, the 200 plus 100 plus extra, that is everyone to take care of it. So this is the cost required to make the will. As compared to succession, it attracts stamp duty with reference to value of the property. So it does make a sizable difference in cost. Witnesses. The testator should sign the will in the presence of two. As a practice, I am using it. All the three should put initials on each page and the full signature on the last page. All signatures should be clearly visible. Right? One of the witnesses may be a family physician, but at least I follow practice. It is preferable to have additional person. That means one doctor and two witnesses. Please note, physician's signature is not required by law at all. Law requires only two witnesses. But it has been a practice to take physician's signature that he has checked the A and Mrs. A or like that. And I have found them condition to execute the will. These two words are important, physically and mentally, because in Uddhav Thackeray's case, Balasaheb Thackeray's case, Jaydev Thackeray had challenged that Balasaheb Thackeray was not physically in a position to sign his will. That was the challenge, because it was executed in a, I think, Lilavati hospital or wherever it was. So that was the challenge. So it is preferable to have doctor's certificate. I'm using the, but it is a practice. Again, the practice vary even from within Pune also. For example, at 2-3 places where I do registrations, of course, I can't go there. I have to send the advocate only for that purpose. Now they want a doctor's certificate on the lettered separately. So we get it separately and paste it to the ledger paper. At some places, they say that even if it is included in the will and signed somewhere with a stamp, it is acceptable. So it practice varies from registrar to registrar. That's a practice.
But the medical certificate was while litigations are there. That's why I'm giving you the example, na, Bala Thakure's will. So, see, it is a practice law. No, see, if you read the Indian Succession Act, nowhere they say that you have to have a doctor's certificate. But we obtain it what? To prevent or to eliminate any dispute. That's the only thing. So it's a practice. He should state above his signature that he has examined the executor and the executor in sound physical as also sound mental health. Both words are important, physical and mental health. Preferably, the beneficiary should not be taken as a witness. I'm using the word preferably. That means advisable not to take beneficiary as a witness. So there are two sons are there, and there is an unequal distribution of the property, and a son getting higher share is a beneficiary, is a witness. The younger can say that the elder son has obtained the signature of father on the will under duress or under coercion. It can be because his signature is not there. All of us are aware, anyone above 18 years can be a witness. Your neighbor can be a witness, your friend can be a witness, your chartered accountant, advocate who have drafted the will, they can also be a witness. Why? Insist on beneficiary as a witness. So, advisable, I use the word preferably. That means it is not illegal. Preferably, we should avoid beneficiary as a witness. Then executors. Normally, a will carries 2 or 3 names of executors. An executor should be appointed to carry out the wishes of the deceased testator. Executor can be relative or even the beneficiary. Even a company can be appointed as executor. So a will has been made. A beneficiary is the executor or near relative is the executor. You as a person drafting the will as advocate or chartered accountant can be an executor. But many times the issue arises, see, death is uncertain. Before making the person who has made the will, the executors die, then what will happen? Because executorship is not by way of succession. Then we have to change the will, appoint a new executor. So the remedy is provided that a company can be an executor. As you have said rightly, Bank of Maharashtra has got a subsidiary, Maharashtra Executors and Trustee Private Limited, 100% subsidiary of Bank of Maharashtra, where a company can be an executor. As you are aware, company has no natural death till it is dissolved by NCLT or a competent court. It is going for. So the question of executor dying before the person who has made the will not be there. Personally, I have got very bad experience of this company, not on the open dais. I'll let you know after the session is over. Then we have seen that will may be registered, may not be registered. But if will is registered, then all subsequent amendments, new wills must be registered. But suppose if you want to transfer the property at Pune Municipal Corporation, many times they ask for registered will. Legally, it is not required, but they ask for registered will. Or a will was registered in 2018 and in 2025 will was not registered. And unless the 225 will is registered, it will have no legal force because earlier will was registered. Law provides a remedy. It is provided in section 40 sub. Or after his death, please note, after his death, any person claiming an executor or otherwise under a will may present it to any registrar or sub-registrar for registration.
So 2018 will is registered, 2025 will is not registered, and a person has died before registration, does not matter. You can still register a will after death. Who can prefer the registration? It provides executor or otherwise. Now, otherwise has been interpreted as a beneficiary also. So if a will is not registered, the beneficiary can approach the registrar, produce the original will, and it can be registered even after death. And it has been so provided by Section 40, subsection 1 of the Indian Registration Act. Unfortunate part is the registrars at the ground level, they are not aware of these provisions. At the first instance, they refused point blank, produced. How can I produce a person who has already died? He was not listening to. He said, I will refer this issue to Inspector General of Stamps and Registration, IGR, they call it, somewhere in Pushpa on BBRD Road. But okay, no problem. I don't mind going to meet over there also. I had been to there. I said, this is the law provides. It's not my wish. You have to accept it. Then he issued a direction to register a will. A will can be registered even after death. But you have to convince or you have to take the issue to the Inspector General of Registrations, nothing else. Because these local people, they are concerned with the stamp duty value and the stamp duty only, nothing else. Now, self-drafting, as I told you, how it is a good professional opportunity for us. A person can draft a will, no doubt. It is his property that he wants to whom he wants to give, he can give it. But care should be taken. Ambiguity or vagueness in the disposition. I'll give you an example, then you'll understand. A lady has made a will that she has got 2 necklaces. She states that one necklace to A, another necklace to B. Which one to A and which one to B? That is an ambiguity or vagueness. Yes, absolutely. But if she writes in a will that Mohan Mar with 22 grams to A, Pohehar with 27 grams to B, it's clarity. But if you simply give one to A and one to B, which one to A and which one to B? There, our job is there. Clarity. Avoid unnecessary complications. Or before that, ambiguity or vagueness. A will was drafted. A person has got property worth 10 lakhs and 5 legal heirs. He has drafted that 2 lakhs to A, 2 lakhs to B, 2 lakhs to C, and 2 lakhs to D, balance to E. Please note, balance to E. See, the person making the will today, he has got property worth 10 lakhs. On the date of death, the property may be 8 lakhs or 12 lakhs. If it is 8 lakhs, A, B, C, D will say that we have been given 2 lakhs each and balance 0 to E. But if it is 12 lakhs, E will say A, B, C, D 2 lakhs each, 8 lakhs gone, balance 4 lakhs to me. Now, why have this vagueness? You may say 10 lakhs today's property shall be divided between A, B, C, D, E equally. On the date of death, it may be 8 lakhs. Then each one will get 160. If it is 12 lakhs, each one will get 2,40,000. See, unless there is a specific intention, you can specify that A will get only 2 lakhs, irrespective of my property at the time of death, as the one I have given the first example. It is your property. My job is to put it in the proper language, nothing beyond that. We never, client do ask, to whom should I give this bungalow? Or it is your bungalow, not my bungalow. To whom you want to give it? You give it. If you want to give it to me, I have no problem. I think you are aware about the RM Lodha Tata Company case. Priyambada Birla, 5,000 crore worth property was given to auditor. And matter went up to the Supreme Court confirmed it because the advocates who are arguing on behalf of Birla Group
They themselves were the witnesses to that document. Anyway, so point is, it is your problem, not my problem. My problem is to draft it in a proper way. That's the only thing. Avoid in unnecessary complications, especially in case of immovable properties. I'll give one or two examples, then you'll understand. Many times people say that I have got 3 flats, only 2 children, one to A to one, B to another, and third flat, I give it joint ownership. See, it is your problem. The problem really arises later on. Suppose the flat number 3 is jointly owned by 2 children. If one wants to sell, he cannot sell it to outsiders. He has to sell it to his other brother or sister. The other brother or sister will say, I don't have money. I don't want it. That means the third person wants to liquidate the property. He is not in a position to encash that property. Another practical example which I had experienced. One of my relatives made a will in 1975. He was the State Bank of India manager. I was in school at that time, so I was not concerned with that. Now, I do not know. He is a SBI manager. It is a bungalow in SBI colony. He has given ownership to the son, and wife was given right of occupation. As happens everywhere in the world, dispute between सासू सुनांचं पटत नाही. Universal truth आहे. Now, in that case, wife cannot ask the son to go out. You go out, stay wherever you want to stay along with your wife and children. After my death, the property will be yours. She cannot say because she was. And son cannot ask his mother to go out because she has right of occupation. And that lady survived 40 years after husband's death on the first floor, independent, his wife and children resting. Now, what have you achieved? By forceful staying them together, you have complicated the issue. Had it been given everything to your wife, she could have told, see, but why? Stay anywhere. After my death, it will be yours only. That's much simpler. In case of immovable property, you can divide it easily. If 10 lakh deposit is there, okay, you take 5 lakhs, I'll take 5 lakhs, issue is closed. But in case of immovable property, you cannot divide the property physically. If it is one flat, one entry door, then you cannot sell half share to rank outsider. You have to sell other owner only, half one. Unnecessary complications. And the last one is residuary clause. Why it is required? Because the day on which you make the date of death is bound to be different. Property, medical treatment, anything. So there is a change in that we should provide a residuary clause that whatever is not stated above and still remaining to be shared equally or to be contents of the will. Should it be disclosed to beneficiaries? I'll leave it to you. In a sense, see, if it is known to the beneficiaries, a person who has got a higher share may consider, even I am getting the higher share, why should I take care of my parents? Or the person getting lesser share, I know I am getting lesser share, I take care of parents.
Either way. So whether it should be disclosed or not to be disclosed, law doesn't say anything. I don't want to say anything. It is your personal relations within the family. At least make it known where the will is kept. That's all. That's all. म्हणून तर म्हटलं ना, should be told to someone at least. कोणाला तरी सांगायचं. See, as a will, if you keep the will yourself, then what is the use of that will? How the beneficiaries will ever come to know that there is a will? So at least to the fact that you have made a will is sufficient. Whether to give a copy of them to them or not, that is your choice. Should it be disclosed to executors or witnesses? Same question. See, again, the people believe that if I get the signature of witnesses, then witnesses will come to know the contents of the will and he will inform to the beneficiary. But a witness is a witness to the signature. He's not supposed to read it. You can put one page of blank paper. I'm signing, you sign it next to me. If the witnesses are your beneficiaries, if the witnesses are your relatives. See, everything depends upon you. I cannot tell you that don't. I cannot tell you that do it. It is up to you. Custody of the will with the beneficiaries. I'm just raising the question. I don't have any answer because the answer vary from person to person. With the beneficiaries, with the executors, with the relatives, with the professionals like chartered accountants or lawyers. I do hold a couple of wills of my clients. With the bank in self-custody, not in lockers, I mentioned it. There is a concept called self-custody with the bank, where you can keep a copy of the will with a bank branch, and that copy is kept along with other documents of the bank. It is not a locker, because in case of locker, it is within your control, you have got the keys. But in case of self-custody, you can give it to the bank. Bank will hold it for you, for which they charge annually. The charges earlier were hardly 250 rupees to 300 rupees a year. And you can give instructions that after 30 days, this copy to be given to A and B jointly after identity has been verified. Will go, it will not be given because my instructions are to be given jointly. It will be given jointly and the job is over. Time to ask later on. No problem. So that is last. Where any senior citizen who, after the commencement of this act,
by way of gift or otherwise his property, subject to the condition that the transferee shall provide the basic amenities and such transferee refuses or fails to provide such amenities and physical needs, the said transfer of property shall be deemed fraud or coercion or under undue influence, and shall be at the option of the transferor be declared void by the tribunal. A has made a gift of his residence. Many times practical difficulties arises. A is a part owner of the property along with his son, because son has got the bank loan. A could not have the bank loan, so it is a jointly owned property. A has gifted the property to his son with the intention that he will allow him to stay there till his death. But once the property is fully owned by his son doesn't give proper treatment to his father, may ask him to leave the premises also. In that case, under this act, a tribunal is established, and that tribunal can declare the gift deed as void. In that sense, A can become half owner of the property or whatever his ownership share again. That means earlier registered gift deed can be cancelled by the tribunal also. There is a beneficial provision with respect to the senior citizens only. Now, issue is, shall provide the basic amenities and basic physical needs. Two issues are there. Should this provision of basic facilities, amenities and physical needs, should it be included in the gift deed? Should it not be included in the gift deed? There is a diversion of opinion among the high courts. Madras High Court has held that even if there is no specific statement in the gift deed, it is presumed to exist, and therefore they have upheld the decision of the tribunal that earlier gift deed is void. But the contrary decision of the Delhi High Court, there is no recital in the gift deed. Therefore, tribunal has no authority to cancel it. We are aware that if there are divergences with the high courts, Supreme Court is the only to decide the issue. This act is providing for that particular amenities. Act is not providing amenities. You are giving the property to your son, gifting the property to your son, and while you are giving it, so that you will provide me the basic amenities and huh. That act to protect the interest Yes. of the person. Yes. The problem is whether there should be unequivocal statement in the document or not. That is the issue. Madras High Court says there is no need. Delhi High Court says there is a need. Supreme Court, my will decide. But most probably, Madras High Court says that it is presumed. That's why it has been given. There is no need to write it specifically. Of course, that is their interpretation. Then in that case, it becomes a conditional gift. Agree? Agree? Can you put the condition by use the gift? Natural love and affection, agreed. That's why the Madras High Court Madras High Court said there is. नाही केलं मी आता लक्षात काय झालं. चालू केलं.
नाही इथं हे राहिले ओके Yes, yes. The last one, I given this in a happy mood because many people believe that a will is made, that means it is imminent. Not necessarily. In fact, if you make a will as per your wish, because will implies your wish only, you should feel happy, relieved from the obligations of the family, children to take care of themselves, as well as their parents. I think, thanks a lot, all of you. Any questions? I'll be happy to answer to the best of my ability and knowledge. Thank you very much. Thank you, sir, for the insightful and enriching lecture. Your valuable tips have greatly added to our knowledge. Sir, all of us enjoy your lecture. We've seen this subject in Marathi movie Tu Titha Mi and Hindi Bagban. Sir, this topic is critical but interesting, complicated but important. You made it very simple. Thank you, sir. Let us all give a big round of applause to C.S. Sharad Vazi sir for his excellent and informative session. I now invite our past president and session chairman, Advocate Deepak Budse sir, to give his remark. Sir. Fine. Take it. Is there any required to give my opinion or my comments on this beautiful lecture? Because he has given everything, and not only in a legal language but practical. What can happen when there are two brothers, when there are two sisters, when there is only one mother and the property is coming from predecessor. So this is very important. In a very nicely he has explained. So I don't think that I should comment on this beautiful lecture, which is very knowledgeable, which is very practical,
it can be understand to every person, whether he is from legal field, whether he is from chartered accountant or a layman. So in such a very fine language and very lucidly he has explained everything. This is something different, I must say. And there is untouched stone is not there. He has touched each and every subject. And I don't think that I am being a commentator or what, I don't know. I should be only that, yes, this is very nice, this is very wrong, this is not done, this has not taken care. No. I will not be in a position to criticize his knowledge. I am not in a position to criticize. He has taken efforts to draft this paper. And this is absolutely nice. This is something, since 15 years back, sir, I have presented a paper. It was a first international Sri Lanka. I have presented on this subject. And after all, it is a 15 to 16 years have been passed. But the things are same there. Things are same. Problems are there. Whether it is to be registered or not. Whether it is to be given to a particular person or not. Not even that. In my that paper, I have mentioned that what you have also clearly said, but I have one step ahead, that a person, their son, they are not asking him, daughter, they are not asking him, and that person doesn't want to give that his property, his self-acquired property, to their son, daughter and all that. He can give his property to that person who is his servant, who has taken care of that person. There is no dispute. So this is also there. So what can I say regarding this? I must congratulate you that you, myself, or even Mr. Bonde sir, you have freshed our knowledge. You have freshed our intelligence. This is absolutely right. And before I leave, it is generally my lecture, the last time of lecture, I end up in a joke. So very nicely, this is my habit. One of my client came to me. He explained me, and I know what is his property, what are his son, daughter, father, mother, everything. He asked me, sir, you do whatever you want, and you know my responsibility is mujhe se lagna hai, vagare vagare. So you distribute that property. I have taken 1 week's time. I have drafted his will very nicely as per his instruction. I have drafted that, okay, this much is done, this much is done. But while after reading that will, he asked me, sir, what is this? This is not a will. Are Baba, this is will. It is your will. You told me orally, I have written it in paper. That's all. Nothing I done. No, sir. तुम्ही हे सगळं केलंय, पण तुम्ही मला काहीच दिलं नाही. Thank you very much, sir. Thank you very much. अजून एक प्रश्न आहे Thank you, sir, for kind words.
there is no questions at all and queries from the participants. Now we will take 10-minute break, and after the break we will have another important session. My question I got a lot of issues Okay, which okay. I can discuss. मी खाली बसून फोन विचारतो. There is a query from Bonde sir. Good afternoon, everyone. Those who are sitting in front of me and those who are available on basically virtual hearing. In fact, this was the topic which was to be attended personally for the simple reason that the man during his lifetime, right from his young age, during his till the days of advanced age, he goes on working to accumulate the wealth. Could be in a legitimate way or sometime in illegitimate way. I don't want to make any comment on that. But ultimately the disposal of that particular wealth after his death is a very important topic for the future generation, and that person is to be remembered by his legal heir that yes, my father has done something to me. So it is very important topic, not those who have crossed age of 60, but even it is nowadays applicable even the persons or the professionals today who are in the field, in the age gap, in age range of 40 to 50 also, considering the today's uncertainty. But as far as the advanced age professionals are concerned, definitely it is a very important document. Now I have been given the opportunity. First of all, I make a mention about the dignitaries on the dais, the president of our association, the convener of this session, then the chairman of this session, and last but definitely not least, today's speaker who has delivered an excellent academic lecture on the topic of the will. Now I would take a privilege and an opportunity to ask you a few questions. I mean, it is a legal aspect for these issues, and whatever the question I am going to ask, those in my opinion are no way hypothetical answers. Being a member of the managing committee of my cooperative society, I am coming across with certain issues which are related with the will. I would like to ask you, I mean, in that case, it is going to be helpful to all those who are available on this, virtual also. First issue is that if the lease deed of cooperative society has been executed with the father and one of the sons, can the father afterwards through will bequeath the said property to another will? Father and son have joint property. Yeah. Now whether The father can bequeath the same property, I mean his share or the property lease deed through lease deed to another son. to another son. See, the issue is who has contributed to the property, if whether they are joint owners or co-owners. If they are co-owners, then you are owner of half the property or whatever share that has been provided in the document. Correct. That can certainly be bequeathed or can be given Yes. or even gifted during his lifetime Lifetime. also to the other son. Correct. There is no issue at all. But total bequeath cannot be made if the another son has contributed to that particular property. Certainly. But that's why we have to make a mention in the will. Correct. That this property has been acquired fully by me. Correct. Along with my son who Yes. has not contributed anything. Correct. So he is just an owner in general law. Yeah. But not as a co-owner, he Very, is a joint owner. very true, very true. That's I mean, that's issue we came across with, and the same answer what I am given to that person. In bank accounts of different nature, it is common practice to record the name of the second holder. In case of a death of first holder, bank can ask a copy of will or succession certificate to assign property in deposit to second holder, or his record in bank is adequate him to be eligible for sum covered by that deposit. In case of bank deposit, suppose A and B, they are deposits in that name. Now, what is the type of deposit? Whether it is either or survival, that is important. If A or B,
then in that case, in the event of death, if the deposit is either or survivor, then there's who is a survivor will be the, I'm not saying owner of the property, will be the holder of that property. The will or succession will always prevail. Okay. So bank can insist for succession certificate to pass on the content of the property See, to the again, second holder? From bank's point of view, Huh. bank says, since it is either or survivor, we have given the property to the survivor B. Correct. You B and your legal heirs That's fight all. out elsewhere. Correct. Means that job is over if that amount is transferred to the second holder. Because it is either or survivor. Either or survive, normally, yes sir. In case of a cooperative society, plot appointment of nominee, in case of cooperative society plot, appointment of nominee has interest in the property subsequent to the death of original member, or such society shall ask for a copy of will to establish right of ownership of leasehold property. See, nomination that is provided under Cooperative Societies Act also, nomination takes the dispute out of the society. So society will transfer it to the nominee. If later on nominee says that A, B, C, not excluding nominee, A, B, C are the legal heirs and accordingly their name should be added, then it is the responsibility of the society to ensure that there is a will or a succession certificate to be transferred in the name of A, B or C. But if nominee simply says that it is not my property, he is a legal heir, so it should be given to him, then it should not amount to transfer without procedure of law. If I can prove that a will, he is the beneficiary, then it okay, so he has to follow it. So in that case, nomination is there, but after the death, the person who is the beneficiary comes with that will copy. Then in that case, what he gives the document, we have to give for the that signature, the nominee is required because by law, nominee has got into the shoes of the legal owner earlier. Okay. Only for the sake of legal heirs, he holding the property in trust for the legal heirs. Okay. So his name will be there. Then nominee will give it instruction to the society that I am one of the legal beneficiary, or I am not the beneficiary, he is the beneficiary as per will, so property should be got transferred. Then society should ask for a copy of the will. Correct. Otherwise it will amount to private transfer between nominee and that other person without stamp duty. That should not happen. Okay. Whether merely recording the two members of the same family as an original member and joint member in cooperative society records establishes the right of joint member in the said property on the death of original member, ignoring the property bequeathed to another member of the family through will by original member. Again, the same logic, by associate member or joint member or sahasabhasa, what they call it, ownership is not created. It has got only for specific purposes, for the purpose of AGM. If a member cannot attend it, then the other person can be deputed. Ownership right is not created by simply adding the name, because you can give the name to the society. Society simply adds to it without any legal documentation. And as you are aware that in case of immovable property, unless it is registered, it doesn't create any rights whatsoever. Residential property constructed by a person on an ancestral property, this little complicated issue is there, but it's once again a actual case with us. Residential property constructed by a person on an ancestral property out of self-earned income, can such person deprive his daughter of share in the said property by executing will, especially after Supreme Court decision of 2005, bestowing rights in ancestral property even to the married or unmarried daughter? See, property was acquired by A, on which B has done the construction. Right? Yes. And B wants to exclude his daughter. Yes. That is what I. Yes. Yes. Now, property received from A to B. So whether B is owner of the property in what capacity? And it's ancestral property. Ancestral means against what? Because if you are aware, if a person has died, I don't know exactly, to make clarify, I think 9th September or like that, where the Hindu Succession Act came into force from 9th September 1956. Prior to that date, if there is a death, the property will pass on as per Hindu law, and after death is after that date, then the property will pass on as per Hindu Succession Act. So A has died prior to 56 or after 56, that will determine everything.
If he has died prior to 56, then it is a joint family property, then daughter has a right in the property. Okay. If A has died after 56, then B, it is his individual property by virtue of Supreme Court decision CWT versus Chandra Sen. Then B can exclude his daughter from the property. So he said before or after 1956 is going to decide it. That is the issue. See, all this succession will apply only in the case of Hindu Succession Act. Prior to 9 September or 8 August, that particular date is there. Prior to that date, if there is a death, then Hindu law will apply. Okay. That is Mullah's Hindu law. Oh, That's yes. how I put it. After that date, Hindu Succession Act will apply. Okay. So again, this, whenever, at least when I draft the will, I do take into account when how you have become the owner of property, when your father had died, prior to 56 or after 56. Okay. That is a crucial date. Cut-off date. Cut-off date you can say. फक्त डेट कन्फर्म करा तुम्ही. Yes. I am not aware. Yes. Exact. Yes. 9 सप्टेंबर अशी वाटते मला. That is a typical date. Correct. I think No, it no, is we are at September. September. Yes. Can a registered or unregistered will be challenged in court of law by a person having an interest in the property covered in the will on the grounds of coercion, misrepresentation or fraud caused by the beneficiary of the will? See, whether will is registered or not registered can anytime be challenged. It can be challenged. It can be challenged. A registered will cannot be challenged is absolutely incorrect. Even a registered will can be challenged. Correct, because people have got some that type of mindset. Registered That is registered. fine. No, it is shikkamortam. But a general thumb rule is like that. The duration between the date of death and the date of making the will, longer the better. It is towards more genuine. Normally, will is signed by two persons as a witnesses. Whether a death of both of them or either of them may have impediment in registration of such will. Yes, in it, anybody can register it. Beneficiary or executor. Even executor also can Yes, register it. the law provides executor or other person courts have included beneficiary. So even earlier, both are expired, the witnesses, doesn't make any difference. You Because can register a will. you can register a will. As I explained, the practical experience, the registrar at that local level, Yes. ground level is not aware of it. Yes, yes. He So is to be he, made aware of it. so what in that case, what type of document or evidence we have to prove that that this bill was signed by You this have to- person only? In the will, your name is there as a beneficiary. Yeah. You have proved your identity that I am a beneficiary, I want to register my father's will. Okay. So signature of witnesses is not that way important that time. Witness is to the person who has made the will. Yeah. Yeah. But he's That's now both the witnesses have died. Okay. See, you can't expect a witness to survive they should die only after the person who has made Their the will. death is not going to affect the registration of the document. Not at all. Yes. Can beneficiaries of will or parties deprived of right in property, what question is both way, can beneficiaries of will or parties deprived of right in the property, which is the subject matter of will, sign the will so as to make it binding on beneficiaries or persons deprived of the right in the property? Beneficiaries or the person who is not having any interest in the property, but his signature has been taken as a witness on that particular document. And witness can be any person above 18 years of age. Even a beneficiary can be a witness. But I have suggested preferably he should not be taken if there is disproportionate distribution of the property. The person getting the higher share or the person getting the lower share morally, he may challenge the will that it has been obtained by coercion or unduty. Yes, So so- beneficiary witness Not should be ranked outside. So of they it. should be avoided. So as far as possible, they As should far be as- avoided. That's why I use the word preferably. Law nowhere prohibits, but preferably should be outside. But त्यांनी सांगितलं ना तुमच्या लेक्चरमध्ये he has taken that this subject he has taken already. Yes, yes. नाही प्रश्न तर मध्ये काय होतं की इफ द पर्सन हु हॅज साइंड इट अँड आपल्याकडे काय माहिती का असं बिल मध्येच लिहायला पाहिजे का? असं नाही. आपल्याकडे काय माहिती का लॉ आपण आता अभ्यासला पण दोज पीपल आर लेमॅन पीपल Lemon. They do. तो काय म्हणतो एक मुलगा अरे तू सही केलीस ना म्हणजे याचा अर्थ तुझ्यावर ते बाइंडिंग आहे बिल नाही. नाव यू कॅन्ट आर्ग्यू यू कॅन आर्ग्यू तुला ह्याच्यात काही दिलं गेलं नाही किंवा तुला जे अपेक्षित होते तुला दिलेलं नाहीये नाव यू कॅन्ट आर्ग्यू असं त्याच्यात त्यांना असतं ते. Witness signature is signature to the person making the bill. That's all. To that extent only. He is not concerned with the contents of the will also. Not at all.
If the beneficiaries of the will have acted as per the terms of the will and distributed the property, then can any of the beneficiaries object on contents of will, saying will has not been registered or on any other grounds? Registration is not compulsory, is the one thing. No, means whether after they have both, all of them have acted, beneficiaries have acted. Again, now practice is, as an executor, when the property is distributed and make a statement, get the signature of all beneficiaries that they have gone through the will and they have received the property as per the will. This is to absolve the executor in future. No one should challenge the beneficiaries with the executor that executor has not given me the property or executor has given more property to that person. It should not be like So that. executor should take the signatures of every one of them, Yes, that we are having satisfied with the received- content. Having received the property. Correct. Yes, And yes. as an executor, I have done my job. And after receiving the content, I mean, after receiving as a beneficiary, we cannot have any right to raise about the sanctity of the document. Yes. So, whichever question shall I continue? Yes. Is it okay? No, Malala problem. No, I mean asking. Shall I continue? I think you are there for next lecture. That's the timing. Bola. Then ठीक है, I will stop it. No problem. That is your choice. I have got the issues, but these are the issues of larger interest. That's why I am referring them. I think that these are larger interest. I have no problem. My problem is only if the new guest has come up. That's the only thing. Yes. No, we can stop. No problem. What you say, as you are organizers, we can stop. No problem. We can. Yes. So if the only two questions are there, then I will go to some more important issues. One more thing, I will be giving the PPT to your organization. You can freely distribute it. Yes. Email करा करना ऊपर कराते करूँगी. Very interesting issue in our society that I will refer and then stop. Very interesting issues that which has, in our society. One will had been executed 50 years earlier, and through the said will, property has been bequeathed by using the word vansha. Vansha. माझ्या वंशाला दिली जाईल. Instead of legal hair, the word has been used instead of legal hair. And it has happened, it's all no hypothetical. Can the sister of such vansha claim right in the property as a legal heir, where the property has come in existence 50 years earlier and sister has born before 2005? Now, one thing. See, also I have done the advocate. I am not practicing as an advocate. Vansha, the word is used as vansha. The point is, I think, is there any provision in the Indian Succession Act where the beneficiaries are not ascertainable? We'll have to look into. Or will it come under the doctrine of impossibility? That is also an aspect. कारण वेगनेस इथे येऊ शकतो. वेगनेस करता जर इंडियन सक्सेशन ऍक्ट मध्ये जर स्पेसिफिक प्रोव्हिजन असेल त्या केसमध्ये then the succession will be required and not the will. कदाचित 50 वर्षापूर्वी that might be the practice. May not be. Yes. पण वंश म्हटल्यानंतर जो माणूस त्या माणसाचं नाव लावणारे पुढे दॅट विल बी रेकग्नाइज द वंश. आणि त्या माणसाने 50 वर्षापूर्वी जरी ते प्रेडिक्ट केलं की माझा नाव लावणारा जो असेल तो पुढे याचा मालक होणार आहे. पण सर आता हा जो प्रश्न आहे गोंडे सरांचा, मला आता 2005 नंतर मुलगा आणि मुलगी तो वंश आहेच ना त्यांचा. बेसिकली 2005 नंतर डॉटर हॅज गॉट द कोर पर्सनली राईट. करेक्ट. That is the only change. Whether she is born before or after, or whether she is married before or after, Yes, that yes. is the Supreme Court has clarified it. The problem is when it is his property and his property has made it to be given to a particular person, then the Supreme Court decision will not come in the way. Even now also, even after 2005, father says, I want to be everything to my son, nothing to my daughter. If it is self-acquired property. Yes, सेल्फ अर्न That प्रॉपर्टी. is possible. it is self, that is possible. फक्त एवढं फक्त बघायला लागेल की वंश ह्या
ही जी डेफिनेशन आहे हा मोस्टली डेफिनेशन ही वेदर ती वेग म्हणून ते जाईल किंवा क्लॅरिटी नाही किंवा ॲम्बिग्युअस आहे म्हणून म्हणजे असं काही इंडियन सक्सेस ॲक्टमध्ये रूल्स असतील तर कदाचित देन यू हॅव टू थिंक इट डिफरंट. फ्रँकली स्पीकिंग मी डे टू डे इंडियन सक्सेशन ॲक्ट अभ्यासत नाही. माझं तर का नाही. Okay, friends, I did have a number of more issues, and those were really based on the existing facts only. But association has allowed me to present my issues, and the speaker has nicely responded them, and so I'm thankful to him and the association also. Make a reference, it will be available to all. PPT will be available. Yeah, now the PPT which has been presented by the learner speaker will be made available to every one of you, and you can go through the same. Thank you very much. As a protocol, I should not do it. Thank you, Bonde sir. Your questions gives us additional and new angles of knowledge. बोंडे सरांचे प्रश्न हे कुट प्रश्न होते ते आणि एखाद्या बॉलरप्रमाणे फिरकी बॉलरप्रमाणे त्यांनी टाकले आणि सरांनी वजे सरांनी तेवढी समर्पक आणि समाधानकारक उत्तरं दिली. थँक्यू सर. आता एक वी विल टेक 5 minutes ब्रेक अँड आफ्टर द ब्रेक वी विल हॅव न्यू सेशन. थँक्यू. Thank you very much, sir. Thank you. कुठे गेलं? नॉर्मल कुठे गेलं? देतो एक मिनिट.
हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? आई एम ऑडिबल? हेलो, हेलो, आई एम ऑडिबल? हा, माझा आवाज येतो का? Good afternoon. Welcome back. We now move on to our second session. I request President Advocate Anuruddha Chavan, Study Circle Chairman Shri Milind Hendre sir, to kindly escort our speaker CM Parikshit Aurangabadkar sir and moderator Vice President Advocate Jnaneshwar Narore to the dais. A special welcome to CA Umesh Sharma sir, who is joining online. Please give a big round of applause to the dais. I also request CA Sneha Kulkarni madam to join us. Thank you sir, thank you madam. This session will focus on future of smart compliance, AI, in the tax audit, covering concept of AI in simple terms, pros and cons of AI in tax practice, application of AI in tax audit. Now I request President Advocate Anuruddha Chavan sir to give presidential remark. Good evening, all of you. Today's study circle faculty, CA Parikshit Aurangabadkar sir, moderator Advocate Jnaneshwar Narode, study circle chairman Milind Hendre sir, committee member Sneha Kulkarni ma'am, committee member Godke sir, and today's study circle chairman CA Umesh Sharma sir. Sorry. Respected dais, today's faculty is CA Parikshit Aurangabadkar sir, session chairman CA Umesh Sharma sir, moderator Advocate Jnaneshwar Narode, study circle chairman Milind Hendre sir, committee member Neha Kulkarni ma'am, committee member Godke sir, past president, senior members, and my dear friends. I, Advocate Anuruddha Chavan, President of Maharashtra Tax Practitioners Association, and it's my privilege to extend my very warm welcome to all of you to the 6th study circle meeting of our association. The theme of today's session, artificial intelligence
in tax audit is both timely and thought-provoking. We are living in an era where technology is refining every aspect of our professional and personal life. For us as tax practitioners, it is crucial and understand how AI can complement our expertise, enhance efficiency and bring greater accuracy in the field of tax audits. We are indeed fortunate to have with us a distinguished faculty, CA Parikshit Aurangabadkar sir, who will enlighten us with his deep knowledge and practical experience on the futuristic subject. His insights will surely help us bridge the gap between traditional practice and emerging technology. We are equally honored by the presence of our respected Chairman CA Umesh Sharma sir, whose vision and encouragement have always been a source of inspiration for this study circle. Today's session will be moderated by our colleague Advocate Dhaneshwar Narode, who will ensure that this decision remains interactive, engaging and meaningful for all of us. Friends, I believe today's deliberation will open new perspectives, spark innovative ideas and prepare us to embrace the future with confidence. On behalf of Maharashtra Tax Practitioner Association, I once again extend my heartfelt welcome to each one of you. Thank you, thank you. Over to Gorke sir. Thank you, Saman sir. I now request CA Sneha Kulkarni madam to introduce session chairman CA Umesh Sharma. Good afternoon, everyone. Respected MTPA President Chavan sir, Session Chairman CA Umesh Sharma sir, other dignitaries on the dais, off the dais, and members joining online and offline. आज का अगर देखा जाए तो ये मौका बहुत ही अलग तरीके का है। सेशन के चेयरमैन हैं उमेश शर्मा सर, जो औरंगाबाद से आते हैं, और सेशन जो लेने वाले हैं वो परीक्षित औरंगाबादकर सर है। इन दोनों का इंट्रोडक्शन जो दे रही है मैं खुद, मेरी जन्मभूमि है औरंगाबाद और कर्मभूमि है पुणे। सो ऐसा तो एआई का ऐसा कॉम्बिनेशन जो है यहाँ पे दिख रहा है आपको। सो देखते हैं ये औरंगाबाद के बंदे एआई का सेशन कैसे लेते हैं। वेलकम सर। Actually, Umesh Sharma sir don't need any introduction. He's a distinguished member of ICAI and he's a renowned GST expert. He is presently serving as a Central Council member of ICAI for the period 2025 to 29 after successfully completing his term for 2022 to 25. He is presently the Chairman of Artificial Intelligence Committee, Vice Chairman of GST and Indirect Taxes Committee of ICAI for the term 2025-26. He has been recognized by the World Book of Records, Asia Book of Records and India Book of Records for authoring the highest number of weekly articles on finance and taxation. His acclaimed tax series, Karniti, inspired by the dialogue between the Krishna and Arjuna, has gained wide readership, over 610 weekly articles published in Lokmat Times and Daily Lokmat in both Marathi and English. He has authored multiple books, Let Us Talk GST, Simple Answers to Your Questions, Karniti, and Marathi publication GSTचा संपूर्ण कायदा, which was inaugurated by Honorable Chief Minister of Maharashtra. He has been the youngest chairman of Chhatrapati Sambhajinagar branch of WIRC in 2002. He has also served as vice chairman of WIRC in 2019. He was also awarded Best Paper Writer at the RRC by the Sales Tax Practitioners Association of Maharashtra, now known as GSTPM. He is also the chief editor and compiler of widely used MVAT audit manual
and has significantly contributed to the revised editions of a guide to MVAT audit and background material on GST published by the WIRC of ICAI. So we have such a distinguished member with us. We are proud and honored to have you here, sir. Welcome. Thank you, madam, for the wonderful introduction. Now I request our advocate Anuruddha Chavan sir to felicitate session chairman CA Umesh Sharma sir. On behalf of Umesh Sharma sir, moderator Naneshwar Naravde sir, please accept it. Thank you, sir, for accepting our token of appreciation. Now I request CA Umesh Sharma sir to give chairman remark. Sir, over to Sharma sir. Yeah. I am audible. माझा आवाज येतोय? I am audible. Yes, sir. माझा आवाज येतोय? Yes, येतोय. Okay. Thank you, Maharashtra Taxpayer Association, for as a chair of this future of smart tax office. I am thankful to Jawanji, then and also welcome our faculty who is from Aurangabad, and also madam who is from Pune. And if we think today it's in the but the name of Aurangabad to Chhatrapati Sambhaji. So that's the other point. But friends, thank you all for joining. Those who are joining, those who are virtually, it's a good time that we are this AI. Please let me know that my PPT is visible. I am preparing my screen. My screen is visible? Yes, sir. Okay. It's just Now the PPT is visible? yes, sir. Yes. Now it's visible, sir. Okay. Okay. So the opening remarks, I just want to take some few points that how AI and we tax professional will be at the same page. क्योंकि AI जो है ये हमारे में इफेक्ट कर रहा है. It is affecting our day-to-day practice. And to understand this, we must have fundamental knowledge of AI. What is AI? How it is impacting our practice? Then what are the applications that are ChatGPT, Perplexity, Cloud AI? What our clients are using for data analysis, what for their account, for finance report, and also the industry adoption. What our clients are doing and what the industry is doing. What is the GST department doing? What are the income tax department? Multiple things we have to do because it is the AI or data analytics which has helped the government to bring this GST 2.0 form. Just understand 1,300 code were shipped from 5%, and from now the GST department was
with we all and with GST and net worth, and they were asking state-wise how much revenue be affected for each state in HSS code. So AI has been used by everybody, by the government. So we have to get up, we have to know what's happening in our area. Friends, ये मैंने एक चीज छोटी सी बनाई है. This is a very important thing that we all AI चे 4 आहे. त्याच्यामध्ये सर्वात कंपोनंट आहे जनरेटिव्ह AI. याला जर समजलं किंवा समजून घ्यायचं तर LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल को हम जनरेटिव AI से चैट जीपीटी हम बोलेंगे, या आप जो गूगल के ऊपर आप सर्च करते हैं कोई टेक्स्ट कोई ऑडियो वीडियो, जिसको हम मल्टी फंडामेंटल मॉडल बोलते हैं. तो जनरेटिव एआई में आप टेक्स्ट डालते हैं और आपको टेक्स्ट में जवाब आता है, तो हम बोलेंगे गूगल का एग्जाम्पल. Then the second aspect of AI, machine learning. This is not an important for the tax practitioners or the all. This is more important industry. इसमें डीप लर्निंग, सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम करेंसी गिनते हैं, तो मशीन के अंदर करेंसी डालते हैं, करेंसी काउंट. So that's the supervised learning. Every time it do the different count, 100 rupees or 110 rupees, whatever it may be. So it changes. I'm audible? Yes, you are audible, sir. Okay, thank you. Then comes the most important component of AI. ये हम सबको नोट करके लेना चाहिए. As a tax practitioner, as a chartered accountant, as a advocate, we all must know this. NLP, Natural Language Processing. दोस्तों ये ऐसा एरिया है जहां पर तुम्हारे हमारे सबकी जिंदगी पे AI असर कर रहा है. What is NLP? NLP मीन्स जो भी लैंग्वेज आपको आती है उस लैंग्वेज में आप उसको पूछिए, वो उसी लैंग्वेज में आपको जवाब देगा. फॉर एग्जाम्पल, आमच्याकडे कोणी क्लायंट येतं आणि त्यांनी विचारलं, साहेब मला शेतीवर किती टॅक्स लागेल. यू अंडरस्टँड, त्यांनी आपल्याला साहेब म्हटलंय, त्यांनी आपल्याला विचारलंय ऍग्रिकल्चर इन्कम काय होईल माझं, आणि पण त्याची भाषा आपण बघितली की त्यांनी मराठीमध्ये विचारलं. त्यांनी आपल्याला उत्तर देताना मग आपणही त्याला विचारतो, बरं तुझी जागा कुठं होती, कुठं आहे, किती किलोमीटर लांब होती, कधी तू खरेदी केली, असे प्रतिप्रश्न आपण विचारतो. जर दुसरा क्लायंट तुमच्याकडे आला आणि त्यांनी विचारलं, सर हाऊ मच कॅपिटल गेन इज ऍप्लिकेबल ऑन सेल ऑफ माय ऍग्रिकल्चर लँड, लगेच तुमच्या मनामध्ये विचार येतो की हा शिकलेला दिसतोय, याला इंग्लिश येते, तो कॅपिटल गेनच्या बाबतीत बोलतोय, म्हणजे याने अभ्यास करून आलेला आहे. तर असे जे काही प्रश्न तुम्ही आम्ही जे रोज विचारतो ते नॅचरल लँग्वेज प्रोसेसिंगच्या थ्रू आता कॉम्प्युटर जनरेटेड झालेलं आहे. चॅट जीपीटी नोज all languages of the world, perplexity, clouded. So by knowing the language, the AI has come to our office in our day-to-day practice. And the most important point, question and answering. As a tax consultant, what we are doing day by day, a notice come, it is a set of questions, we are answering it. If there is a audit, just like a tax audit report, there are set of questions, we are answering it. So wherever there is a question and answering, the AI is going to affect. And that is the area where we tax practitioners, we all professionals are affected. Please note this, my point. Wherever there is a question and answering is coming, AI will going to play a role. If you see Chat GPT, what are the top 10 prompts across world? The 4th number prompt is about finances and taxes. So people are asking more and more questions to the AI tools regarding the finance and taxations. So where the role will be in future of we all. So that is a very important point, that we have to adopt AI. And the last component of AI is a computer vision. Computer visions means object detection, scene understanding, face detection, motion analysis,
OCR. For example, if you go to airport, DG Yatra, the face is recognized, the gate is opened. So by that way, it is a computer vision. So there are 4 components of AI. Out of that, the third component, that is NLP, is the area where we all must focus. So the days are gone that I don't know AI. I am just a tax consultant or a professional. I know accounting, auditing, GST, income tax. Friends, that is not the case. We must know AI and we must know the third component, that is natural language processing. ज्यादा कुछ हमको इसका हो हल्ला करने की जरूरत नहीं है. एनएलपी के ऊपर फोकस करोगे तो आपको सारी चीजें आसान हो जाएगी. एंड व्हाट इज द एआई डूइंग फॉर टैक्स प्रोफेशनल्स? इट इज सॉल्विंग 4 प्रॉब्लम्स ऑफ आवर प्रैक्टिस. क्या है ये 4 प्रॉब्लम प्रॅक्टिस के? अच्छे लोग नाही मिळते, कामाला चांगली माणसं भेटत नाही, मॅन पॉवर इज द फर्स्ट प्रॉब्लम. देन खूप वेळ लागतो, टाइम इज द सेकंड प्रॉब्लम. देन क्वालिटी, दरवेळेस आपण विचार करत राहतो की हाऊ आय कॅन इम्प्रूव्ह माय ऑफिस quality. And the fourth is a cost, that is the revenue. So all 4 problems are addressed by AI. You get a manpower like you as a CS skill sets, as the efficient output and judgment based rules. 1700 चे 2000 रुपये महिना चॅट जीपीटी आहे. परप्लेक्सिटी 2000 रुपये महिना आहे. क्लाउड 1800 रुपये महिना आहे. तर हे टूल्स आपल्याला घ्यायला पाहिजे. को पायलट आहे मायक्रोसॉफ्टचा, तो घ्यायला पाहिजे. त्याच्या थ्रू आपल्यासारखा मॅन पॉवर आपल्या ऑफिसमध्ये डेव्हलप होईल. सो दॅट इज गोइंग टू बी बिग चेंज. देन कम्स टाइम अँड इफिशियन्सी. वी हॅव टू डू फास्टर ऑडिट. क्लायंट वेळेवर डेटा देत नाही. देन वी हॅव टू अपडेट आवर रिपोर्ट्स डे अँड नाईट. स्लाइड्स आर स्लो. Even at 12 o'clock, 4 o'clock, people are updating. So we have to have some AI assistant to do that. And then reduce turnaround time. आमच्या ऑफिस मध्येच आम्ही बिझी आहोत. मला तुम्ही सगळ्यांना एक मनाचा प्रश्न विचारायचा आहे. हाऊ मेनी ऑफ यू आर गिव्हिंग क्वालिटी टाइम टू युअर लाईफ? हाऊ मेनी ऑफ यू आर गिव्हिंग टाइम फॉर जिम, फॉर हेल्थ, फॉर योगा? वेळ नाही. So that is the problem. AI is going to save your time, and that time you should use and implement for your betterment in life. And then comes most important, that is the cost. What is the cost of AI? What is the cost of infrastructure? And what is the cost of learning the AI? AI for learning, there is no cost. You have YouTube videos, you have a Microsoft website, you have Perplexity website, OpenAI website. Go and learn it. You have your articles, you have your office staff, sit with them, you can learn. Then physical infrastructure is not required. Even your laptop, your desktop, your server is okay. You install the tools, and for that, what is the cost? Hardly एक ऑफिस बॉय जो रखते हैं अपन पूना जैसे सिटी में, अगर ऑफिस बॉय भी रखना है तो 10 से 15,000 रुपए महीने लगेंगे. तो 6 से 7,000 रुपए में अच्छे से अच्छे टूल्स आ जाएंगे. And you can use it in your office. By that way, the cost will reduce, but your revenue will also increase. Why your revenue will increase in your office? Because that will give you quality. Like Big 4, top 100 firms across the globe, across India, they are standardizing their SOP. They are increasing their consistency of work, uniform evaluation, and continuous improvement. आपल्याकडे सर्वात मोठा प्रॉब्लेम काय? 2 वर्ष अगोदर जो व्यक्ती होता तो आता सोडून गेलेला आहे आणि आता आपल्याला ऑडिट करायचंय. तर हाऊ वी विल स्टार्ट? सो ऑल दीज थिंग्स विल टेक केअर बाय AI. You can have your own AI agent. You can have your client GPT, which will help you that how a tax audit can be done. So to implement AI in your office, this is my last slide. This is my own working done. तुम्ही सर्वांनी माझं इंट्रोडक्शन जर बघितलं असेल तर जीएसटीचा मी माणूस आहे. मी तुमच्यासारखाच माणूस आहे. आपल्या छोट्याशा गावामध्ये मी राहतो. परंतु दिस इज अ ट्रान्सफॉर्मेशन फ्रॉम जीएसटी टू जीपीटी. माझा आवडता सब्जेक्ट जीएसटी होता, आता आवडता सब्जेक्ट जीपीटी झालेला आहे. पण मी सर्वांना हेच सांगतो, जीएसटी इन्कम टॅक्स इज आवर मदर सब्जेक्ट.
आपल्याला त्याच्यामध्ये मास्टरी ठेवायचीच आहे. परंतु AI इज आवर डॉटर सब्जेक्ट. जैसे घर के अंदर खाना बनाती है माँ, बट उसको अच्छे तरीके से परोसती है बेटी. घर को सजाती है बेटी, ध्यान रखती है माँ, बट सजाती है बेटी. तो आपका ऑफिस AI सजाएगा. अब इसके वक्त क्या ध्यान में रखना चाहिए आपने? हाउ टू इम्प्लीमेंट AI इन युअर ऑफिस? D3. तुम्ही D3 म्हणजे काय? इनपुट. डेटा कुणाचा वापरताय? स्वतःचा डेटा म्हणजे तुमचे SOP, चेकलिस्ट वगैरे, का क्लायंटचा डेटा, त्याचा टॅलीचा बॅकअप, त्याचे एक्सेल शीट्स, त्याचे PDFs, का वेब डेटा म्हणजे तुम्ही ऑनलाईन डेटा घेत आहात? कारण की हे खूप गरजेचं आहे वेन एव्हर यू स्टार्ट युझिंग AI. देन हू इज प्रोसेसिंग दॅट AI, दॅट डेटा? ChatGPT or Perplexity, Cloud, whether free version or paid version, Microsoft Copilot or any other tool. So you must know which tool you are using. If you are using anything free, then you will not get correct answer. So always have paid versions. Then last and most important, ये हमारे टैक्स प्रोफेशनल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लाइंट्स आपके पास आते हैं एक अच्छी राय लेने के लिए, आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं, इथिकल लोग हैं हम, इसके लिए. तो जो भी आउटपुट निकलेगा AI में से, वो H3 का रूल उसने प्ले करना चाहिए. व्हाट इज H3? H3 is honest. Whatever output come, it must be honest. So we must know income tax, we must know GST, we must know every law, and then only we can analyze whether the output is honest. AI का एक golden rule है. Don't ask AI who is Shakespeare if you don't know Shakespeare. Then second, it should be harmless. किसी को तकलीफ ना हो, क्लाइंट को तकलीफ ना हो, हमारे स्टाफ को तकलीफ ना हो, ऑफिसर्स को तकलीफ ना हो. नहीं तो आपने देखा है बहुत सारे जजमेंट्स रॉन्गली कोट हो गए, एंड देन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज टू टेक बैक द ऑर्डर बाय hallucination, क्योंकि AI भी भूल जाता है जैसे हम लोग भूल जाते हैं वैसे. एंड देन इट शुड बी हेल्पफुल. वट एवर आउटपुट इज कमिंग, AI सब काम नहीं करेगा, बट वो हेल्पफुल होना चाहिए. जो भी काम करेगा वो आपके लिए हेल्पफुल होना चाहिए. और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू मस्ट हैव पेशेंस. AI इज लाइक योर ऑफिस स्टाफ. आप आपके स्टाफ को जैसा ट्रेनिंग देते हो 1 साल 1.5 साल, वैसे AI में आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी. देन इट विल गिव यू आउटपुट. नहीं तो एक बहुत बड़ा भ्रम है, डिलेमा है कि मैंने आज इधर कुछ टाइप किया और उधर जवाब आना चाहिए, और गलत जवाब आया तो हम बोलते हैं अरे ये AI कुछ काम का नहीं. फ्रेंड्स, a prompt or a question which you are asking to a AI tool should be at least 5 sentences. हमने पूरा उसको लिखना चाहिए कि I am a tax practitioner, I want to give an opinion, there is a client, he has a purchase agricultural land, the land is situated here in this locality, please let me know under Indian income tax what will be the tax rate, how I should calculate capital gain. जैसे एक आप आर्टिकल्स को या अपने ऑफिस स्टाफ को सारी चीजें बताते हो, वैसा पूरा लिखना चाहिए प्रॉम्प्ट. Then only you will get correct output. So friend, this was my opening remarks, and I am very much happy that our team is there. Aurangabad Karji is there. He will take you toward the new heights today for these AI sessions, and you all will enjoy the AI journey. And for this, I will request you all to regularly visit what our updates are happening in this AI field, and stay connected. Be happy. Thank you. Thank you, sir, for your special words with knowledgeable PPT and importance of AI with examples, impact of AI on our day-to-day work, and how to implement AI to save time, money and manpower. Thank you very much, sir. Now I request CA Mrs. Sneha Kulkarni madam to introduce faculty CA Parikshit Aurangabadkar sir.
faculty for the session AI in Tax Audit, Mr. C.A. Parikshit Aurangabadkar sir. He is a distinguished fellow chartered accountant with a multidisciplinary qualifications including CS, CWA, DISA and MCOM. With a rich professional experience of exceeding 21 years, he is widely recognized for his expertise in tax advisory, income tax litigations, internal audits and forensic investigations, along with legal consulting. He is the founder of A. Parikshit and Company and ProTax Edge Lab. He is known for his excellence in taxation, audit and consulting services. In addition to professional practice, C.A. Aurangabadkar sir is renowned academician and mentor. With over 23 years of teaching experience, he has served as a visiting faculty at reputed management institutes in Pune and Nasik, imparting knowledge in subjects such as financial management, strategic cost management, In addition to professional practice, C.A. Parikshit Aurangabadkar sir is a renowned academician and mentor with over 23 years of teaching experience. He has served as a visiting faculty at reputed management institutes in Pune and Nasik, imparting knowledge in subjects such as FM, strategic cost management, financial reporting, income tax and GST. He has empowered over 3,000 students and professionals, including CA, CMA and CS aspirants, through his structured training, workshops and seminars. He is also a corporate trainer for finance teams in leading companies in Pune, Nasik and Ranjangaon. His academic contributions include serving as a faculty at Savitribai Phule Pune University for subject of forensic management and acting as an industrial expert on internal evaluation panels for management programs. For his outstanding professional and academic contributions, C.A. Aurangabadkar sir has been honored with several distinctions, including Best Speaker on Income Tax for the year 2023-24 by MTPA. He is a management committee member of MTPA for the year 2024-25. He is a member of Student Academic Committee of WIRC of ICAI for the year 2025-26. He is approved AI faculty for AURA Board of Studies ICAI for the year 2025. His publication record includes numerous articles on income tax and accounting published in reputed journals such as MTPA Tax Journal and authorship of book Revenue Recognition and Tax Insight, which was inaugurated by eminent Dr. Girish Ahuja sir. We have such a distinguished faculty with us. We welcome you all, sir. Thank you, madam, for nice introduction. Now I request VP and moderator Dhaneshwar Naravde sir to felicitate Aurangabadkar sir. Thank you, sir, for presenting and faculty, sir, for accepting it. Now, request C.A. Aurangabadkar, sir, to present his lecture. Sir. Thank you very much.
thank you to the mentor of AI, CA Umesh Sharma sir, a very respectable figure in the eyes of all the upcoming CAs, and out of that, one of the student of Umesh sir is myself. So उनसे 10 मिनट में सर ने मेरी रिवीजन करवा दी है आज के लेक्चर के लिए. तो थैंक यू उमेश सर फॉर रिवाइजिंग ऑल द पार्ट इन वॉट एवर आई एम गोइंग टू टेक, उसकी समरी आपने पहले ही बता दी है. तो आई विल ट्राई टू कीप द status of your student in the today's session by taking all the basics in a very lucid and simplified manner. So before going ahead, I will thank to the MTPA President, Vice President and all the dignitaries on the dais for giving me the opportunity, being the I will say a home ground as a part of family of MTPA. I always have a honor and pleasure to deliver the session on this platform, and today again this opportunity I will take to have the session on a very different subject, that is AI, and how it is to be related with our tax practice is the today's headline title, that is Future of Smart Compliance. So thanking all the dignitaries, I will start the session. Thank you. So let us start with this journey of AI. I will not say it is a topic, it is a journey, because it is daily upgrading and we have to be in that flow as a professional. And as I told you, our mentor CA Sharma sir already have given a gist, which I am going to just elaborate in a simplified way to understand and to remove some misconception about the AI. So in that we will be covering simplifying the concept of AI, then simplifying the concept of AI, pros and cons of AI for tax professionals, and the third one is AI in tax audit. भी सिंप्लीफाई करना है मतलब क्या है, तो बेसिकली एवरीवन इज हैविंग right now a phobia or a fashion or a fad that everything is revolving around AI is absolutely right, but AI is there, but how to use that AI and whether you know
about the plus and minuses, the advantages, the disadvantages, because it is AI is like a double-edged sword. सर ने जो बताया है उसमें आपको ये डिटेल में सीखना ज़रूरी है कि कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट, कोई भी आप टूल जब सीख रहे हो और अप्लाई कर रहे हो तो उसके दोनों aspect, that is plus and minus, should be clear in your mind, because once you use it there are misfiring also in this case, there are misleading effects in this case, and which can turn around to huge liability also in monetary terms. तो उसके लिए मैं आज आपको AI का इंट्रोडक्शन एक सिंप्लीफाइड पार्ट में देना चाहता हूँ। सिर्फ उसी के साथ आप उसके प्रोज एंड कॉन्स समझ के उसको अप्लाई करिए। AI ऐसा टूल है कि जो किसी भी प्रोफेशन के साथ आप यूज कर सकते हो। तो उसी तरह हमारे प्रोफेशन में टैक्स प्रोफेशनल्स हो, ऑडिटर्स हो, you have to understand the AI first and then apply. Just because there is something shouting or louder around us in the crowd कि सब AI यूज कर रहे हैं, मतलब उसका क्रेज नहीं करना है, साइंटिफिकली जाना है। We are professionals, we cannot go haywire, we have to go step by step, we have to understand the pros and cons and then only go ahead. We have to understand AI, क्योंकि ये दो चीज़ें बिना समझे आप कोई भी टूल यूज नहीं कर पाओगे। शर्मा सर already had introduced this in first 2 slides in a very simple way. उसके it is a deep thought, ऊपर के ऊपर उन्होंने बताया, लेकिन उसमें deep thought है, वो हम डिस्कस करेंगे कि AI समझ के उसको अप्लाई करना है। जैसे कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट, कोई भी नया मोबाइल आप लेते हो तो मोबाइल गैजेट है, गैजेट को यूज करना है आपको, लेकिन उसकी यूटिलिटी, उसके टूल्स अंदर के आपको मालूम नहीं है, उसका मिसयूज क्या हो सकता है अगर मालूम नहीं होगा तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है। सो दैट इज द रीजन आई चूज दिस 2 parts to be understood in detail by all of us as a professionals. जस्ट देयर इज रूमर्स, वो सुन के अप्लाई करना नहीं है, ठीक है। तो AI की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो AI अपने डेली लाइफ में इट इज देयर फॉर मोर देन अ डिकेड। हम AI से फैमिलियर है, लेकिन पहले इसको AI नाम से फेमस नहीं किया गया था। एवरीवन इज कनेक्टेड विथ AI। तो कौन से है उसके एक सैंपल एग्जांपल्स में दिखाता हूँ। आपके घर में वॉशिंग मशीन है, टीवी है, VCR है, VCR अभी तो नहीं है, पहले था, या ऐसे कोई भी गैजेट्स है, या आपके कार में म्यूजिक सिस्टम है, सभी गैजेट्स जो है वो रोबोट पे ही चल रहे हैं। पहले भी हम AI से वी वेर एक्वेंटेड विद इट, बट इट वॉज नॉट गिवन बिकॉज इट वॉज नॉट रीचिंग टू आवर ऑफिस। सर ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि नाउ द AI हैज एंटर्ड आवर ऑफिस। AC इकडे करा ना, मला वारच येत वारं येतच नाही मला, 10 मिनिटं इकडे करा माझ्याकडे, हां डायरेक्शन। So it is very rightly said that it was in our general life we are using the AI, but now it has entered our office and now that is a need of our कि हम सब equip होने चाहिए AI का यूज करने के लिए। It should not be like blindly you are using the AI। तो जैसे स्मार्टफोन है, स्मार्ट टीवी है, स्मार्ट स्पीकर है, ये तो अभी की डेवलपमेंट है, लेकिन कुछ साल पहले आपने जैसे एक म्यूजिक सिस्टम आता है, उसमें अलेक्सा नाम का एक AI एक असिस्टेंट आता है जिसको आप कोई गाने का रिक्वेस्ट बोलते हो, जैसे आपके गूगल में भी गूगल असिस्टेंट है। तो ये सारे चीज़ें पहले से यूज़ कर रहे हैं, बट वी वेर नॉट दैट मच अवेयर दैट दिस इज AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड देन द इम्पैक्ट ऑफ इट। वॉशिंग मशीन, यू आर प्रोग्रामिंग इन दैट वॉशिंग मशीन। सर ने कुछ पहले स्लाइड में लिखा था, मशीन लैंग्वेज वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन अ सिंपलर वे।
तो ये सारे चीज़ कहाँ से आए हैं, ये पहले भी हम यूज़ कर रहे थे, लेकिन जहाँ तक पहले अपना यूज़ था ये हाउस होल्ड इक्विपमेंट तक लिमिटेड था, अभी वो ऑफिस में एंटर हो गया है। सिमिलर इक्विपमेंट्स आर योर फ्रिज, AC, वाटर प्यूरिफायर, स्मार्ट होम सिक्योरिटी कैमरा, CCTVs ये भी आपका AI है, माइक्रोवेव ओवन्स ये भी AI है। जहाँ जहाँ पे आप डिजिटली प्रोग्रामिंग करते हो वो AI जैसे ही काम कर रहा है, इट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वहाँ पे कोई ह्यूमन बींग काम नहीं कर रहा है, इट मे बी लाइक ओवन हो या इट मे बी एनी AC हो, ये सारे चीज़ें आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसमें इट इज़ लाइक अ मशीन लैंग्वेज पे काम किया जा रहा था, जो अभी आपको ऑफिस में यूज़ करना है। तो सिंप्लीफाई करेंगे कंसेप्ट ऑफ AI। पहले 2 स्लाइड्स मैंने जस्ट रेफरेंस के लिए दिए, यू कैन गो थ्रू इट लेटर ऑन, जस्ट टू गेट कनेक्ट की हम AI से बहुत पहले से फैमिलियर है। नाउ वी हैव टू लर्न द AI साइंटिफिकली, सिस्टमैटिकली। अर्लियर इट वॉज नॉट दैट। वॉशिंग मशीन चलाना इसके लिए कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, एक मैनुअल आता था, वो मैनुअल से आप वॉशिंग मशीन ऑपरेट कर सकते थे, ऑटोमेटिक हो सेमी ऑटोमेटिक कोई भी हो। Similarly, it may be your VCD player or it may be any CCTV cameras, anything which have a short manual, तो वो मैनुअल से आप उसका यूज़ करते हो। सिमिलरली आपका मोबाइल फ़ोन होगा तो उसके लिए भी मैनुअल आते हैं, उसका भी मैनुअल से आप पता चलता है कैसा यूज़ करना है और उतना काम निकल जाता है। वहाँ पे आप कमर्शियली उसको अप्लाई नहीं कर रहे थे। Now we are going to learn it how to apply for our commercial purpose. And as sir said that AI ये एक सेपरेट इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है जो किसी भी स्ट्रीम के साथ कनेक्ट होके उसका एप्लीकेशन कर सकता है। So it may be science, it may be commerce, it may be arts. In all faculties, in all the streams, you can connect the AI because AI is a tool which is equipping you to make the things simplify, make the thing easier and increase the efficiency in that respective field. तो उसके लिए AI combination with your commerce, that is AI, now it is a tax professionals, we are tax professionals, so we are going to use that as a tool in our office practice to increase the efficiency. एक बहुत बड़ा मैथ है, AI आ गया मतलब अभी मैन पावर कट होने वाला है। सॉरी, दिस इज अ मिथ, ये गलत है। 15-20 साल पहले जब सब जगह कंप्यूटराइजेशन हो रहा था बैंक में LIC ऑफिस में एवरीवेयर, तब क्या कहा जा रहा था, बहुत लोगों के जॉब गए, बट नेवर no one is able to understand and never understand in this manner that the machines are going to take the place of a human brain. एक बेसिक चीज ध्यान में रखिए, मशीन ये ह्यूमन बीइंग ने बनाया है, मशीन ने ह्यूमन बीइंग को नहीं बनाया है। सो वी नीड नॉट हैव टू कीप दैट थ्रेट इन आवर माइंड दैट AI हो या कोई भी मशीन हो, उसकी वजह से आपके काम, आपके जॉब जाएंगे, नथिंग लाइक दैट, बिकॉज द वर्क ऑफ योर ब्रेन इज कैन नॉट बी सब्सटीट्यूटेड और कैन नॉट बी डेलीगेटेड टू अ मशीन। मशीन को आप कैलकुलेशन करने को कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्सेल में आपने कहा कि रेशो एनालिसिस, रेशो कैलकुलेट करो, तो वो कैलकुलेट करेगा। रेशो का एनालिसिस करके बताओ भाई ये क्लाइंट हमारा, क्लाइंट के बिजनेस में बैंकरप्ट होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, वो नहीं बता पाएगा, वो बता नहीं पाएगा। हालांकि AI के टूल्स है जिसमें एनालिसिस और डीप में मिलता है, मैं कह रहा हूँ एनालिसिस मिलता है। दूसरी चीज AI भी कहीं से कॉपी करके आपको डेटा देता है, कहीं से उठाया हुआ वो क्रिएट करता है और जनरेट करके आपको उसका रिजल्ट देता है, वो पढ़ नहीं पाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई केस लॉ का डिसीजन है, वो डिसीजन जो है AI कैन हेल्प यू टू शॉर्टन और हाईलाइट द मेन पॉइंट्स इन द डिसीजन, बट AI विल नॉट बी एबल टू रीड दैट and correlate it with your sections in the
law and give you some opinion. अब ओपिनियन लो, उससे गलती मिलने वाला है, क्योंकि वहां पे ह्यूमन ब्रेन ही, क्योंकि जजमेंटल स्किल्स जो है वो ह्यूमन ब्रेन के पास है. जजमेंटल स्किल्स आर नॉट ऑन बेसिस ऑफ एआई. एआई नहीं जजमेंट दे सकता है. एआई कैलकुलेट कर सकता है, आपसे स्पीड में वो कैलकुलेट करेगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में यू विल गेट द आंसर. 25 पेज का प्रोजेक्ट रिपोर्ट 5 मिनट में वो आपको जनरेट करके देगा. लेकिन प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बैंकर से प्रेजेंट करना है तो वो नहीं प्रेजेंट कर पाएगा, आपको ही बात करना है. यू हैव टू कन्विंस द बैंकर अबाउट द प्रोजेक्ट फाइनेंस. द एआई कैन नॉट डू द प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंस. एआई आपको बना के देगा, एआई प्रेजेंट नहीं कर पाएगा. तो बैंकर से बात किसको करना है? आपको करना है. वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट पढ़ने के बाद वो सही है गलत है, आपके बिजनेस मॉडल में सही तरीके से लगाया हुआ है क्या नहीं, ये एआई ने बनाया हुआ है, तो आपको वो देख के फिर बैंकर से बात करनी है. ये एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं. सो एआई इज अ एबिलिटी ऑफ मशीन टू मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंस. द वर्ड यूज इज मिमिक. मिमिक का मतलब मिमिक्री है. मिमिक कर रहा है मतलब कॉपी कर रहा है. क्या कॉपी कर रहा है? ह्यूमन इंटेलिजेंस कॉपी कर रहा है. अभी ह्यूमन इंटेलिजेंस कॉपी कर रहा है ना, ओरिजिनल तो नहीं है ना भाई. ओरिजिनल एआई भी किसी ह्यूमन ने ही बनाया हुआ है. तो आपको ये समझना है, ये जानना है कि मशीन को जो आपने सिखाया हुआ है वही वो आपको वापस देने वाला है. इट विल बी रिप्लिकेटिंग द सेम थिंग बिकॉज इट इज मिमिकिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस. क्या इंटेलिजेंस है ह्यूमन बीइंग के पास? Analyzing the data, identifying the patterns, making prediction and automating decision. Analyzing the data, पहले हम एक्सेल में मैन्युअली काम करते थे, अभी वही काम ऑटोमेटेड हो रहा है. पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना है, पैटर्न्स मतलब ट्रेंड एनालिसिस करना है, वो ट्रेंड का पैटर्न समझ के ये सारी चीज़ें एआई आपको करके देगा. लेकिन जहाँ पे आपको डिसीजन लेना है, ऑटोमेटिक डिसीजन. ऑटोमेटिक डिसीजन मतलब क्या है? वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक है, मतलब वो क्या करता है, 45 मिनट्स का टाइमर लगाने के बाद ऑटोमेटिक 45 मिनट्स के बाद बंद हो जाता है. ये ऑटोमेटेड कॉपी हो सकता है, लेकिन बीच में कुछ उसमें आपको रुकाना है तो यू हैव टू टेक द डिसीजन एंड स्टॉप द मशीन. योर screen also has a timer. You can set it and it is going to close down automatically. तो it doesn't means it is a judgmental skills उसके पास है. ठीक है. तो layman के language में think of AI as a junior assistant who never sleeps. It can read thousands of pages about tax return, notices, judgments in seconds. मैंने क्या कहा? वो पढ़ सकता है, उससे निकाल के क्या देना है वो आप जो बोलेंगे उतना ही देगा. तो इसमें वो खुद का कॉमन सेंस नहीं लगाएगा. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एआई एंड ह्यूमन बीइंग. तो उसको अगर आपको असिस्टेंट की तरह यूज करना है तो क्या क्या हमें करना जरूरी है ये आज हम इसमें देखेंगे. दिस was already in the slide shown by शर्मा साहब. बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये जो लैंग्वेज पार्ट है ना, इसमें कंफ्यूजन बहुत है. इसमें कंफ्यूजन की बात एकदम सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो इसमें 2-3 टाइप के लैंग्वेजेस को नॉमेनक्लेट किया है. मतलब कुछ अलग है? नहीं, बिल्कुल नहीं. मशीन लैंग्वेज, आज तक जो मशीन आप देखते आए हो, जैसे इंडस्ट्री होगी तो सीएनसी मशीन है, यू आर राइटिंग अ प्रोग्राम, इट इज डूइंग ऑटोमेटेड जॉब्स. और वॉशिंग मशीन है, टीवी है, या आपका सिस्टम है, ये ऑटोमेटिक जॉब करते हैं. मशीन लैंग्वेज में थोड़ा एडवांस हो गया डीप लर्निंग. तो डीप लर्निंग क्या है? इसमें थोड़ा रिसर्च वर्क का काम आएगा. तो रिसर्च वर्क अगर होगा तो डीप लर्निंग लैंग्वेज कहा जाता है. एआई और जीएआई मतलब एआई इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीएआई इज जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसके बाद है इंपॉर्टेंट एनएलपी.
नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसमें मशीन लैंग्वेज में हमें डिटेल में जाना नहीं है, वी आर नीड नॉट हैव टू, बिकॉज हमें मशीन्स को कुछ सिखाना नहीं है अभी। और मशीन लैंग्वेज एक अलग है, उसको जैसे कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है 0-1, तो 0-1 में वो सब डिकोडिंग करता है उसमें हमें नहीं जाना है, बट वी शुड नो कि ये एक लैंग्वेज है। तो ये लैंग्वेज मतलब कुछ अलग है, समथिंग कि जैसे ये लैंग्वेज कोई आदिवासी ट्रिब्यून में बात की जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ अ लैंग्वेज विच वी आर डीलिंग इट इन मल्टीपल इक्विपमेंट्स, लेकिन हमें उसको पढ़ के अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए बाजू रख दी है। डीप लर्निंग ये आपको जनरेटिव में कैसे यूज करनी है आगे जाके देखना है। एआई और जनरेटिव एआई जो है डायरेक्शन सेट नाही होते, वर नाही करता येते, इकडे येतच नाही आहे, नाही ते खाली सेट झालं, इकडे करता येत नाही। हाँ सॉरी, अच्छा असं आहे का? ओके, सो ये भी एआई है। एआई को अपने को सिखाना पड़ता है एसी, इसको सिखाना पड़ रहा था कि हवा मेरी तरफ दे, तो वो भूल गया था, बीच में सो गया वो। एनीवे, सो जो पार्ट गोइंग अहेड, तो एआई और जीएआई ये अगले स्लाइड में थोड़ा डिटेल डिस्कस करता हूँ। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सर ने जो अभी रेफर किया था, एनएलपी। एनएलपी का मतलब है जिस लैंग्वेज में हम बात करते हैं उसी में अपने को जवाब चाहिए, यस और नो, यस। नहीं तो हम फ्रेंच में बात कर रहे हैं, सामने वाला इंग्लिश में कर रहा है, कुछ नहीं समझेगा। आप इंग्लिश में कर रहे हो, सामने वाला मराठी में कर रहा है, नहीं समझेगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू टीच दिस, यू हैव टू लर्न एंड टीच दिस लैंग्वेज। कैसे, वो आगे देखेंगे इसमें, ठीक है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वैसे जीएआई मतलब जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जनरेटिव जो है ना, ये बहुत मज़ेदार है, ये मज़ेदार आपको रिजल्ट भी देता है। जब तक एआई था ना, वो मज़ेदार रिजल्ट नहीं देता था। जैसे मैं वॉशिंग मशीन का एग्जाम्पल अगर ले रहा हूँ ना, तो वॉशिंग मशीन में उसको ज़रूरी नहीं है आपने कितना सर्फ एक्सेल डाला है, वो बोलता है कपड़े डाला, पानी डाला, मैं काम शुरू करता हूँ। वो रुकेगा नहीं काम वाली बाई की तरफ। द मेड विल वेट फॉर दैट कि भाई सर्फ एक्सेल दीजिए, मैं धोती हूँ। लेकिन मशीन क्या करता है, मशीन में पानी आ गया, उसकी लेवल हो गई, आपने प्रोग्राम सेट कर दिया, उसने काम कर दिया। ये जनरेटिव एआई वाला मशीन होता ना, देन इट वुड हैव बिहेव इन अ सर्टेन डिफरेंट वे। तो वो आपको, हम जनरेटिव एआई में है, इसलिए जनरेटिव एआई में एनएलपी की जरूरत है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी टुडे। तो ये एक तरह से आपका एक असिस्टेंट है जो ऑफिस में काम करता है। देखेंगे हम कैसे इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं। जब बॉस आता है तो वो इंस्ट्रक्शन शुरू करता है, भैया प्रिपेयर अ फाइनेंशियल्स ऑफ मिस्टर एक्स, ये अपना क्लाइंट है, उसका बैलेंस शीट बनाओ। क्या क्या बनाना है उसमें, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, रेशो, ये ऑटोमेटिक फॉर्मूला लगाओ और एक्सेल में बना दो। उसके बाद कंपैरेटिव भी डाल दो, लास्ट ईयर का मुझे कंपैरिजन चाहिए तो वो भी डाल दो। फिर इंस्ट्रक्शन आते हैं बॉस से कि भाई ये उसका फॉन्ट साइज कैलिब्री होना चाहिए, उसका साइज 11 फॉन्ट टाइप होना चाहिए कैलिब्री। उसके बाद डू एनालिसिस ऑफ रेशो और उसको सेव कर दो भाई टैक्स ऑडिट के फोल्डर में। ये मिस्टर असिस्टेंट जो है ना, ये थक जाता है इतने सारे इंस्ट्रक्शन एक केस के सुन के। ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड विजुअलाइज द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, जो सर ने काफ़ी ह्यूमरस तरीके से बताया था, शर्मा सर ने, कि आपल्याकडे एक असिस्टंट जॉईन होतो आणि मग तो 8-10 दिवसातच पळून जातो किंवा 1 वर्षात पळून जातो, 6 महिन्यात पळून जातो आणि त्याला काही हे झेपत नसतं। सो ये रिपीटेटिव जो प्रॉब्लम है अपना असिस्टेंट का, तो असिस्टेंट को निकाल देना है कि ऑफिस से, नहीं, बिल्कुल नहीं है। असिस्टेंट की एफिशिएंसी से ज़्यादा आपकी एफिशिएंसी इम्पॉर्टेंट है। ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड इंक्रीज योर एफिशिएंसी। जैसे आप ये मिस्टर असिस्टेंट को ट्रेन करते हो, आपने 6 इंस्ट्रक्शन दिए और उसको ट्रेन किया, ये इंस्ट्रक्शन आपको एआई को देना है।
ये AI वाला जो टूल है ना, इसको आपको असिस्टेंट मान के चलना है. Is going to serve you as an assistant and you have to just give the instruction. Remember this 6 instructions आपने दिए, उसके बावजूद ये आपका जो जूनियर है ना, ये मैस करके रखेगा. A की बैलेंस शीट आधी, B का P&L आधा, C का कैश फ्लो आधा, ऐसा करके सब गड़बड़ कर देगा. And then you get tempted, frustrated, and your dates are arriving, due dates are arriving, and then in the rush there are multiple errors. तो यहाँ पे आपको एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है, तो इंस्ट्रक्शंस देने की हमारी पहले से आदत है. एज अ एम्प्लॉयर्स एवरीवन इन द ऑफिस गिव्स द इंस्ट्रक्शन, बट ओनली थिंग इज इंस्ट्रक्शन आप ह्यूमन बीइंग को देते थे जो आपके पास जॉब कर रहा है, जो आपको पहचानता है. भाई कोई किसी रास्ते से चलते आदमी को मैं बुलाऊं और उसको बोलूं मेरे को ये काम करके दे, वो नहीं करेगा. वैसे आपको पहले जो भी AI है उसको पहले आप आपके ऑफिस का असिस्टेंट बनाओ, उसको आप बार बार इंस्ट्रक्शन दो. देन दैट AI, दैट असिस्टेंट विल स्टार्ट लर्निंग व्हाट यू वांट. इस तरीके से ही जैसे आप इंस्ट्रक्शन असिस्टेंट को देते थे, वैसे ही डिटेल में इंस्ट्रक्शंस देना है आपको AI को. एंड ट्रस्ट मी, all my friends who have been joined online, if you are a good instructor, AI आपके लिए the best tool है. आप इतने एफिशिएंट हो जाओगे क्योंकि आपको इंस्ट्रक्शन देना आता है. इंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है, बाकी इंस्ट्रक्शन जो आप देते हो वही फॉलो करने हैं, बस डिटेल में आपको देना है. वो जो इंस्ट्रक्शन आप देते हैं वो AI बिना थके, बिना रुके, बिना चाय पिए, बिना नाश्ता किए कंटिन्यू वो काम करेगा और आपको रिजल्ट देगा. ओनली एंड ओनली रिक्वायरमेंट ऑफ AI इज प्लीज गिव द इंस्ट्रक्शन. वो एक सीरियल आती है ना फैंटेसी वाली, अलादीन वाली, वो अलादीन कैसे बोलता है, हुकुम मेरे आका. तो वो आका जो है ना वो आप है. वो अलादीन कभी थकता नहीं है. वो चिराग में से जो आता है ना बाहर, दैट स्पिरिट, वो कभी थकता नहीं है. वो आप बोलोगे उतना देर काम करते रहेगा. बस ऐसा समझो ये AI जो है ना, ये जूनियर, ये आपके लिए चिराग जैसा, चिराग में से जो आएगा बंदा उसके जैसा काम करेगा. So you have to keep in mind that you have to give correct instruction. बहुत बार इंस्ट्रक्शन देने का तरीका हमारा इतना शॉर्ट हैंड होता है कि आप कुछ आधी चीज बोलते हो और आपका ऑफिस का जूनियर पूरी समझ लेता है. दिस कम्युनिकेशन स्टाइल वी फॉलो इन आवर ऑफिसेस, बट दैट कैन नॉट बी अप्लाइड इन द AI. ये मिस्टर AI जो है ना, इसको थोड़ा डिटेल इंस्ट्रक्शन आप दोगे ना. इंस्ट्रक्शन कैसे देने हैं वो तो मैंने अभी दिखाया है. जैसे आपने असिस्टेंट को दिए थे वैसे इंस्ट्रक्शन आपको AI को देने हैं. वो बिना थके, चाय नहीं मांगे, कुछ नहीं, 24 घंटे आपके लिए खड़ा, हुकुम मेरे आका, क्या करना है आगे जाके. बट द प्रॉब्लम इज एवरीवन इज नॉट फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. क्वेश्चन क्या पूछना है उसके ऊपर आंसर है. आप गार्बेज दोगे, गार्बेज निकलेगा. दैट इज द गीगो मेथड ऑफ अ कंप्यूटर एज वेल एज AI ऑल्सो. ये लेटेस्ट मैंने कल निकाला हुआ स्क्रीनशॉट है. एक वेबसाइट है टैफ्ट, देयर्स एन AI फॉर दैट. ये जो वेबसाइट है ये बताती है कि अपडेटेड टूल्स कितने हैं मार्केट में, दैट इज ऑन द वेब. द टूल्स आर करंटली 41,296, जो लास्ट मंथ में 38,000 थे. दीज टूल्स आर ग्लोबली अवेलेबल. और ये कितना काम कर सकते हैं, अलग अलग टाइप का 12,000, 12,882 टाइप के काम कर सकते हैं. उसमें 5,000 जॉब्स है इस टूल्स के लिए. तो ये मैंने क्यों दिखाया, बिकॉज मेनी टाइम एवरीवन गेट रिजिड विद पर्टिकुलर लेआउट कि इतने 5 टूल है भाई, 5 टूल यूज कर दिए खत्म हो गया. मैं कहूँगा ठीक है 40,000 है, 40 तो यूज नहीं कर सकते. एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, ये टूल जाने दो, आपके केबल पे कम से कम 250 चैनल आते हैं.
250 में से कितने चैनल देखे जाते हैं? सिर्फ 4 या 5, और वो 250 टाइम देखे जाते हैं. 5 channels are seen repeatedly for 250 times instead of seeing one channel and 250 total 250 channels. तो वही लॉजिक है. 250 अपने को 40,000 टूल्स यूज नहीं करने, लेकिन उसमें से बहुत सारे टूल डुप्लीकेशन का काम करते हैं, क्योंकि टूल्स है अल्टीमेटली देयर इज डुप्लीकेशन इन डिलीवरिंग दैट पर्टिकुलर आउटपुट इज नथिंग बट दैट AI टूल. सो आप वो टूल के नंबर के पीछे या नंबर ऑफ टूल्स के पीछे मत भागिए. 4 टूल्स भी अपने ऑफिस में इनवाइट कर लिए भाई, वो आपके 4 असिस्टेंट हो गए, 4 लैपटॉप पे चला के रखिए, आपको रिजल्ट 40 लोगों का वो देगा. इफ यू वुड बी एबल टू इंस्ट्रक्ट दैट 4 टूल्स वेरी स्मार्टली. प्रॉब्लम क्या है? ये जो मैंने पहले इंस्ट्रक्शन दिखाया ना, ये इंस्ट्रक्शन मैंने लिखे, जैसे हम ऑफिस में नहीं देते. हम ऑफिस में बोलते हैं भाई मिस्टर एक्स का बैलेंस शीट बना, मिस्टर वाई का टैक्स ऑडिट रिपोर्ट बना. वो असिस्टेंट को दिन में तारे दिखने लग जाते हैं, क्योंकि वो नया है, वो सीख रहा है, एंड ही गेट कंफ्यूज विद ऑल दिस. ये तो मैंने उसको इलैबोरेट करके दिखाया है, अभी ये है सामने आपकी स्लाइड में. तो इस तरह के इंस्ट्रक्शन आपको AI को विद पेशेंस देने हैं. What Sharma sir said in last that you should need to have patience if you want to get the result. आप शांति से पेशेंस रखिए और उसको इंस्ट्रक्शन देते रहिए, तभी ये कोई भी टूल्स आपके लिए 4 टूल्स 10 लोगों के बराबर काम करेगा, 40 लोगों के बराबर काम कर सकता है. इफ यू कैन यूज इट इन अ वेरी स्मार्ट वे, यू कैन इंस्ट्रक्ट इट इन अ वेरी स्मार्ट वे. सो सबसे इंपॉर्टेंट है इंस्ट्रक्शन. AI में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इंस्ट्रक्शन. ये इंस्ट्रक्शन को क्या कहा गया है? इसको कहा गया है प्रॉम्प्ट. उसके पहले ये एक और पार्ट में इधर बता दूं, दैट इज ऑटोमेशन. जो हम करते हैं अपने टैक्स प्रैक्टिस में, रिपीटेटिव टैक्स टास्क जो रहते हैं, रिकंसिलिएशन, डेटा एंट्री, दैट कैन बी कन्वर्टेड यूजिंग AI. मशीन लर्निंग का प्रेडिक्शन, ये थोड़ा कम हम यूज करते हैं. मशीन लर्निंग जैसे सर ने कहा, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज एंड रीइंफोर्समेंट, ये थोड़ा अलग से सीख के अप्लाई करना जरूरी है. And then is NLP. NLP is what you and me can do immediately and understand and apply. But again, as I told you, when you are applying the NLP, वहाँ पे गलत क्या होता है? इंस्ट्रक्शन आधे अधूरे दिए जाते हैं और सामने वो AI कंफ्यूज हो जाता है. उसके भी काफ़ी मेरे पास एग्जाम्पल्स है, वो मैं बताऊंगा. जनरेटिव AI क्या करता है, जो आप बहुत सारे लोग यूज़ करते होंगे, दैट इज प्रिपेयरिंग रिप्लाई, प्रिपेयरिंग समरी, ट्रेनिंग मटेरियल, ये सारी चीज़ों के लिए जनरेटिव AI का यूज़ होता है. हम थोड़ा आगे डिटेल में समझ लेंगे कि ये जनरेटिव AI करता क्या है, उससे डरने का कितना है. जनरेटिव AI जितना दिखता अच्छा है ना, वो थोड़ा उससे घबराना भी पड़ता है. कैसे, वो देखेंगे. तो जनरेटिव AI में आपको पहले ये समझना है कि AI, अभी देखो एक एग्जाम्पल देता हूँ बिफोर, दैट विल मेक यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट ऑफ जनरेटिव AI वेरी सिंपली. आपके ऑफिस में सपोज 4 असिस्टेंट काम कर रहे हैं. 3 जो रहते हैं, लेट से एग्जांपल दे रहा हूँ, 3 है विच आर लाइक डम टर्मिनल्स. आप जितना बोलोगे उतना ही करेंगे. आपने बताया सपोज बैंक की जर्नल एंट्री करके आओ टैक्स अपने टैली में, वो उतना ही बैंक स्टेटमेंट उसमें डाल के आएगा. किसी को कहा कि एक्सेल में ये करो, वो उतना एक्सेल में करेगा. ठीक है. वो एक जो रहता है ना, वो इतना स्मार्ट रहता है कि उसको जो आ नहीं रहा है उसके लिए अपने इंडियन लैंग्वेज में एक टेक्नोलॉजी है जिसको कहते हैं जुगाड़. वो अप्लाई करके आपको रिजल्ट देगा, और बैलेंस शीट उसकी टैली नहीं हो रही होगी तो भी टैली करके आपके पास रख देगा. ये जो है ना स्मार्ट बंदा, ये थोड़ा डेंजरस है. वो डेंजरस क्यों है? अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसमें से रिजल्ट गलत भी आ सकते हैं, बिकॉज इफ ही टैलीज द बैलेंस शीट इन अ इनकरेक्ट वे एंड इट गेट्स अ प्रॉब्लम इन फ्यूचर, देन यू आर गोइंग टू बी इन प्रॉब्लम, यू आर गोइंग टू फेस द असेसमेंट. तो ये जनरेटिव AI ना, तो जनरेटिव AI मतलब वो एक स्मार्ट जूनियर जो आपके 4 में से, और AI मतलब वो 3 जूनियर्स जो आपके लिए आपने जितना बताया उतना काम करके आएंगे. जनरेटिव वाला क्या करेगा, मैं थोड़ा स्मार्ट हूँ भाई, मैं आपको रिजल्ट ला के दूंगा.
जितना भी उसने पूरे वेब में से सीखा हुआ है ना, वो सारा नॉलेज उसमें लगा देगा। आपने उसको कहा ना कि मुझे सपोज डेप्रिसिएशन डिसअलाउंस की एक केस लॉ ढूंढ के दे, और जिसमें एसेट यूज की है सिस्टर कंसर्न ने, और उसका डेप्रिसिएशन ले रही मेरी कंपनी, फिर भी मुझे चाहिए। टेक्निकली वो नहीं मिल सकता है, सपोज वो मिलेगा सिस्टर कंसर्न को, आपको नहीं मिलेगा, फिर भी आपको केस लॉ चाहिए। तो जनरेटिव एआई क्या करेगा, वो स्मार्ट बच्चे की तरह कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करता है, जुगाड़ टेक्नोलॉजी। वो पूरे वेब में से जितना कनेक्टेड मटेरियल मिलेगा उससे आपको एक अच्छी सी केस लॉ प्रिपेयर करके देगा, जो कभी थी ही नहीं, जिसको कहते हैं हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन मीन्स वॉट एवर इज नॉट देयर इज क्रिएटेड इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू फील इट इज ट्रू। तो ये डिफरेंस है एआई और जनरेटिव एआई में। यहाँ पे कुछ ग्लॉसरी मैंने डाली है, दैट इज बेसिक टर्म्स विच वन मस्ट नो इन वन लाइन। वी नीड टू हैव अ रश ओवर दिस टर्म्स। First is AI. Technology that enables computer to perform tasks that normally require human intelligence like reading, analyzing, decision making. ये काम जो करता है उसको AI कहते हैं। Machine language, a branch of AI, where system learn from past data. तो past ये थोड़ा यूज करने के लिए नॉलेज डिटेल में होना जरूरी है, इसलिए मशीन लर्निंग से आगे हम जाते हैं एनएलपी की तरफ। एनएलपी क्या कहता है, नेचुरल लैंग्वेज में एआई's एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जिस भाषा में बात करते हो, सपोज आपका असिस्टेंट कोई नॉर्थ वाला बंदा है, तो आप हिंदी में बात करोगे तो उसको जल्दी समझेगा। तो वो एआई जो है ना, वो एआई पूरा इंडिया का कॉम्बिनेशन है, पूरा वर्ल्ड का है। आप इंग्लिश में बात करो इंग्लिश में समझेगा, आप हिंदी में बात करो हिंदी में समझेगा, मराठी में करो मराठी में समझेगा, एंड सो ऑन। इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड मेनी वेबसाइट्स और मेनी टूल्स विच यू आर यूजिंग, लाइक म्यूजिक वाले टूल्स रहते हैं ना, म्यूजिक के गाना.com एंड ऑल दैट, वहाँ पे वो पूछता है देखो इतने लैंग्वेजेस कौन सा चाहिए आपको। आपने कभी सोचा है इतने लैंग्वेज का वो बात क्यों करता है भाई, क्यों लैंग्वेज ये चाहिए? क्योंकि वो मशीन एआई है। गाना.com ये पीछे तरफ एआई से चलता है ना, उसको इंग्लिश, मराठी, हिंदी, भोजपुरी या कोई भी लैंग्वेज जो आप उसको दे रहे हो, वो लैंग्वेज में वो समझेगा तो आपको रिजल्ट देगा। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं भाई, यूट्यूब तो सारे लोग यूज करते हैं, जिसमें आगे एक पॉइंट लिखा है मैंने, एल्गोरिदम। ये एल्गोरिदम के साथ एनएलपी वहाँ पे भी आप यूज करते हो। बहुत सारे लोग तो वर्बल इंस्ट्रक्शन देते हैं यूट्यूब को भी, ये गाना लगाओ, वो गाना लगाओ, ये स्पीच लगाओ। ये क्या कर रहे हैं आप? दिस इज व्हाट यू आर यूजिंग एनएलपी इन एवरी इंस्ट्रूमेंट, इन एवरी ऐप, एंड दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई। लेकिन ये सारा कमर्शियल यूज नहीं है, इसलिए चलेगा। कमर्शियल यूज में बहुत सारी चीजों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। बंद पडलाय, ऑन कर। सो जनरेटिव एनएलपी का मतलब एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज यूजफुल फॉर एनालाइजिंग जजमेंट, नोटिस एंड लीगल डॉक्यूमेंट। आई विल से यूजफुल फॉर एनालाइजिंग एनी डॉक्यूमेंट। फिर जनरेटिव एआई, AI that creates new content based on the data it has learned, जिसको मैंने आपको इंडियन टेक्नोलॉजी में जुगाड़ वर्ड यूज किया था। जनरेटिव एआई मतलब जुगाड़ी काम हो सकता है, तो आपको पढ़ के लेना है, अप्लाई करना है। ऑटोमेशन, यूज ऑफ एआई टू परफॉर्म रिपीटेटिव टास्क ऑटोमेटिकली, जैसे आपको इनवॉइस रिकंसिलेशन करना है या जो भी ऑडिट में टास्क परफॉर्म करना है। अल्गोरिदम इज स्टेप बाय स्टेप रूल्स इंस्ट्रक्शन used by AI to process the data and give the result। उसके बाद डेटा प्राइवेसी के लिए जो नया लॉ आया है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, ये एक्ट का नॉलेज थोड़ा होना ज़रूरी है। समझाऊंगा मैं आगे जाके हमें क्लाइंट का डेटा कैसे सिक्योर रखना है। Hallucination is what I just now I told you, a situation where AI produces incorrect and fabricated result
विच इज़ नॉट इन एग्जिस्टेंस, जो आपका बेंगलोर का केस काफ़ी फेमस हो गया है, वो आपको एक एग्जाम्पल है हेलुसिनेशन का। और जैसे मैंने अभी बताया कि अगर तो दैट इज हेलुसिनेशन। एंड देन प्रेडिक्टिव एनालिसिस, दैट इज टेक्निक दैट फोरकास्ट आउटकम यूजिंग पास्ट डेटा। ये भी एआई के पास है। जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना, ये मैंने आपको अभी बताया था। देखो, कोई भी टूल, मैंने पहले इसमें ही बताया कि आपको अगर यूज करना है तो आपको इंस्ट्रक्शन, यू नीड टू बी अ गुड इंस्ट्रक्टर। टैक्स ऑडिट में यूज करो, आईटीआर में यूज करो, कहीं भी यूज करो। इफ यू आर नॉट अ गुड इंस्ट्रक्टर, देन यू कैनॉट यूज एआई टूल्स, ट्रस्ट मी। क्योंकि एआई से बात करने का एक ही तरीका है, दैट इज प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट मतलब लेमैन के लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस। The prompt is a piece of text or input that is used to elicit a specific response or output from language model or other AI system. Again, ये टेक्निकल में जाने से सिंप्लीफाई में मैंने बता दिया आपको कि प्रॉम्प्ट का मतलब इंस्ट्रक्शन। एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज नथिंग बट द मेथड, the steps to learn how to write the prompt। and basic है ये कोई भी आप टूल यूज कर रहे हो, किसी भी चीज के लिए यूज कर रहे हो, तो आपको प्रॉम्प्ट ही लिखना आना चाहिए, इंस्ट्रक्शन ही लिखने आने चाहिए, तभी आप उस टूल को यूज कर सकते हो। ये मेरी बात रजिस्टर करवा लो, इसमें कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। ओनली एंड ओनली इज प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट is your problem statement, is your instructions, whatever the word you can use। लेकिन जब तक आप prompt नहीं लिखोगे अच्छे से, तब तक आपको result नहीं आएगा। तो prompt engineering is a process of designing and optimizing prompt to get specific, accurate and relevant response from language models or other AI system। Again वही, ये process की चीज की है prompt engineering, कि आप सीख रहे हो हाउ टू राइट द प्रॉम्प्ट। अगर आपको प्रॉम्प्ट ही नहीं लिखते आया कि टैक्स ऑडिट में प्रॉम्प्ट लिखना है, मैं अभी दिखाऊंगा आपको, काफ़ी उसके फीचर्स है, वो उसमें आने चाहिए। तो उस तरीके से आपको प्रॉम्प्ट लिखना है। जैसे कि बेसिक, बी स्पेसिफिक नहीं लिखा ना, तो क्या रिजल्ट आएगा। तो जैसे कि टेल मी अबाउट टैक्स ऑडिट, ऐसा अगर आपने उसको बोला तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, भाई ये क्या है। आपने आगा पीछा, जैसे मैंने कहा कि आप आपके ऑफिस में बैठे हो और रास्ते में कोई चल रहा है, उसको बुलाया, उसको बोला ये इधर है, मेरे को 3CD भर के दे, वो बोले ये क्या बात कर रहे हैं आप। वैसा ही प्रॉम्प्ट है, इंस्ट्रक्शन। गुड प्रॉम्प्ट एग्जाम्पल उसका दिया है कि स्पेसिफिक होना है, एक्सप्लेन क्लॉज 22 ऑफ फॉर्म 3CD एंड हाउ AI कैन बी यूज टू वैलिडेट 43B एंड MSME। अगर ये पूरा आप इंस्ट्रक्शन लिखते हो, इसको क्या कहेंगे, इंस्ट्रक्शन कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, प्रॉम्प्ट कहेंगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कुछ भी नाम दो, अगर ये आपको लिखते आया है तो ही आपको एआई यूज करते आएगा, ट्रस्ट मी। बाकी आपको कुछ करना नहीं है, बाकी सब काम एआई करता है। एआई बोल, मिस्टर एआई बहुत स्मार्ट है, मिस्टर इंडिया जैसा है, वो दिखाई नहीं देता लेकिन सब काम वही करता है। वो करने के लिए आपको क्या करना है भाई, इंस्ट्रक्शंस देने हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, गिव कॉन्टेक्स्ट, पर्सोना कहते हैं उसको हम। पर्सोना का मतलब, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आपने राह चलते किसी को बुलाया, भाई मेरा 3CD भर के दे, ऐसा नहीं है। आप ऑफिस में आपके जूनियर को ऐसा थोड़ी बोलते हो कि आई एम अ टैक्स प्रैक्टिशनर, यू आर माई एम्प्लॉई, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दैट, यू आर कमिंग फ्रॉम योर होम फॉर लर्निंग दिस। ये सब चीजें आप उसको नहीं बोलते हो, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग है। आप रास्ते वाला आदमी आएगा तो उसको बोलना पड़ेगा ना, भाई मैं टैक्स प्रोफेशनल हूँ, मेरे लिए तू 3CD बना के देगा तो मैं तुझे 500 रुपए दूंगा। देन योर इंस्ट्रक्शंस आर कंप्लीटेड। तो वो जो थर्ड पर्सन है ना, वो एआई जैसा आपके लिए बोलेगा, हाँ 500 नहीं 600 दे रहे तो मैं बना के देता हूँ। एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको, हाउ
टैक्स ऑडिट हो, ITR हो, या आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको इंस्ट्रक्शन देने का स्किल अच्छे से आना चाहिए. इफ यू आर गुड इंस्ट्रक्टर, यू आर अ गुड AI enabled person. एंड इफ यू आर नॉट गुड इंस्ट्रक्टर, देन क्रिएट्स नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स. वो भी दिखाने वाला हूँ क्या एक्चुअल में होते हैं. तो ये नीचे जैसा प्रॉम्प्ट मैंने लिखा है कि व्हेन आई एम गिविंग अ प्रॉम्प्ट और अ स्टेटमेंट, आई विल से आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट with preparing a seminar for professionals aged 25 to 65, topic AI in tax audit. Please prepare 10 slides clause wise with the practical examples. जब मैंने ये लिख के दिया तब उसको समझेगा कि भाई ये जो बनाना है, ये सारी चीज PPT जो बनानी है, ये एक CA के लिए बनानी है. अदरवाइज ही विल गेट कंफ्यूज. इतनी सारी डिटेल्स है, कौन सी देनी है. स्ट्रक्चर द प्रॉम्प्ट. उसको अच्छे से स्ट्रक्चर करो. स्ट्रक्चर मतलब लिखना. इंस्ट्रक्शन आप जब देते हो, आप उल्टे सीधे इंस्ट्रक्शन जिसको दोगे ऑफिस में, आपको रिजल्ट कितने डेंजरस आए हुए हैं आज तक आपके एक्सपीरियंस में, एवरीवन डज नो. सो वी आर हियर टू लेसर आवर हेडेक्स एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी इन आवर ऑफिस, बिकॉज एवरी टाइम यू कैन नॉट गो एंड डू ऑल दिस थिंग्स. और ये एफिशिएंसी 100% बढ़ाता है, इज माई ओन एक्सपीरियंस. सो वो प्रॉम्प्ट को ब्रेक करो, उसमें पर्पस डालो. हाँ, इसमें और एक बहुत अच्छी बात है, आप आपका फॉर्मेट उसको दे सकते हो. आपने AI को बोला, मिस्टर AI भाई आप मुझे ड्यू ना PF ESIC का डिटेल्स चाहिए और ड्यू डेट और ये कॉलम्स में चाहिए, तो ये कॉलम्स में मुझे वो डेटा डाल के दो. तो वो आपकी बात सुनेगा. आपको कोई भी एक्सेल में एनालिसिस आपके कॉलम हेडिंग्स के अनुसार चाहिए, आप उसको बताइए आई वांट दिस इन दिस फॉर्मेट. पहला सीरियल नंबर, दूसरा नेम ऑफ क्लाइंट, तीसरा उसकी ऑडिट फीस, चौथा उसका टर्नओवर. उसी फॉर्मेट में वो डेटा एनालाइज करके देगा आपको. दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस AI. बट यू हैव टू कीप इट स्ट्रक्चर्ड. स्ट्रक्चर्ड में होना जरूरी है. ये सारे फीचर्स हैं, इसमें से एक ही यूज किया तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, 101% नहीं मिलेगा. गलत रिजल्ट मिल सकता है, बिकॉज हेलुसिनेशन इज बेसिक फीचर ऑफ AI. वो आपको आपके इंस्ट्रक्शन को दिल पे ले लेगा और उसका इंसल्ट होगा, इसलिए वो कुछ भी आके लाके आपको रिजल्ट दे देगा. इज व्हाट AI नोज. ही फील्स बैड कि वो अगर उसके आका को रिजल्ट नहीं दे पाया तो बोलता है नहीं गलत हो रहा है, इसलिए कुछ भी रिजल्ट देगा, वो आपको समझना है. यूज रोल प्ले टेक्निक्स. आस्क AI टू एक्ट एज अ स्पेसिफिक एक्सपर्ट. यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क है, क्योंकि एक्सपर्ट ओपिनियन AI कहीं से भी आपको देगा तो वो वेब में से उसने जो सीखा हुआ है उसी में से आपको आंसर निकाल के देगा. जैसे हम 10th में पढ़ते थे तो देयर वाज अ बुक कॉल्ड एज एक्विज अपेक्षित. एक्विज अपेक्षित का मतलब एक्विज लिसन, एक्विज क्वेश्चंस. दीज वर 21 क्वेश्चंस वी यूज्ड टू लर्न. तो वैसे ही AI के पास एक बड़ा सा गाइड है, वो उसी गाइड में से निकालता है. तो गाइड कौन है? उसका गूगल है, उसका वेब है. तो वहां से वो डेटा निकालता है एंड ही गिव्स इट टू यू फ्रॉम फॉर योर पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट. रिक्वेस्ट कैन बी रिफाइंड. इफ द फर्स्ट आउटपुट इज नॉट परफेक्ट, डोंट रीस्टार्ट, रिफाइन करो. फॉर एग्जाम्पल, पहले के इसमें आपने पहले कुछ टेबल बनाने को कहा और टेबल में आप भूल गए कि इसमें आपको और एक कॉलम ऐड करना है या और एक रो ऐड करनी है. तो यू एक्सप्रेस इट इन द रिवाइज प्रॉम्प्ट और उसमें ये सारे पॉइंट्स डाल के उसको रीजनरेट करने के लिए कहिए. ही विल रीजनरेट द आंसर फॉर यू एंड देन यू विल गेट अ करेक्ट. मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट हैपेंस. बहुत बार होता है ना, आप आपके जूनियर्स को इंस्ट्रक्शंस देते हो और फिर बाद में पता चलता है नहीं अपना तो सब टाइम्स रोमन में होता था, ये तो इसने कैलिब्री में बनाया. तो उसको फिर से बोलना पड़ता है भाई इसको रीजनरेट कर, कैलिब्री में नहीं टाइम्स रोमन में डाल. And then you go ahead. So these are the features of prompt which are across all the faculties, all the streams can be used. तो आपको ध्यान रखना है कि ये सारे 6 के 6 फीचर्स अगर नहीं आए तो आपको रिजल्ट मिसलीडिंग मिलने वाला है. वो कैसा है? लेट अस सी सम फन पार्ट इन दिस, हाउ द रिजल्ट इज इन द फनी वे. ठीक है, हाँ और 2 है तो 7 फीचर्स है. सॉरी,
यूज कंस्ट्रेंट मतलब अगर आपको उसको लिमिट देना है कि 500 वर्ड्स तक ही आप आंसर दीजिए, तो 500 वर्ड तक ही आपको ब्रीफ देगा. इफ यू से यूज द डिटेल्स फ्रॉम ICA.org, use the details from suppose MTPA.org, तो वो उसी वेबसाइट के सारे डिटेल्स पकड़ के आपको आंसर देगा, वो पूरे वेब में नहीं घूमेगा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप किसी जूनियर्स को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि मिस्टर XYZ की फाइल ढूंढनी है, तो आप इस फोल्डर में जाके यहाँ पे ढूंढो, तो रिस्ट्रिक्शन दे दिया ना, ये फोल्डर में यहाँ ढूंढना है. तो वैसे उसको अगर AI को बता दिया कि पूरे वेब में से मत निकाल इंफॉर्मेशन, लिमिटेड, गो इन दिस वेबसाइट, गो इन दिस वेबसाइट, गो इन दिस पेज, ही विल गो ओनली इन दैट पेज एंड गिव यू द इंफॉर्मेशन. अदरवाइज वो कहीं पे भी जाएगा, कहीं भी कोई भी इंफॉर्मेशन आपको ला के देगा. वो गलत भी हो सकती है और हेलुसिनेशन का इफेक्ट उसमें आ सकता है. और ऐसा आप करके देखिए, मैंने ऑलरेडी करके देखा है. दो दिस इज प्रैक्टिस, अनलेस यू प्रैक्टिस दिस यू विल नॉट गेट टू नो. आप जो डिसीजन नहीं है ना, उसका आप नेट पे डाल के देखो. जैसे मैंने एक एग्जांपल बताता हूँ, forfeited share warrant is taxable, please provide the case laws from assessee's favor point of view. नहीं थी फिर भी प्रोवाइड होगी. फ्रॉम डिपार्टमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू नहीं थी फिर भी प्रोवाइड होगी. और वो आपने उसके केस लॉ के नाम उठा के नेट पे डालना है और वेरीफाई करना है ये केस लॉ एक्चुअल में है या नहीं है. एंड देन यू विल अंडरस्टैंड हेलुसिनेशन मतलब क्या होता है. उसको बहुत बुरा लगता है कि जब AI बोलता है मुझे अगर इंस्ट्रक्शन दिया और मैंने पूरे नहीं किए तो इट इज़ माई इंसल्ट, तो वो गलत लगता है. इसलिए वो क्या करता है, वो पूरे वेब में से जो भी मटेरियल है उसको लेके उसका एक केस लॉ बना देता है. भाई आपके लिए मैंने बनवा दिया, एंड वी गेट हैप्पी, अरे वाह ये तो केस लॉ अपने साइड से है. ऐसा नहीं है. वो केस लॉ के बेस पे आप कुछ भी करने जाओगे, इट विल बी बैकफायर्ड. कीप इन माइंड, उसको हेलुसिनेशन कहते हैं. सो उसके बाद आस्क फॉर मल्टीपल ऑप्शन, आप ऑप्शंस भी पूछ सकते हो. ये तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, गिव मी 3 डिफरेंट वेज दैट AI कैन हेल्प इन क्लॉज 43. इन अदरवाइज ऑल्सो कोई भी इसमें आप ऑप्शंस पूछ सकते हैं कि मुझे 5 ऑप्शंस दीजिए, 10 ऑप्शन दीजिए, तो AI उतने सारे ऑप्शंस आपके लिए होंगे तो क्रिएट करके देगा. फिर भी आगे हेलुसिनेशन कैन बी द रिस्क पार्ट इन इट. भी आगे ये हो गया आपके प्रॉम्प्ट पैटर्न्स. बिफोर गोइंग टू बैड प्रॉम्प्ट्स, पहले मैं ये बेसिक यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि जब आप AI टूल कोई भी यूज करोगे तो पहली तो चीज, एक AI के लिए आपका सेपरेट मेल आईडी निकालना है. फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, सेपरेट मेल आईडी फॉर यूजिंग इट फॉर AI टूल्स. क्योंकि AI के कोई भी टूल्स में आपको लॉगिन करना पड़ता है, और लॉगिन करना है मतलब आपको कोई तो मेल आईडी देना पड़ता है. और अगर आपने रेगुलर यूज वाला मेल आईडी प्रोवाइड किया, देन योर डेटा इज हैविंग अ रिस्क टू बी एक्सपोज टू वेब. और AI को ये समझता नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, गोडके सर के ऑफिस का AI है तो उसको ये नहीं समझता है कि मिलिंद सर के ऑफिस से डेटा नहीं लेना है. वो मिलिंद सर का भी डेटा लेता है, उधर नवनाथ सर का भी लेता है, सोनोने सर का भी ले, सबका डेटा मिला के वो रिजल्ट देता है. समझ गए आप लोग सब. इसका मतलब क्या है कि आपको मेल आईडी स्पेसिफिक रखना है सिर्फ AI के यूज के लिए. ये बेसिक थिंग है. दूसरी चीज, आप जो भी टेस्टिंग करोगे AI का, वो उसी मेल आईडी से करो. जिस मेल आईडी पे आप प्रोफेशनल यूज नहीं कर रहे हो, यूज दैट. ओके, इट शुड नॉट बी योर प्रोफेशनल एड्रेस. इन शॉर्ट, अपने रियल पता उसमें देना नहीं है, उसको भी इल्यूजन वाला पता देना है. तो वो भी घूमते घूमते रहेगा, ये आपकी इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी. ठीक है. उसके बाद ही ये प्रॉम्प्ट वाला ऑप्शन आप खोलोगे और वहां पे प्रॉम्प्टिंग करने वाले या इंस्ट्रक्शंस देने वाले हो. सो चैट GPT हो या कोई भी AI का टूल हो, वहां पे आपको लॉगिन करना पड़ता है. यू हैव टू यूज अ सेपरेट मेल आईडी
फॉर दैट पर्पज पूरे ऑफिस में वो सेपरेट मेल आईडी ही यूज करना है। गलती से आपके जूनियर्स ने अगर आपका ऑफिशियल मेल आईडी यूज किया, देन द होल डेटा सिक्योरिटी इज कॉम्प्रोमाइज and it is going to be having a risk because we don't know what data will be extracted by AI tools, क्योंकि उसके सेटिंग्स में भी काफ़ी जगह आपको लॉक करने पड़ते हैं। जैसे कि हम अपने ऑफिस में अपने केबिन को एक लॉक लगाते हैं और फिर बाहर के केबिन मेन डोर को लगाते हैं, वैसे कि AI के टूल में पहले एक केबिन को लॉक लगाओ आपके प्रोफाइल को, फिर दूसरे पूरे उसको लॉक लगा दो कि अपना डेटा बाहर नहीं जाना चाहिए। मैंने जैसे कहा ना, AI को समझता नहीं है कि वो किसके लिए काम कर रहा है, अनलेस इट इज पेड, बट स्टिल इट इज वेब मतलब इंटरनेट पूरा ग्लोबल, तो वहाँ पे यू डोंट हैव टू टेक दिस रिस्क। और उसी के बाद प्रॉम्प्टिंग शुरू करना है। अगर आपके रेगुलर मेल आईडी में आप यूज कर रहे हो, यू आर एट अ वेरी हाई रिस्क। उसके लिए मैं बाद में एक वेबसाइट बता दूंगा, वहां पे आप डालोगे ना तो आपके ईमेल का डेटा कहाँ पे गया है वो भी समझता है। दैट इज ब्रीच ऑफ डेटा। उसकी एक वेबसाइट है, आपका मेल आईडी डाल दिया तो यू गेट अ डिटेल्स दैट इन हाउ मेनी वेबसाइट्स योर डेटा हैज बीन फेच्ड एंड कैन बी मिसयूज, कैन बी मे बी। जैसे आप जहाँ पे भी रजिस्टर्ड करते हो ना, सब्सक्राइब करो, अमेजॉन हो, यूट्यूब हो, कहीं पे भी हो, वैसे ही ये AI का भी है। सो यू हैव टू टेक केयर एज अ टैक्स प्रोफेशनल। दिस इज फ्रॉम कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम टेलिंग यू। ये जितना अच्छा है, एफिशिएंट है, उतना रिस्की है, डबल एज स्वॉर्ड है ये। एग्जाम्पल ऑफ बैड प्रॉम्प्ट, आप ये ट्राई करके देखिए, फिर आपको समझेगा जरूर। सुपर वेग, आपने AI को बोला भाई मुझे टैक्स के बारे में कुछ बता, टेल मी समथिंग अबाउट टैक्स, तो वो क्या बताएगा? वंस अपॉन अ टाइम्स देयर वाज इनकम टैक्स, वो स्टोरी शुरू कर देगा। बिकॉज यू हैव गिवन अ वेरी वेग प्रॉम्प्ट, वेग इंस्ट्रक्शन दिए ना। आपने आपके जूनियर को बताया भाई एक काम कर बच्चा, जाके स्टैम्प पेपर लेके आ 500 रुपये का। कहाँ से लाना है नहीं मालूम है, वो पूरा पुणे घूमते रहेगा फिर भी उसको नहीं मिलेगा। वैसे इसका प्रॉम्प्ट का इंस्ट्रक्शन का रूल है। ओवरलोडेड प्रॉम्प्ट, ओवरलोडेड मीन्स वेरी हाई इंस्ट्रक्शंस, हेवी इंस्ट्रक्शंस, और किसी को किसी का मैच नहीं। देखिए क्या दिया है एग्जाम्पल, एक्सप्लेन एंटायर इनकम टैक्स इन 1 लाइन इन शेक्सपियर स्टाइल विद इमोजी फॉर माई 2 आवर सेमिनार। हाउ कैन इट बी? मतलब आप सेमिनार के लिए 1 लाइन में इनकम टैक्स एक्ट एक्सप्लेन करने को कह रहे हैं। AI कंफ्यूज हो गया, वो ही से टू टैक्स और नॉट टू टैक्स, टू बी और नॉट टू बी, वैसा हो गया ना वो। सो इट बिकम्स वेरी फनी, मिसगाइडेड। राइट माई टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इन 5 minutes so I can go and watch cricket. How can you write this? वो बोलेगा श्योर बट द असेसिंग ऑफिसर माइट ऑल्सो गिव यू अ रेड कार्ड, वो नोटिस भेज देगा ना अगर जल्दी 5 मिनट में टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भर दिया तो। इमोशनल प्रॉम्प्ट, ये कैटेगराइजेशन की है, लोग ऐसे प्रॉम्प्ट डालते हैं। डियर AI, माई क्लाइंट हेट्स टैक्स, आई हेट टैक्स, कैन यू प्लीज मेक इट डिसअपियर? सॉरी, आई एम पावरफुल नॉट मैजिकल, प्लीज कॉन्टेक्ट CBDT। जैसा आप डालोगे इंस्ट्रक्शंस वैसे वो देगा। कंफ्यूज प्रॉम्प्ट, टेल मी अबाउट GST इनवॉइस ऑफ सलमान खान, तो उसने GST का एक ही सलमान खान का डायलॉग दे दिया है। एक बार जो ITC मैंने क्लेम कर लिया तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, वो सिर्फ GST वाले सुनेंगे ना अगर ऐसे आप डालोगे तो। ये सारे मज़ेदार किस्से होते हैं और इसको आप यूज़ करोगे तो गड़बड़ा हो जाओगे। ऑफिस जूनियर्स, मतलब हाउ इट हैपन्स, इट इज हैपन इन रश जनरली एंड आवर फोकस इज नॉट ऑन प्रॉम्प्टिंग, आवर फोकस इज ऑन रिजल्ट, वो गड़बड़ जाता है। जैसा सवाल, गार्बेज इन गार्बेज आउट इज द फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड AI ऑल्सो, गीगो। तो आप अगर ऐसा सवाल डालोगे GST मुझे सलमान खान के वॉइस में, तो GST का रूल भी वो ऐसे ही बताएगा ना सलमान खान का डायलॉग लेके, क्योंकि उसको वेब में जो मिलेगा उसके ऊपर वो बनाएगा, ये ध्यान में रखिए। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बैड प्रॉम्प्ट। नाउ द प्रोज
that is the benefit of AI for tax professionals. The headers are compliance. आपके वो compliance fast हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा. क्यों? आपने जूनियर को निकाल के इसको डालना है क्या? नहीं. फिर से मैं कह रहा हूँ, AI is not going to substitute a human being. ह्यूमन बीइंग जो करने वाला है वो ह्यूमन बीइंग ही करेगा. पढ़ने का काम ह्यूमन बीइंग कर सकता है, रीडिंग फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज लीगल पॉइंट ऑफ व्यू. अगर हम कोई भी डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल्स पढ़ रहे हैं, तो वी आर गोइंग टू रीड इट फ्रॉम इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू, जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू. एआई जब पढ़ता है वो पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ता है, वो डेटा है वो पढ़ता है. इट इज जस्ट रीडिंग दैट डेटा. तो उसका यूज करना है तो जूनियर्स को पढ़ने के लिए कहिए. अगर आप AI का यूज कर रहे हैं ऑफिस में, यू विल गेट द रिजल्ट फास्ट बिकॉज यू आर. हाँ, दैट इंपॉर्टेंट पार्ट इज इंस्ट्रक्शन आपको लिख के देने पड़ेंगे. इंस्ट्रक्शन आपने लिख के दिए तो ही उसका रिजल्ट आपको जो चाहिए वो मिलेगा, एंड देन यू कैन यूज इट इन द एक्चुअल लाइफ. ट्रस्ट मी, मैंने 5 मिनट, बहुत मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं, 5 मिनट में मैंने 1 करोड़ के प्रोजेक्ट का रिपोर्ट बनाया था, 5 मिनट्स. और उसके बाद मैं 15 से 20 मिनट तक वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट पढ़ रहा था. प्रोजेक्ट रिपोर्ट वाज ऑफ 25 पेजेस. कैन यू प्रिपेयर इट इन 5 मिनट्स? एनीवन, कोई नहीं प्रिपेयर कर सकता. देयर इज अ टूल, क्लाउडिंग, सर अभी रेफर कर रहे थे. दैट टूल हेल्प्स यू टू प्रिपेयर द प्रोजेक्ट रिपोर्ट और प्रोजेक्शंस. कोई भी प्रोजेक्शन हो, आप उसको जो ऐड करके दोगे वो ऐड करेगा. फॉर एग्जाम्पल, जनरल प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही हैज अ बेसिक फॉर्मेट, बट इफ यू टेल हिम कि मुझे कैश फ्लो बना के दो, मुझे ब्रेक इवन पॉइंट बना के दो, मुझे पीवी एनालिसिस बना के दो, इट विल ऐड ऑल दिस इन दैट रिपोर्ट एंड रीजनरेट इट फॉर यू. 5 minutes and a project report of 25 pages with excellent English. You need not have to worry about the language also. Only thing is you have to read it very patiently and very carefully. उसमें गलती हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी. हालांकि आपको ही कन्विंस करना है बैंक ऑफिशियल्स व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग दैट प्रोजेक्ट रिपोर्ट. तो कंप्लायंसेस आपके फास्ट हो सकते हैं, क्योंकि कंप्लायंसेस में रिकन्सिलेशन और कनेक्टिविटी जो करनी है डेटा में, वो वहाँ पे फास्ट होगी. वो देखेंगे हम आगे कैसे टूल को यूज करना है. रिसर्च, वंडरफुल. एआई जैसा कोई बंदा नहीं है आपको रिसर्च का काम करके देगा. परप्लेक्सिटी जो लीगल के लिए यूज की जाती है एआई टूल, इट इज द वंडरफुल टूल फॉर रिसर्च. हालांकि बाकी के इसमें भी रिसर्च का ऑप्शन आता है, लेकिन फिर से ये केस लॉ वाला मामला ध्यान से, क्योंकि हेल्यूसिनेशन अगर हो गया तो सारी गड़बड़ हो जाएगी. उसमें क्या करना है, लिमिट कैसा देना है. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन टेल देम कि एक्सट्रैक्ट द केस लॉज फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनकम टैक्स india.gov.in. इधर से ही आपको लेना है डेटा, उधर से ही डेटा लेगा. तो आपको हेल्यूसिनेशन की रिस्क आप कम कर रहे हो. अदरवाइज रिस्क इज ओपन व्हेन इट इज ओपन टू वेब. उसको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि ये 10 वेबसाइट है, इसमें से ही आप मुझे इनकम टैक्स की केस निकाल के दो, इसमें से ही आप मुझे जीएसटी की केस निकाल के दो. तो वो उसी पे जाएगा और उधर से इंफॉर्मेशन लेके आएगा. क्लाइंट की इंफॉर्मेशन आपको ठीक तरीके से नहीं है, एंड ही हैज अ वेबसाइट ऑफ लेट्स से नंबर ऑफ पेजेस, 10 to 50 पेजेस का वेबसाइट है. ये एआई वाला जो है ना, वो डिटेक्टिव जैसा काम करेगा. वो उसके वेबसाइट पे जाएगा और आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी आपको निकाल के एक शीट में 5 मिनट में निकाल के देगा. फॉर एग्जांपल, आपका कोई क्लाइंट मिठाई की दुकान वाला है, उसकी वेबसाइट है, या कपड़े की दुकान वाला है, तो उसके वेबसाइट पे आपको यू वांट टू अंडरस्टैंड वेदर एनी issues or any risk part is disclosed on the website which is relating to taxation, accounting, anything. You want to just search it out. So that searching can be done in 5 minutes. बहुत ज़्यादा बोल दिए मैंने, 1 मिनट में वो निकाल के देता है. वो सारी इंफॉर्मेशन फेच करता है वो वेबसाइट से. उसका ओनर कौन है, उसका ब्रांड नेम क्या है, उसके प्रोडक्ट के नाम क्या है, प्रोडक्ट के रेट क्या है, everything it fetches from that website and gives you in a click of 1 second, 1 minute. 1 मिनट बहुत हो गया पूरी वेबसाइट का डिटेल लिखने के लिए.
तो ये एक है रिस्क मैनेजमेंट. ये रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा सा 50-50 I will say. It is a pro also and it is cons also. That one side it will manage the risk if you limit the source. Like जैसे मैंने अभी कहा कि आप कोई रिस्ट्रिक्ट करो वेबसाइट का नाम डाल के कि भाई ये वेबसाइट में से ही डेटा निकाल के दो, तो इनकम टैक्स या गवर्नमेंट वेबसाइट में से मुझे केस लॉस की डिटेल चाहिए, देन ओनली इट विल बी रिड्यूसिंग द रिस्क. बट इट डजंट मीन्स दैट इट विल गिव यू अ रिलेवेंट केस लॉ फॉर दैट. आपको पढ़ के एक बार समझ लेना है. प्रोडक्टिविटी 101%, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है. आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शन पे काम करना है. इंस्ट्रक्शन अच्छे लिखोगे तो आप जैसा AI का मतलब यूज़ करने वाला बंदा नहीं आएगा. It is going to reduce your hard efforts to instruct the juniors and get it done. Because juniors को कितना भी आपने बोला, for example बैलेंस शीट में सब जगह टाइम्स रोमन डाल दो, तो कहीं ना कहीं वो छोड़ देगा, कहीं ना कहीं उसको राउंडिंग ऑफ छोड़ देगा, कहीं ना कहीं डेसिमल 2 की जगह 3 रहेंगे. तो बार बार बोलना पड़ता है. ये बार बार बोलने से आपकी एफिशिएंसी डाउन हो रही है. ये यहाँ पे AI को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती. AI once you give the instruction perfectly he implements it and give you the result. That is the beauty of AI. Similarly there are cons, that is our negative points. Accuracy, we have seen garbage in garbage out is a principle. Accuracy is also to subject to what you are asking. Prompt कितना vague लिखा है और कोई इम्पॉसिबल वाला स्टेटमेंट नहीं ना दिया वहाँ पे. जैसे वहाँ पे लिखा था कि भाई मेरे क्लाइंट को इनकम टैक्स पे नहीं करना है तो इनकम टैक्स डिसअपियर करो, ऐसे नहीं कर सकता वो. सो यू हैव टू बी ऑल्सो वेरी रियलिस्टिक व्हेन यू आर गिविंग, अदरवाइज इट इज गोइंग टू गिव यू नेगेटिव रिजल्ट्स. कॉन्फिडेंशियलिटी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. ये आपके रिस्क कॉम्प्रोमाइज होती है. आपकी सारी सिक्योरिटी जो है डेटा की ये कॉम्प्रोमाइज हो सकती है अगर नंबर 1, if you don't have a separate mail ID, first thing. Second thing, whenever you are uploading any data on AI, it should be without any specific name of your client, without any PAN, without any KYC details of your client. अगर गलती से फॉर एग्जाम्पल XYZ कंपनी उसका CIN नंबर, उसका एड्रेस डाल के मैंने बैलेंस शीट डाल दिया, बोला बैलेंस शीट का एनालिसिस करके दो, करके देगा वो. लेकिन उसके मेमोरी में आपने ये जो XYZ आदमी है ना उसके सारे डिटेल्स डाल दिए. अभी फॉर एग्जांपल वो अगर मिलिंद सर का क्लाइंट है और वही बाद में नवना सर ने देखा और उसको डिटेल्स डालने हैं तो वो उधर भी मिल सकते हैं. AI को ये समझता नहीं किसके लिए काम कर रहा है, बिकॉज AI इज ऑन द वेब बेस. ये टूल मतलब क्या, इट इज नॉट ऑफलाइन टूल, इट इज ऑनलाइन टूल्स. ये सारे ऑनलाइन टूल्स है. तो दूसरा ध्यान क्या रखना है, कभी भी KYC और ये निकाल के डमी नाम डाल के डेटा पैकेचुअल डालो, लेकिन डाम डमी डालो. तीसरी चीज, अगर आपको नोटिसेस उसमें अपलोड करने हैं रिप्लाई मिलने के लिए, यू वांट टू नो द रिप्लाई ऑफ अ शो कॉज नोटिस, सो देयर वो सारे PDF में रहते हैं. इनकम टैक्स की नोटिस हो या GST की नोटिस हो, तो वो नोटिसेस को आप PDF का एक टूल यूज करके, PDF का ऑफलाइन टूल है, दैट टूल इज डूइंग अ रिडैक्ट एक्टिविटी. रिडैक्ट REDACT. रिडैक्ट एक्टिविटी का मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में, व्हेन यू स्क्रिबल ऑन एनी नेम और एनी अमाउंट मैन्युअली तो कैसा दिखता है, वो ऐसा स्क्रैच हुआ. तो रिडैक्ट का मतलब वो टूल क्या करता है, वो नाम को ओरिजिनल पेपर पे से निकाल देता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर नोटिस है आपको इनकम टैक्स की क्लाइंट की, तो क्लाइंट का पैन नंबर है, तो वो पैन नंबर को सिर्फ इरेज नहीं करेगा, छुपा के नहीं रखेगा, वो कागज पे से, वो PDF में से वो पैन नंबर के इंप्रेशन डिलीट कर देता है. कोई रिट्रैक्ट नहीं कर सकता उसको. देन you redact that notice and then upload it and ask them to give the reply. Else you can just copy that paragraph for which it is there and then you can give the prompt कि मुझे इसका क्या चाहिए. और अगेन उसको prompt लिखने के 7 पैरामीटर्स आपको ध्यान रखने हैं. आपने कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया तो वो रिप्लाई किसी भी तरीके से दे सकता है. यू हैव टू गिव अ कॉन्टेक्स्ट. फ्रेंडली रिप्लाई दे सकता है वो,
इनफॉर्मल लव लेटर जैसा रिप्लाई भी दे सकता है. इफ यू डोंट गिव कि मैं टैक्स प्रैक्टिशनर हूँ और मुझे इसका ये चाहिए, इसका रिप्लाई चाहिए मुझे लीगल लैंग्वेज में, नहीं तो वो ओपनली क्या समझेगा, उसको जो समझना है वो, दैट यू विल नॉट अंडरस्टैंड. That is the main point you have to keep in mind. And that data privacy, this is connected with the law of data digital personal data protection act. नाम देखो, digital personal data protection. तो तीनों ये लॉ में 2023 में पास हो गया है. इस लॉ के अंडर हम सब लोग आते हैं. We are tax professionals and we have the sensitive data of our client. Our ethics are there 100%, but when you are using the AI and without understanding or by misunderstanding you do upload that, and if the data security is compromised, then you have to pay the damages which are in crores. उस लॉ के आप पेनल्टी की प्रोविजन देखिए, सारे करोड्स तक है. करोड्स में भी डैमेजेस है बिकॉज यू आर मिसयूजिंग द पर्सनल डेटा विच इज अवेलेबल ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऐसा उसका मानना है. The result of that DPDA was due to the all the different types of frauds happen in the bank. क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड है, कोई भी है, तो इसके लिए वो लॉ है और वो लॉ यहाँ पे कनेक्टेड है. इसलिए कभी भी आपको पहली चीज दोहरा रहा हूँ, ईमेल आपका अलग रहना चाहिए. ऑफिस में पूरे एक अलग ईमेल जहाँ से एआई ऑपरेट होगा. दूसरा, कभी भी क्लाइंट का डेटा डायरेक्ट अपलोड नहीं करना है. मोस्ट ऑफ द टाइम एक टूल है, इसके पहले आता था, मतलब है अभी भी, आई लव PDF. Many of you must have used it to convert it into multiple variations. तो वो बिल्कुल नहीं यूज करना है. वहाँ पे भी डेटा सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है. उसकी जगह देयर इज अ ऑफलाइन टूल ऑफ PDF which you can use to redact, to convert into Word, PPT वगैरह वगैरह. सब जो भी चीज़ें वो I love PDF पे होती है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो ऑफलाइन मोड में. सबसे इंपॉर्टेंट ऑफलाइन मोड में. Many times junior don't understand, for the simplicity and fastest result they go on doing anything. वो क्या करते हैं, डायरेक्ट आपका रिपोर्ट लेके अपलोड करते हैं, उसको बोलते हैं अच्छा करके दो, पॉलिश करके दो. अरे यार, रिपोर्ट ही अगर आपने पूरा डाल दिया तो पूरा डेटा आपने वेब पे डाल दिया, ऐसा हो रहा है. So confidentiality and data privacy is linked with your ethics and with your DPDA Act, which is very sensitive. We are dealing with sensitive information. So आपको ये ध्यान रखना है. Dependency, it is going to have. तो थोड़ी बहुत तो डिपेंडेंसी आ ही जाती है, लेकिन अगेन रीडिंग इज नॉट अ डिपेंडेंसी. वी हैव टू रीड द डॉक्यूमेंट्स ऑन आवर ओन टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी एंड एप्लीकेशन. बायस एंड रिलायबिलिटी, तो एआई का क्या हो जाता है, हेलुसिनेशन की वजह से एआई गिव समटाइम्स बायस रिजल्ट. मतलब क्या है मैं बताता हूँ. बायस मतलब एक बार उसको एक पैटर्न समझ गया. फॉर एग्जांपल, मैं यूट्यूब यूज़ कर रहा हूँ और मैं सिर्फ कोई भक्ति संगीत लगा रहा हूँ बार बार, तो उसको एक पैटर्न समझ जाता है, वो एल्गोरिदम सेट करता है एंड इट गेट बायस. तो वैसे ही एआई में आप बार बार जो पूछते हो ना, इट गेट बायस विद दैट कि आप उसको क्या पूछ रहे हो. तो जैसे आप ऑफिस में इंस्ट्रक्शन देते हो, तो जूनियर्स को आपने बार बार जो पूछा तो और चेक करने को कहा या फिर उसका करेक्शन करके उसको बोला कि ये करेक्ट करके लाओ, तो उससे जूनियर्स को पता चलता है कि आपको क्या चाहिए. सिमिलरली यू ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट द जूनियर्स अंडरस्टैंड एंड यू गिव द इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंगली. द सेम थिंग, इसको बायस कहते हैं. बायस मतलब वी स्टार्ट प्रिज्यूमिंग, एज्यूमिंग, और फिर उसी स्टाइल में सोचना शुरू हो जाता है. ये एक एआई का डिसएडवांटेज है. अभी एआई इन टैक्स ऑडिट, ये पहले सब जो बैकग्राउंड था ये सबसे इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि एआई के बहुत सारे टूल्स हैं और आप कोई भी टूल यूज़ करने जाओगे तो उसके लिए ये बेसिक फंडामेंटल्स, बेसिक रूल्स नहीं समझ पाओगे तो यू विल बी इन अ ट्रबल. दैट इज व्हाट यू डोंट अंडरस्टैंड. सो एआई इन टैक्स ऑडिट,
टैक्स ऑडिट की एक्टिविटीज़ अगर हमने डिवाइड की 12-13 एक्टिविटीज़ में मैंने डाली है, उसमें से कहाँ कहाँ पे आप AI यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ व्हाट आई एम पॉइंटिंग आउट इन टुडेज सेशन. And with that, I'm going to give 2 or 3 particular tools how they can be used in our office in these activities. Right from the first activity, calling for data. Calling for data सबसे तकलीफ वाली बात है. कॉलिंग फॉर डेटा और रिमाइंडर ऑफ फीस, 2 तकलीफ वाली बातें हमारे, वो तकलीफ थोड़ी सी दूर करता हूँ. यहाँ पे एक जेमिनी, गूगल जेमिनी जो टूल है, ये हमें मतलब ये मैंने पहले ही कहा है कि 41,000 टूल्स है. ये टूल्स के दूसरे नाम भी हो सकते हैं. ये मैं जेमिनी यूज़ कर रहा हूँ, जेमिनी की जगह XYZ और कुछ भी हो सकता है. सो जेमिनी में गूगल जेमिनी, ये गूगल के साथ उसका गूगल का भाई है, ऐसा समझो. तो ये आपको अलाउ करता है कि गूगल के कोई भी एलिमेंट्स में जाके डेटा निकाल के या फिर डेटा डाल के आगे मेल करना है. गूगल स्प्रेडशीट है, गूगल ड्राइव है, एवरीवेयर गूगल जहाँ जहाँ है, गूगल में जो जो ऑप्शंस है, जेमिनी को आप इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो इन योर लेमन्स नेचुरल प्रोसेसिंग लैंग्वेज. NLP में आप नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में डाल सकते हो. क्या डाल सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, मुझे क्लाइंट को एवरी 2 days आई वांट टू गिव हिम अ रिमाइंडर, आई वांट टू सेट अ रिमाइंडर मेल फॉर शेयरिंग द डेटा. Once you instruct Gemini, the Gemini will do all this automatically. ये सारी चीज़ें. तो इंस्ट्रक्शन क्या देने उसको? एवरी पर्टिकुलर डेट्स के यू हैव टू गिव द डेट्स, कौन से दिन आपको ये ईमेल फायर होने चाहिए, और उसके आपके कैलेंडर में भी वो रिमाइंडर सेट करने हैं. तो ये जेमिनी में भी हो सकता है. और दूसरा चीज़ है कि आप इसके लिए वाइब कोडिंग कहते हैं उसको. वाइब कोडिंग मतलब मैक्रोज इन शॉर्ट, जो हमें कभी लिखना ज़रूरी नहीं था. अभी भी हम मैक्रोज नहीं लिखने वाले. मैक्रोज विल बी रिटन बाय AI. हम AI को बोलेंगे भाई हमको ऐसा मैक्रो लिख के दे. तो गूगल ऐप स्क्रिप्ट है, सिमिलरली मैक्रोज है जो कोडर में हम कर सकते हैं, और ये जेमिनी वाला है. तो ये रिमाइंडर्स, ऑटोमेलिंग, ये आप ये 2-3 टूल यूज़ करके आपका वो मैन पावर सेव कर सकते हैं जो आप आपके एडमिन स्टाफ को देते हो. यू सेट द रिमाइंडर्स, यू गिव द इंस्ट्रक्शंस एंड इट विल बी डूइंग दैट. और एक दूसरी चीज़ है, जेमिनी का मेन फ़ायदा का क्या होगा, आपके मेल्स में अभी यहाँ पे एक तकलीफ हो जाती है कि यहाँ पे आपको आपका मेल ID लेना पड़ता है जेमिनी में. For example, you have number of mails from your client giving different data, and let's say 30 clients are there and 30 clients have shooted some 100 mails to you. कभी PDF में TDS के चलन भेजे, कभी टैली बैकअप भेजा है, कभी क्या भेजा है. अभी आपको उसका सारा समरी निकालना है. वो जेमिनी को बोल सकते हैं भाई ये तारीख से ये तारीख की सारी मेल को आप चेक करो और मुझे उसका एक समरी निकाल के दो, किसका क्या क्या आया है, कौन से तारीख का है. ही विल गिव यू अ समरी ऑफ इट. जो आपका ऑफिस असिस्टेंट नहीं कर सकता वो 1 मिनट में ये करके देगा आपको. और आपने उसको इंस्ट्रक्शन दिया ना भाई इधर से निकाल वो डेटा और पर्टिकुलर फोल्डर में डाल दे, तो वो भी करके देगा आपके लिए. दैट इज द पावर ऑफ AI. रिमाइंडर्स टू क्लाइंट, दैट इज फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट आई हैव कवर्ड. रादर थर्ड पॉइंट ऑल्सो मैंने यहाँ पे कवर किया है कि डेटा अगर बिट्स एंड पीसेस में आता है, जनरली एक क्लाइंट का डेटा आपको 5 बार 6 बार अलग अलग मेल्स में आएगा. कभी परचेस के बिल्स आते हैं, कभी सेल के बिल्स आएंगे, कभी एक्सेल शीट आएगी, कभी क्या आएगा. अभी आप वो ढूंढते कहाँ बैठोगे? एंड इफ यू आस्क योर 1 पर्सन डेडिकेटेडली वो डेटा निकालते रहेगा तो डेटा माइनिंग में उसका टाइम जाता है. दैट मैन पावर कैन बी सेव्ड बाय यूजिंग जेमिनी. तो जेमिनी को बोल दिया भाई ये सारी मेल जो आई है ना पिछले 8 दिन में 4 दिन में, उसमें मुझे वो ऐसे फॉर्मेट में निकाल के दे. तो
तो इट विल गिव यू अ डिटेल्स कि कौन से तारीख को इफ इट विल गिव इन डिटेल्स क्लाइंट वाइज। ए क्लाइंट 1 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख, बी क्लाइंट 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख। इस तरह से वो समरी बना के देगा कि डेटा मेल में क्या आया है, डेटा की समरी बना के देगा। तो इसमें आपका एडमिन मैन पावर काफ़ी बच जाता है। इसलिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये सारे 3 चीज़ों से यूज़ कर सकते हैं। एक है गूगल ऐप स्क्रिप्ट। गूगल ऐप स्क्रिप्ट इज नथिंग बट राइटिंग मैक्रोज और वाइप कोडिंग, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो गूगल ऐप स्क्रिप्ट में आप मैक्रोज लिख सकते हो। टूल है गूगल ऐप स्क्रिप्ट इज नथिंग बट अ नेम ऑफ अ टूल। उसमें वो मैक्रोज लिख के आपको एक्सेल में वो पेस्ट करने हैं और एक्सेल में वो रन करने हैं। द थिंग विच वी वेयर नॉट एबल टू डू वेयर राइटिंग डिफिकल्ट मैक्रोज एंड रनिंग देम। तो मैक्रोज का मतलब क्या है? छोटे प्रोग्राम से। सो वी आर बिकमिंग अ प्रोग्रामर ऑल्सो नाउ। तो प्रोग्रामर हम कैसे बन रहे हैं? वी आर गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द प्रोग्रामर। एक्चुअली वी आर नॉट अ प्रोग्रामर, AI is a programmer for us. That AI is doing the work for us. AI is going to prepare that program for us, short program, but it will do a fantastic job and you will not spend more than 5 minutes on that. Trust me, ये tested है। तो ये आपका पहले 3 जो टास्क है उसमें टाइम सेव हो जाता है और मैन पावर बच जाती है। जो आप मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज थॉट दैट ड्यू टू AI मैन पावर कम हो गई। मैं कहूँगा मैन पावर सेव हो गई, जो आप एफिशिएंटली दूसरे क्लाइंट के लिए लगाइए या क्लाइंट बढ़ाने के लिए यूज़ कीजिए। यू कैन इंक्रीज द क्लाइंट इन दैट सेंस। देन सॉफ्ट फाइलिंग। सॉफ्ट में फाइल मैनेजमेंट सबसे बड़ा चैलेंज है और everyone in the office, in the juniors, they feel whatever they like, they create the file in that own name. That is the beauty of everyone's office, unfortunately. कितने भी आप इंस्ट्रक्शन दो, वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो नहीं करेंगे, उसका नॉमेनक्लेचर उनको जो चाहिए वही रखेंगे। तो बहुत बार फाइनल बैकअप नाम की 10-15 फाइल रहती है। टैली बैकअप फाइनल 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 फाइनल, तो उसमें आपको जो मॉडिफिकेशन की लास्ट डेट है वहाँ से ढूंढना पड़ता है। उसके बाद क्लाइंट के नाम का मैच करते वो अलग है। पार्टनरशिप फर्म रहेगी तो फर्म पार्टनर्स सबकी फाइल एक साथ रखेंगे या तो अलग रखेंगे, एक साथ रखी तो GST इनकम टैक्स मिक्स कर देंगे। मल्टीपल थिंग्स हैपन, मल्टीपल कॉम्बिनेशंस हैपनिंग इन आवर ऑफिस एंड वी गेट स्ट्रेस्ड, क्योंकि एन मोमेंट पे आपको वो फाइल नहीं मिलती जो आपको अपलोड करनी है, आपको उसके ऊपर रिजल्ट निकालना है। तो सॉफ्ट फाइल मैनेजमेंट में छोटा सा एक वाइप कोड लिख दिया, विजुअल बेसिक का जो कोड है मतलब मैक्रोज है, वो लिख दिए तो ट्रस्ट मी इट क्रिएट्स फाइल्स एंड फोल्डर्स इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, इन अ ब्लिंक ऑफ योर आई। आप उसको बोलिए 10 फोल्डर चाहिए, 10 फोल्डर ये नाम से चाहिए और उस 10 फोल्डर में 6 फोल्डर ये नाम से चाहिए। इट विल क्रिएट इट वेरी सिस्टमैटिकली विदाउट गिविंग एनी हेडेक टू यू। जस्ट इन अ क्लिक, इन 1 मिनट वो बना देगा और ये प्रूव्ड है। उसको पाथ देना पड़ेगा कि आपको कौन से पाथ पे ये फोल्डरिंग चाहिए, वो फोल्डरिंग भी करके देगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली सर्वर का एक्सेस नहीं लेना है, आपको डेस्कटॉप पे एक्टिविटी करनी है। डेस्कटॉप पे एक बार फोल्डर बन गए तो वहाँ से उठा के आप आपके सर्वर के पाथ पे डाल सकते हो, जिससे आपका और वो अलग अलग नाम से जो क्रिएट होते हैं ना फोल्डर, दैट क्रिएट्स अ मेस इन द ऑफिस बिकॉज यू डोंट गेट द डेटा, फाइनल डेटा नाम की नॉमेनक्लेचर का मेस होता है, अलग अलग नाम से डालते हैं डेटा नॉमेनक्लेचर का। तो वो सारे फोल्डर मैनेजमेंट आप कर सकते हो। फाइल्स क्रिएट करनी वो भी क्रिएट करके देगा, लेकिन फोल्डर मैनेजमेंट बहुत तकलीफ वाला काम है। दैट इज गोइंग टू रिड्यूस आवर पेन एंड रिड्यूस द मैन पावर विच इज नॉट इन्वेस्टेड, इट इज वेस्टेड आई सपोज। बहुत बार इंस्ट्रक्शन दे के भी आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। स्क्रूटिनाइजिंग सेल एंड परचेज रजिस्टर, दिस अभी टैली के सभी रजिस्टर आप एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हो। आई एम सेग्रीगेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ टैक्स ऑडिट, जो कि आपके रेगुलर ऑडिट में भी आते हैं। आप रेगुलर में भी ये एक्टिविटीज कर सकते हो, स्क्रूटिनाइजिंग परचेज एंड सेल रजिस्टर। तो वॉट एवर द पैटर्न्स इन द सेल रजिस्टर्स आर देयर, उसके कॉलम्स के हेडिंग और उसमें आपको चाहिए वो रिजल्ट। इसका आपको एक इंस्ट्रक्शन पार्ट प्रॉम्प्ट बनाना है एंड दैट प्रॉम्प्ट will work. It may be in the form of macros,
इट मे बी इन द वाइट कोड या फिर पाइथन। अभी पाइथन तो बहुत टेक्निकल डिफिकल्ट लैंग्वेज है, लेकिन आपको NLP में ही काम करना है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। यू हैव टू गिव द इंस्ट्रक्शन इन योर लेमन लैंग्वेज। उसको AI को बोलने का मैं टैक्स प्रोफेशनल हूँ, मुझे ये करके चाहिए, ये रजिस्टर में ये कॉलम है, कॉलम्स के हेडिंग्स आपको पता रहते हैं, कॉलम्स के हेडिंग उसमें डाल दो कि पहला कॉलम सीरियल नंबर है, दूसरा कॉलम PO नंबर है, तीसरा कॉलम बिल नंबर है, फिर क्लाइंट का नाम है, वगैरह वगैरह। एंड देन गिव डिटेल इंस्ट्रक्शंस कि मुझे GSTN के कॉलम में जहाँ पे ब्लैंक है वो सारे अलग निकाल के दो, जहाँ पे GSTN है फिर भी GST नहीं लगाया है वो सारे अलग निकाल के दो। Once you give that instruction, it will prepare that code, and that code you have to paste in that Excel file and run it. In fraction of second, it will do all this activity for you in 5 minutes. आपके पास सारा डेटा अलग अलग निकल जाएगा। ये 2B वाला रिकन्सिलेशन ऐसे ही होता है। मैक्सिमम टाइम अभी everyone cannot write the macros, ना? That is we cannot be a programmer, but no programmer is with us. ये AI जो है वो प्रोग्रामर पे अभी काम करता है। तो इस तरह से परचेज और सेल का स्क्रूटिनी डिटेल में कर सकते हैं, सेमी ऑटोमेटिक है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा, बिकॉज परचेज सेल वन हैज़ टू एनालाइज, वन हैज़ टू सी, अंडरस्टैंड, अप्लाई, वहाँ पे एप्लीकेशन जरूरी है। लेकिन जो आप एक्सेल के मैक्रोज वाला काम है ना, वो आप AI से करवा के लो। अभी अगर कोई भी रजिस्टर हो, सपोज 5000 लाइन आइटम्स है, तो इट इज़ डिफिकल्ट ना करना। तो यहाँ पे आप मैक्रोज डालोगे तो मैक्रोज से वो काम आसान हो जाएगा। वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन ये तो मैन्युअल करना पड़ेगा, इसके लिए आप AI मत यूज़ करो। AI इतना रिजल्ट नहीं देगा जितना आपको खुद वाउचिंग करने के बाद मिलेगा। 7th इज लेजर स्क्रूटिनी। लेजर स्क्रूटिनी ऑल्सो इज अ सेमी पार्ट ऑफ इट। जैसे मैंने सेल परचेज रजिस्टर का कहा, सिमिलरली यू कैन एक्सट्रैक्ट द लेजर्स फ्रॉम टैली or any software whatever the SSE is using, and part of it you can do it manually, rather you have to do it manually। और पार्ट जो है एनालिटिकल वर्क जो है, जैसे पिवोट टेबल लगा के अलग अलग एनालिसिस करना है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि पिवोट लगा के भी हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। मेनी टाइम्स पीपल आर अवेयर विद पिवोट टेबल ऑल्सो, या बेसिक एनालिसिस द टूल्स ऑल्सो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, बट दीज आर at the time of rush or at the time of our work we are not able to do it perfectly। तो उससे अच्छा एक वाइट कोड लिखना है। वाइट कोड के लिए आप गूगल चैट GPT में लिखिए, या फिर लामा कोडर है। लामा कोडर इज अ AI टूल। वो कोडर में जाने का, उसको कहना है भाई हमें ऐसा ऐसा करना है, ये कॉलम्स है और मुझे इसके लिए ये एनालिसिस करके चाहिए, इसके लिए आप कोड बना के दो। तो इट गिव्स यू अ कोड। कोड कॉपी करने के लिए जगह देता है, कॉपी करना है, एक्सेल में पेस्ट करना है और वहाँ पे रन करना है। रन करने के लिए एक मैक्रो का हेडर आता है, रन करना है क्या नहीं, तो रन किया तो आपको रिजल्ट आ गया उसका। इट डज द पिवोट एंड ऑल द एनालिसिस, ग्राफ वगैरह सब बना के देगा वो उसमें, एंड ये ऑफलाइन हो जाता है। ध्यान में रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैं जब कोड बना के लेता हूँ इट बिकम्स ऑफलाइन टूल फॉर मी। I don't submit that data or upload that data on any website, any AI tool। मैंने क्या किया, एक्सेल टैली में से एक्सेल रजिस्टर निकाला या कोई लेजर निकाला और वो हो गया मेरा ऑफलाइन। देन आई प्रिपेयर द कोड ऑनलाइन, AI से कोई कोड बना के लिया, वो कोड लेके मैंने एक्सेल के फाइल में पेस्ट करवा दिया, हो गया ऑफलाइन का। ऑफलाइन में आप जो करना है उस एक्सेल में, वहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि एक्सेल के सारे जो कॉलम्स हेडिंग है ना, क्योंकि वो एज्यूम करता है कि पहले लाइन से शुरू हो गए। अगर पहले लाइन में अपना लेबल है, नाम है, टाइटल है और कुछ है, तो उसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है कि द फाइल इज स्टार्टिंग फ्रॉम रो नंबर 3, रो नंबर 5 एंड देन ऑनवर्ड्स यू डू दिस एनालिसिस। तो वो उस हिसाब से कोड बना के देता है। कोड का आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वहाँ से कॉपी और एक्सेल के कोड के ऐप स्क्रिप्ट में, या वहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ पे जाके पेस्ट करना है मॉड्यूल्स में, जहाँ पे आप कोड के लिए जो ऑप्शन बनाया हुआ है एक्सेल में मैक्रोज लिखने के लिए, कोड मतलब वाइट कोड या मैक्रोज,
इसके लिए जो ऑप्शन बना है वहाँ पे पेस्ट करना है एंड यू गेट द रिजल्ट 101%। ये हर एक जन ट्राई कर सकता है, इट्स वेरी इजी एंड कैन बी एप्लीकेबल। उसके आगे मैंने यूज बताया कैसे कर सकते हैं। आई एम गोइंग पॉइंट वाइज कंसिडरिंग द टाइम लिमिट। रिजॉल्विंग अकाउंटिंग इश्यूज, ये सेमी ऑटो है क्योंकि अभी अकाउंटिंग इश्यूज क्या है इसके ऊपर डिपेंड है कि आपको कोड क्या लिखना है और यूज कैसे करना है। फाइनलाइजिंग द बुक्स, अभी मोस्ट ऑफ द टाइम टैली इज देयर, ये नया बैलेंस शीट बिल्डर नाम का एक सॉफ्टवेयर है, आपका विनमैन भी है, ये सारा ऑटोमेशन में आपका ऑलरेडी हो गया है, तो इसमें अलग से एआई टूल इसमें लगाने की जरूरत नहीं। कहाँ लगाओगे? जहाँ पे आपको इसका एनालिसिस, एक डैशबोर्ड बनाना है। फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू डिस्कस विद योर क्लाइंट अ डैशबोर्ड ऑफ दिस फाइनेंशियल्स, तो डैशबोर्ड बनाने के लिए इफ यू गो, टैली में मिलता है लेकिन टैली में ग्रुपिंग का प्रॉब्लम होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम वी एक्सपोर्ट इट इन द एक्सेल एंड चेंज द ग्रुपिंग एंड दैट इज द रीजन। आपको फाइनलाइजिंग के बाद अगर डैशबोर्ड बनाना है, डैशबोर्ड मतलब कैश फ्लो या रेशियो एनालिसिस एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ मेजर पॉइंट्स एज वेल एज एनालिसिस, then again a tool is there, a tool is there which on a click in 2 minutes, 1 minutes or 2 minutes, मैगी भी 2 मिनट में बनती है लेकिन AI उसके पहले बना के देता है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, आपको दिखा सकता हूँ। bricks.ai नाम का एक टूल है। ये ब्रिक्स पे आप इसका फाइनेंशियल, P&L, बैलेंस शीट, कंपेरेटिव सब मिला के डालो, सिर्फ नाम, कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर, एड्रेस कुछ नहीं डालना है, डमी डालना है या नहीं डालना है, और नीचे का डाल के आप पेस्ट करो और देखो फिर रिजल्ट कितने सेकंड में आता है। इन 1 मिनट यू गेट अ डैशबोर्ड ऑफ 2 पेजेस विथ एनालिसिस कि कौन सा रेशो बढ़ा है, कौन सा रेशो कम हो गया है, डेट इक्विटी रेशो का प्रॉब्लम क्या है, या करंट रेशो रिस्की है नहीं है, ये सारी चीज़ें का एनालिसिस वो करके देगा। सेल परचेस का एनालिसिस करके देगा, प्रॉफिटेबिलिटी का करके देगा। आपको पढ़ के उसको अप्लाई करना है विद इन 2 मिनट्स। इफ यू गिव इट टू जूनियर, जूनियर नहीं बना पाएगा, 2 दिन भी नहीं बना पाएगा, 2 दिन तक वो ढूंढते रहेगा किससे क्या कनेक्ट करना है। और एक्सेल में फॉर्मूला का मैजिक एवरीवन हैज एक्सपीरियंस्ड। मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सेल में गलती नहीं होती, मैजिक होते हैं। गलती समझ में नहीं आया तो होती है, समझ में आने के बाद जब फॉर्मूला डिलीट करके फिगर पंच की जाती है उसको गलती नहीं करते, मैजिक कहते हैं। और उसी के लिए मैंने पहले बताया कि वो जुगाड़ नाम की टेक्नोलॉजी है ना, वो एआई में भी है, लेकिन एआई के लिए हम डेटा क्या देंगे उसके ऊपर है, वो जनरेटिव एआई जो बना के देगा ना, उसका आपको प्रिकॉशनरी मेजर लेना है कि डेटा पढ़ के समझ लेना है। सिमिलरली फाइनलाइजेशन में ये कर सकते हैं आप कि bricks.ai फॉर एग्जांपल ये टूल है कि इसमें आपने जो फाइनेंशियल्स बनाया है उसका पूरा एनालिसिस विद इन अ क्लिक, विद इन अ सेकेंड यू विल गेट इट ऑन द स्क्रीन एंड देन यू कैन पेस्ट इट इन योर वर्ड्स और एक्सेल डॉक्यूमेंट। एक्सट्रैक्टिंग डेटा फॉर 3CD क्लॉजेस, इसमें कुछ 2 सैम्पल्स लिए मैंने कि लामा कोडर या गूगल एप्स के यूज करके आप कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, सो दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड। Then 3CD is updated in your Winman. It is semi-automatic again I will say. तो क्वेश्चन आंसर्स है, वो क्वेश्चन आंसर्स हम AI को नहीं पूछ सकते, क्यों? क्योंकि उसको क्लाइंट का बैकग्राउंड बताना पड़ेगा ना। बिना क्या क्लाइंट के बैकग्राउंड AI कैसे क्या क्वेश्चन आंसर भरेगा, और वो हम दे नहीं सकते। सो 3CD हमें भरना है। 3CD का डेटा या ऑडिट की प्रोसेस, अगर नॉर्मली आपको सपोज एक्स क्लाइंट के लिए 2 लोग 3 लोग लगने वाले हैं, सपोज 3 लग रहे हैं, तो अगर एआई यूज करोगे तो एक मैन पावर पे भी आपका 1 दिन में 2 दिन में काम हो सकता है। दैट इज द पावर ऑफ एआई। आईटीसी, पीए, बीएसआईसी रिकंसिलेशन, ये जो है आईटीसी रिकंसिलेशन ये तो बेसिक है, ये हो ही रहा है आजकल, मोस्ट ऑफ द everyone is doing, but I think they are doing using VLOOKUP and your pivot table, whatever the analysis based you are doing. The same thing, you can give the instructions in the GPT and get the code, and that code you have to paste it in the macros coder and run that macro. You need not have to worry, the result will be perfect. It may happen that by you there can be a mistake, but by AI there will be no mistake, because वो कोड जो लिखने वाला है ना वो प्रोफेशनल कोड रहेगा,
वो आपको और मुझे नहीं समझेगा, बिकॉज वी आर नॉट अ प्रोग्रामर. इट विल राइट द मैक्रोज इन अ वेरी प्रोफेशनल वे. यू हैव टू जस्ट पिक दैट एंड पेस्ट इट एंड रन इट. वो वी लुकअप लगाएगा, पिवोट लगाएगा, जो चाहिए वो लगा के आंसर निकालेगा. उसको सिर्फ इंस्ट्रक्शन आपको सही तरीके से देने हैं कि आपको ये दो शीट में से कौन से कॉलम को कम बेस पकड़ना है और दोनों का कंपैरिजन क्या करना है. यू हैव टू मेंशन दैट प्लीज कंपेयर कॉलम नंबर ए विथ कॉलम ऑफ शीट 1 विथ कॉलम नंबर बी ऑफ शीट 2 एंड सो ऑन, एंड गिव मी द रिजल्ट ऑफ अनकॉमन और कॉमन एंड फॉर्मेट देम विथ रेड कलर व्हाटएवर. ये सारे इंस्ट्रक्शन लिखने पड़ते हैं, जिसको हम प्रॉम्प्ट कहते हैं. PAVSIC में आप अगर आपके पास क्लाइंट ने चलन भेजे है और आपको उसकी समरी करनी है, तो वो रीडर है, उसको आप कोड बना के उसके सारे चलन्स वो रीड करेगा और रीड करके वो समरी बनेगा इफ यू वांट इट इन योर ओन फॉर्मेट. इफ इसमें दो चीजें होती है. PAVSIC फॉर एग्जाम्पल, द चलन्स आर विथ यू इन अ PDF. आपको वेरीफाई करने की जरूरत ही नहीं ना. अगर AI वो डेटा पढ़ के आपकी समरी बना रहा है, इसका मतलब वो डेटा है इसलिए समरी बना रहा है. इसका मतलब वो चलन एक्चुअल है, तो चलन का वेरिफिकेशन हो गया ऑटोमेटिक. बिना वो चलन अपलोड किए हुए आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा. दैट इज द पावर ऑफ AI यू कैन यूज हियर. ठीक है. Now with three demonstration or three examples, specific example, I will be covering this last part of your AI in tax audit. किती वेळ आहे ना वेळ? 10 मिनिटं, 3 स्लाइड्स. AI in audit of large scale documents. In tax audit, it is not that audit is not to be performed. Audit has to be performed. And if suppose your client is a builder, or a contractor, then hundreds of pages are there in one agreement or contract. And it becomes challenging to read that and then verify the ledgers in the books of accounts. तो इसके लिए ऐसा एक कोई भी डॉक्यूमेंट हो या परचेज ऑर्डर, बहुत बड़ी परचेज ऑर्डर है, यू हैव टू वेरीफाई दैट. यू कैन यूज अ टूल टू extract the main part in that agreement in hardly 1 minute. ये बहुत बढ़िया टूल है, गूगल नोटबुक LM. ये जो बुक है ना, ये एक टूल है. तो ये टूल क्या करता है, कोई भी बहुत बड़ा MOU एग्रीमेंट 100 पेज टू n नंबर ऑफ पेजेस, उसमें वो टूल में एक साथ 3 लाख डॉक्यूमेंट्स आप डाल सकते हो. सपोज 500 पेजेस का एग्रीमेंट है एंड इन द टैक्स ऑडिट, इन द ऑडिट ऑफ दैट क्लाइंट, यू नीड टू रीड दैट एंड चेक द लेजर ऑफ दैट क्लाइंट वेदर इट इज कंप्लाइंग विद द GST, इनकम टैक्स वगैरह वगैरह. तो LM, गूगल नोटबुक LM, इसमें ये टूल में अगर वो एग्रीमेंट आप अपलोड करते हो तो द रेड पॉइंटर्स विच हैव रिटन इन द स्लाइड, ये चीज़ें वो 1.5 मिनट्स, इससे ज़्यादा वो टाइम नहीं लेगा. 1 मिनट में वो करके देगा. 100 पेज का हो, 500 का हो, 1000 पेजेस का हो, समरी ऑफ होल डॉक्यूमेंट. मैंने पूरा इनकम टैक्स एक्ट उसमें डाल के देखा है, उसने समरी मुझे बना के दी थी 2 मिनट्स में. इसमें बहुत सारी ब्यूटी ये टूल में. पहली ब्यूटी तो ये है कि ये समरी बना के देता है, समरी की मैपिंग करके देता है. मैपिंग मतलब हम ट्री डायग्राम बनाते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं. देखिए, तो फ्लो चार्ट में कौन सा क्लॉज किसके साथ कनेक्टेड है उसका मैप बना के देता है वो. अगेन 1 मिनट, उसके ऊपर नहीं लगेगा. टाइमलाइन की समरी देता है. कोई बहुत सारे एग्रीमेंट्स जो रहते हैं उसमें मल्टीपल परचेसिंग सेलिंग हुआ रहता है लैंड का. सपोज लैंड का एग्रीमेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है और उसमें काफ़ी टाइमलाइंस दी हुई है. तो टाइमलाइंस मतलब डेट्स दिए हुए हैं, तो वो डेट की समरी निकाल के देगा आपको 1 मिनट में.
ये सारा अगर कम भी पड़े तो उसने और एक टूल निकाल के रखा है, ऐड करके रखा है। तो वो कहता है भाई तुझे मैं ऑडियो क्लिप बना के देता हूँ 60 सेकेंड की, पूरी ये डॉक्यूमेंट की समरी 60 सेकेंड में आपको ऑडियो क्लिप में मिल जाएगी, जो आप ट्रैवल भी कर रहे हैं तो सुनते सुनते एग्रीमेंट का ऑडिट हो जाएगा। इट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन, दिस हैपन्स। और इसकी ब्यूटी बताता हूँ, ये टूल में अगर आपने ऑडियो क्लिप बना दी, फॉर एग्जाम्पल ऑडियो क्लिप में पॉडकास्टिंग किया है, ऑडियो क्लिप का पॉडकास्टिंग ऑटोमेटेड हो जाता है, उसके लिए 2 नहीं 3 मिनट लगते हैं। बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होगा, जैसे मैंने इनकम टैक्स एक्ट को उसमें डाला था और उसको कहा भाई अच्छा सा एक पॉडकास्ट बना के दे। तो पॉडकास्ट बनाने के बाद वहां पे देयर आर 2 पीपल हु आर टॉकिंग ऑन दैट इनकम टैक्स एक्ट, वन इज आस्किंग, वन इज रिप्लाइंग इन, एंड ब्यूटी इज दे हैव गिवन मिनिमम 10 लैंग्वेजेस जिसमें आपको चाहिए उसमें बोलो। मराठी में चाहे मराठी में लो, हिंदी में चाहे हिंदी में लो, इंग्लिश में चाहे इंग्लिश में लो, कोई भी लैंग्वेज में वो आपको पॉडकास्ट बना के देगा। और उसके आगे की ब्यूटी क्या है, सिर्फ वहां तक नहीं रुक रहा है, पॉडकास्ट बनाने के बाद आपको उस पॉडकास्ट में ज्वाइन करके सवाल पूछने होंगे तो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, 1000 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, बट यू वांट टू नो द पेमेंट शेड्यूल इन दैट डॉक्यूमेंट, वेरी स्पेसिफिक। वो समरी वगैरह बना के देगा तो पूरे बना के देगा ना, उसमें थोड़ी वो ऐसा निकाल के रखेगा। तो पॉडकास्ट अगर आप बनाओगे तो पॉडकास्ट में 1000 पेजेस को वो 15-20 मिनट में क्लोवर कर देगा। 15-20 मिनट के पॉडकास्ट में ज्वाइन करने का एक ऑप्शन रहता है, यू कैन ज्वाइन इन दैट पॉडकास्ट एज अ ऑडियंस। और वो जो जवाब दे रहा है ना, उसको डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं, भाई मुझे ये पेमेंट का शेड्यूल बता कौन से पेज पे है। दैट artificial person who replies from other side, he give you very clear specific reference with page number, with the details of the amount and check number or address। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए बताइए मुझे, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। गूगल नोटबुक जो है ना वंडरफुल, ये सारे चीज़ें आप केस लॉ एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हो। यू वांट टू एनालाइज द केस लॉ, जैसे कोई जीएसटी की केस लॉ है जिसका 10 पेजेस का पूरा जिस्ट है, समरी है, वो पढ़नी है आपको, इतना नहीं पढ़ना है लेकिन आपको समरी चाहिए, उसका हेडर्स चाहिए, पॉइंट्स चाहिए। देन यू जस्ट आस्क हिम टू प्रिपेयर द समरी ऑफ द होल डॉक्यूमेंट। ट्रस्ट मी, विद इन 1 मिनट आपके सामने समरी होगी, और समरी के बाद आप उसको पूछ सकते हो मैपिंग चाहिए कि टाइमलाइन चाहिए। You will save, let's say, minimum 2 hours to read that, to extract the points। ये लॉयर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। लॉयर को इतने सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ने पड़ते हैं। वी आर ऑल्सो लॉयर इन सम कॉन्टेक्स्ट ऑफ इनकम टैक्स, जीएसटी और सम मे बी अदर प्रैक्टिस, लाइक इन द टुडेज टॉपिक इट वाज विल। तो सारे अगर डॉक्यूमेंट पढ़ने हो लॉयर को, तो लॉयर को एक्सट्रैक्ट चाहिए ना उसमें से बात करने के लिए। तो लॉयर मतलब लेट्स से और इनकम टैक्स आल्सो, इफ यू वांट टू फाइट ऑन इनकम टैक्स फॉर लिटिगेशन, देयर इन दैट कॉन्टेक्स्ट वी नीड टू हैव द एक्सट्रैक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर केस लॉ व्हिच यू नीड टू अप्लाई एंड फाइट देयर। तो वो एक्सट्रैक्ट जो है वो ये टूल में से निकलता है, गूगल नोटबुक LM। आप घर जाने के बाद करके देखिए, बहुत ईजी टूल है। और इसमें वही डॉक्यूमेंट डालना है जो पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा, ये पहली चीज। अगर आप एग्रीमेंट डाल रहे हो तो एग्रीमेंट अगर सब रजिस्टर में रजिस्टर है लेकिन प्राइवेट डॉक्यूमेंट होगा, देन यू हैव टू फर्स्ट रिडैक्ट करना। मतलब क्या करना है, वो PDF फाइल में जहाँ जहाँ नाम यूज किया गया है या पैन नंबर होगा, खास करके पैन, आधार, इसके ऊपर देयर शुड बी अ स्क्रिबलिंग, ब्लैक स्क्रिबलिंग, देन एंड देन ओनली अपलोड इट, क्योंकि ये भी ऑनलाइन टूल है। तो ये एक बहुत ही अच्छा टूल है फ्रॉम द स्टडिंग पॉइंट ऑफ व्यू and from the audit point of view, because in audit also many times there are MOUs and agreements which takes time to do the audit,
एग्रीमेंट के हिसाब की जर्नल एंट्री है, लेजर पोस्टिंग हुआ है नहीं है, टैक्सेशन का इम्पैक्ट है क्या नहीं है, ये अगर देखना है तो आपको ये टूल बहुत यूजफुल साबित होगा. आई एम यूजिंग इट इन डे टू डे लाइफ for my regular audit process also, but with all the precaution, again I am telling you, precaution is important because you are playing with the very sensitive data and DPDA is active in all the times. गलती से वो लीक हो गया तो गड़बड़ हो सकती है. ये एक हो गया टूल. दूसरा टूल है कि गूगल ऐप स्क्रिप्ट, लामा कोडर, दिस एज वेल एज जेमिनी. ये जो 3 टूल्स है, मैंने जस्ट 3 नाम निकाले. 40,000 है, उसमें से 300 3,000 भी हो सकते हैं. तो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव. आई एम टेलिंग यू कि AI इन डेटा एनालिसिस और ऑटो रिमाइंडर फॉर टैक्स ऑडिट प्रोसेस. तो डेटा एनालिसिस में ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया, परचेज सेल रजिस्टर में आप कैसे यूज कर सकते हो, दिस इज एनालिसिस. देन फॉर रिमाइंडर्स हाउ यू कैन यूज इट. रिमाइंडर्स 2 तरीके के, एक मैंने पहले बताया वो है क्लाइंट को मेल भेजना है, क्लाइंट को रिमाइंडर देना है. दूसरा है खुद को रिमाइंडर देना है. खुद को अगर रिमाइंडर देना है तो वो भी हो सकता है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है. आप इमीडिएटली ये सेशन के बाद करके देखिए. आपके गूगल में जाइए, गूगल में उसको @ अगर लिखा आपने वहाँ पे तो @ में आप गूगल कैलेंडर बोलिए. तो गूगल कैलेंडर के आगे लिखिए प्लीज प्रोवाइड ऑल द स्टैट्यूटरी ड्यू डेट्स फॉर द मंथ ऑफ नवंबर. वो पूछेगा अलार्म करना है क्या? यस, यू विल. आई एम डूइंग दिस ट्रायल्स रेगुलरली, करने की जरूरत नहीं है. वो अलार्म बजाता है उस दिन टाइमिंग के साथ 5 बजे शाम को. मुझे 30 सितंबर को अलार्म चाहिए, टैक्स ऑडिट का लास्ट डेट है. इट हैज ब्लिंक्ड एंड गिवन अ अलार्म ऑन दैट डेट. यू टू जस्ट ये रिमाइंडर, जैसे अनयूजुअल कुछ रिमाइंडर्स होंगे तो जेमिनी ये टूल में अगर आपने इंस्ट्रक्शंस दिए कि भाई गूगल कैलेंडर में से ये डेट्स मुझे रिमाइंड करो, कैसे करो उसका इंस्ट्रक्शन दीजिए. मेल करना है, सिर्फ पॉपअप करना है, इट विल बी डूइंग दैट एज पर योर इंस्ट्रक्शंस. सो इसके लिए कोई चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद रिमाइंड हो जाएगा. ये भी है. और क्लाइंट के लिए करना है तो यू कैन डू कोडिंग इन एक्सेल. तो एक्सेल में कोडिंग करके लिस्ट अपने पास क्लाइंट की रहती है, उसके मेल आईडीज रहते हैं. तो मेल आईडीज के सामने ये कोड लिखना है और कोड रन करना है. मेल आईडीज के सामने नहीं, मैक्रोज वहाँ पे पेस्ट करने हैं उस पर्टिकुलर एक्सेल फाइल में. एंड इफ यू रन दैट फाइल, ऑटो मोड द मेल विल बी शूटेड एज वेल एज दैट कोडिंग कैन बी डन इन सच अ वे दैट द मेल्स आर रिपीटेड ऑटोमेटिकली. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू first instruct the Gemini, the code in that particular Gemini code में लिखिए या Google Apps के अंदर लिखिए. आपने लिखा कि ये सपोज 10 तारीख को मेल जाना चाहिए डेटा मिलने के लिए, डेटा भी सेल रजिस्टर परचेस व्हाटएवर मेल. द पैराग्राफ इज मेंशन बाय यू, ये पैराग्राफ का मेल जाना चाहिए ये क्लाइंट्स के लिए. तो 10 तारीख का एक ही मेल जाएगा. आपने उसमें इंस्ट्रक्शन लिखे रिपीटेड मैक्रोज में. तो ये ट्रिगर पॉइंट जो है, ट्रिगरिंग ईमेल्स रहते हैं. दिस ईमेल्स आर ट्रिगर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रनिंग द मैक्रोज. जैसे मैक्रो रन होगा वो ईमेल ट्रिगर हो जाएगी. तो मैक्रोज रन करने के लिए ट्रिगर मैक्रोज जो रहते हैं, ट्रिगरिंग पॉइंट उसमें ऐड किया जाता है. एंड दैट गिव्स अ रिलीफ विदाउट डूइंग एनीथिंग. आप कहीं भी होंगे, ऑटो मोड में आपकी मेल क्लाइंट के पास जाएगी फॉर द रिमाइंडर. ये आप फीस रिमाइंडर के लिए भी लगा सकते हैं, डेटा रिमाइंडर के लिए भी लगा सकते हैं. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो आपको स्टाफ को ट्रेन करने के लिए यूज किया जा सकता है. नॉर्मली यू हैव टू ट्रेन योर स्टाफ रेगुलरली, बट यू नो व्हाट आर द क्वेश्चंस एंड व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी गिवन टू देम फॉर ट्रेनिंग पर्पज. तो इसको मैं कहता हूं AI इन ट्रेनिंग द स्टाफ फॉर टैक्स ऑडिट इश्यूज. देयर इज अ टूल कॉल्ड डांटे AI. आप सब लोगों ने चैट बोट ये असिस्टेंट देखा हुआ है. बहुत सारे वेबसाइट पे एक छोटा असिस्टेंट आता है पहले और वो बोलता है हाउ कैन आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू.
वो जो असिस्टेंट रहता है ना वो एआई है, वो एआई का जो प्रोग्राम है दैट इज प्रिपेयर्ड इन डांटे एआई, द टूल्स लाइक डांटे एआई। नाउ डांटे एआई में क्या होता है, इज अ टूल टू प्रिपेयर योर एआई ट्रेनर। तो उसको आप एक टूल बनाओ, उसको कहिए ऑफिस ट्रेनर, और उस टूल में आपको जो जो सिखाना है आपके स्टाफ को, इनकम टैक्स एक्ट सिखाना है, जीएसटी सिखाना है, और कुछ लॉज उसमें डालने हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डालने हैं, वो सारी फाइल उसमें डाल दो। फिर उसके बाद आपको बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो चैट बोर्ड है हर एक के व्हाट्सएप पे डाल दो। व्हाट्सएप पे उन्होंने सवाल पूछा, व्हाट इज द रेट ऑफ टीडीएस फॉर रेंट, जवाब उधर से आ जाएगा। वेदर इट इज मशीन और लैंड, वो भी जब पूछता है एआई स्मार्ट, वंस यू नो दैट प्रोविजन, क्योंकि वो पूरे एक्ट में से उतना सेक्शन निकाले, वो बोलेगा 194 आई में आपका है, लेकिन आप मशीन का बोल रहे हो क्या लैंड का बोल रहे हो, देन इट विल गिव द रेट, देन इट विल गिव द रेट फॉर दैट। ये आप प्रिपेयर कर सकते हो स्टाफ के लिए और क्लाइंट के लिए भी। जो क्लाइंट बार बार परेशान कर रहे हैं उसके लिए भी आप कर सकते हो, जिसको टीडीएस की डिटेल्स बार बार पूछता रहता है, तो टीडीएस की एक फाइल उसमें लोड करके क्लाइंट इंस्ट्रक्टर नाम का चैटबॉट बना दीजिए, या आपके नाम से बना दीजिए मिस्टर एक्स क्लाइंट इंस्ट्रक्टर। वो जाएगा आपके व्हाट्सएप में से उधर, एंड देन इट विल टॉक विद दैट पर्सन, एंड यू हैव टू जस्ट टेल वट एवर द क्वेरीज आर देयर, यू जस्ट आस्क टू माई असिस्टेंट मिस्टर चैटबॉट, तो वो चैटबॉट आपको जवाब देगा। तो वो क्या पूछेगा कि लैंड पे कितना टीडीएस कट करना है, अगर प्रोफेशनल सर्विस दी तो कितना करना है, डायरेक्टर की प्रोफेशनल सर्विस है तो कितना करना है, जो भी सवाल पूछेगा उसके पास डेटा रहेगा। और ये जो है ये आपका पब्लिक डेटा है, जैसे मैंने इनकम टैक्स एक्ट कहा या कोई भी लॉ कहा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, वो भी आप डाल दीजिए। योर असिस्टेंट्स मे आस्क एनीथिंग एंड दे विल गेट द आंसर। उसके साथ आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का डालिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोई बुक आता है ऑनलाइन वो डाल दीजिए। जर्नल एंट्री पूछते हैं बच्चे, जर्नल एंट्री कहाँ से पूछे, बोलो इसको पूछो आपको आ जाएगी। You need not have to repeat and tell them again and again all these things. That is what I want to tell. इस सारे चीजों से आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपका काम कम होगा, और जितना टाइम सेव होगा, either you can increase the client or you can give the best service to the existing client to increase the fees. Either or you can do. So this is how Dante AI can be used. Again Dante AI में भी आपको इंस्ट्रक्शन ही देना है उनको, और ये सबसे दिल को छूने वाला सब्जेक्ट है अपना, कि पूरा काम करने के बाद फीस कलेक्शन का एक प्रॉब्लम आता है, ऑडिट की फीस कैसे मिलेगी। तो उसमें भी मैंने जैसे कहा, जेमिनी में आप ऑटो मेल रिमाइंडर लगा दो, व्हाट्सएप के तो लगाते हो, अदरवाइज यू कैन पुट इट इन मेल ऑल्सो। मेल रिपीट हो जाएगी, इरिटेट होगा तो क्लाइंट पैसा दे देगा। दिस इज व्हाट यू कैन फॉलो। बट वन मोर थिंग इज जनरेशन ऑफ QR कोड। फी स्पेसिफिक QR कोड आप जनरेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल किसी से आपको आपने कोड कर दिए 15,000 रुपीज़, उसको बिल 50,000 का देना है। आपने बहुत जगह बिल्स में देखे होंगे, देखो छोटा QR कोड आता है, इट इज स्पेसिफिक ऑफ दैट पर्टिकुलर अमाउंट। द सेम वे आपने किसी को 15,000 लगाई, किसी को 20,000 है, किसी को 25,000 है, जनरेट दैट QR कोड, पेस्ट इट इन योर बिल और इन योर रिमाइंडर बिल, और उसको भेज दो। उसने स्कैन करना है, पे करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये एक चीज आप ऑटोमेटिक कर सकते हो, जिससे बहुत सारा एडमिन का काम आपका कम हो गया। स्क्रूटिनी करते वक्त और परचेज सेल रजिस्टर एनालिसिस करते वक्त आपको कोड्स मिल गए। आप सोचिए कितने घंटे का काम आपका सेव हो गया है। द मैन पावर इज सेव्ड इज व्हाट आई वांट टू टेल हियर, एंड दैट सेविंग ऑफ मैन पावर इज इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी, इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस। तो ये एक आपका एडमिन का काम कम हो जाता है। Now the coming to the last part is regarding precautions. Precautions when you are using AI in the tax practice. The first precaution is use AI as a support tool, not a final answer. You have to revise it, understand it. Copy करना directly नहीं है, जल्दी में copy करोगे तकलीफ में आओगे। Confidentiality and client data, ये मैंने पहले ही आपको बताया। DPDA ये बहुत ही सेंसिटिव लॉ है, इसमें पेनल्टी करोड़्स में है। इसकी अपर लिमिट
पेनल्टी की जो है वो 250 करोड़ से अपर लिमिट इज व्हाट आई हैव रेड इन दैट लॉ रिसेंटली. तो यू हैव टू बी वेरी मच कॉशियस जब आप आपके जूनियर्स को ऑफिस में ये यूज करने को कहोगे AI, देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस. राइटिंग प्रॉम्प्ट्स एंड रिव्यूइंग आउटपुट बिफोर यूजिंग इट. आप इंस्ट्रक्शन क्या दे रहे हो और आउटपुट क्या निकल रहा है, ये आपको एज अ एम्प्लॉयर, एज अ सीनियर, एज अ बॉस, यू हैव टू रिव्यू इट. Then approvals and professional check if staff is using. If you have given the staff the permission to use it, then you have to check whether it is doing they are performing it correctly. Any client's data security is not compromised. All these things are to be checked in when you are delegating or allowing the staff to use it. So approvals की method एक procedure रखनी है, क्योंकि बहुत बड़ी लाइबिलिटीज में आ सकती है अगर गलती से भी डेटा वेब में जाएगा तो, इफ स्टाफ इज यूजिंग इट. और फिर डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रांसपेरेंसी. तो AI को यूज करके आपने जितने रिजल्ट एक्चुअल किसी क्लाइंट्स के इसमें यूज किए हैं, to have a habit of keeping the documentation in that folder that this result is AI generated. Very much important. Reason is, जैसे जो बेंगलोर में केस निकली थी, ट्रिब्यूनल का इशू आया था, जो केस ही नहीं थी, फिर भी डिपार्टमेंट हैज टेकन अ स्टैंड एंड देन आफ्टरवर्ड्स इट अंडरस्टूड दैट दैट वाज नॉट अ केस लॉ एज इन एग्जिस्टेंस. वैसा इशू नहीं आना चाहिए. ये AI और सोर्स का एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करके सब बता देता हूँ कि अगर आप लिमिटेशंस दे रहे हो किसी भी प्रॉम्प्ट में, आप बता रहे हो कि फॉर एग्जांपल एक्सट्रैक्ट द केस लॉस फ्रॉम incometaxindia.gov.in या itaonline.org या स्पेसिफिक कोई, वैसे उसके साथ अगर आपने ये दिया नहीं तो आप और क्या लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो कि पॉइंट आउट द सोर्सेस फ्रॉम वेयर यू हैव एक्सट्रैक्टेड द डेटा. तो वो क्या करता है, it extract the data. For example, you have given a query, let's say agricultural land exemption for agricultural land. इसकी कोई क्वेरी आपने डाली है और आपको उसके लिए कुछ डेटा चाहिए जो वो अलग अलग सोर्स में से लेगा. फॉर एग्जाम्पल taxguru.com से लेगा, टैक्सकैन में से लेगा या इनकम टैक्स के साइट से लेगा. तो जैसे वो डेटा लेता है, इट पुट अ सोर्स in the last line of that particular details. वो जितनी डिटेल्स आएंगी उसके लास्ट लाइन में सोर्स आता है. वो क्लिक किया तो आपको दिखता है ये टैक्स गुरु का है, क्लियर टैक्स का है या और कोई सोर्स में से लिया हुआ है. सो सोर्स इज ऑल्सो आइडेंटिफाइड, देन इट इज अ गुड थिंग बिकॉज हेलुसिनेशन के चांसेस कम हो जाते हैं. सो हेलुसिनेशन ये रिस्क बहुत बड़ी है, डेटा प्राइवेसी की रिस्क बड़ी है. दैट इज how you have to protect and take a precaution by putting all these professional checkpoints. With this I will conclude the session. Thank you for patience listening. If you have any questions, considering the time limit, it is very challenging to have a demonstration of all this, which we can have in the any future sessions. Thank you very much and hand over to Gurke sir. बसा
लोकल आपलं पुढचं व्हायला पाहिजे, लोकल गेली तर उपयोग नाही. Thank you, sir, for detailed and enlightening lecture. Sir, your lecture is important for use of AI, which fundamental rules are to be followed, how to give prompt for better how to give prompt for better result, self introduction, work detail, need of work. AI is a both way sword. If used smartly, घंटों का काम मिनटों में हो सकता है. Now, I request our secretary, Advocate Pranav Sheth, to give formal vote of thanks of both the sessions. Hello, good evening, ladies and gentlemen. I am Pranav Sheth, Secretary of Maharashtra Tax Practitioner Association. It's truly pleasure to address you all this evening. I am sure you have thoroughly enjoyed and benefited from today's insightful study circle session. Before the vote of thanks, I have a great announcement for you all, friends. In today's fast-changing and competitive world, artificial intelligence or AI is emerging as one of the most powerful forces shaping the future of every profession, and ours is certainly no exception. The truth is, if we do not understand or adapt to AI, we may soon find ourselves left behind. Understanding this growing importance, MTPA is planning to organize a 2-day AI workshop exclusively for our members, and that too at a very nominal knowledge investment. Our goal is to ensure that every member, from the youngest entrant to the most experienced practitioner, can easily participate and gain valuable practical insight that will help in everyday professional life. Once the structure and syllabus are finalized, we shall be making a formal announcement very soon. Now, I would also like to clarify one important point. This upcoming AI session will be completely independent. Their format, content, and focus are entirely different. Both the initiatives, the EduPass scheme and the AI workshop, reflects MTPA's unwavering commitment to the growth, achievement, and welfare of every member of the association. We look forward to your enthusiastic participation and continued support as the MTPA continues to move ahead, empowering each of us to stay informed, updated, and future ready. And now, as we conclude today's proceeding, I have the pleasant duty of proposing the vote of thanks. My sincere gratitude goes first to our esteemed faculty, CA Sharad Waze sir and CA Parikshit Aurangabadkar sir, for sharing their invaluable expertise on drafting of will and succession and the future of smart compliances, AI in tax audit. Your depth of knowledge has truly enriched this study circle meeting. We are equally thankful to our dedicated chairman, Advocate Deepak Godse sir and CA Umesh Sharma sir for their excellent stalwartship of the session, ensuring a smooth and highly interactive experience for all participants. Finally, my deepest appreciation goes out to all the members and attendees. Your active presence and spirited participation are the very heart of the Maharashtra Tax Practitioner Association. We look forward to welcoming you all to our future events and study circle meetings. Until then, thank you once again, and wish you all very pleasant evening.
Thank you, sir. Thank you all our participants to give active involvement with kind permission of our president. I now declare today's session